A very good morning to one and all who's joining us for the live broadcast of the first quarter final of the 16th Hockey India Sub Junior Women National Championship 2026, right live from the Marang Jamke Jaipal Singh Astroturf Hockey Stadium here in the capital city of Ranchi in the state of Jharkhand. With the mic, I'm Mayur Barua. I'll be carrying you through all the proceedings as Hockey Association of Orissa, the Lockhorns versus Maharashtra. On your screen, Miss Nitu Kumari, all in readiness. And she has been a picture of great concentration. As you know her, she has been full of vigor, energy, as she stresses. She knows it's going to be a huge day. And that's why it's so important that she keeps her eyes, her mind, her concentration right across. As she lifts her hands and she blows the whistle, and it says it's ready to push over. Here is the first one to get through. In orange, playing is Maharashtra. In all, in yellow and black, is playing Orissa. Previous encounters, both the teams met in the last 15th edition of the Sub Junior Women National Championship. It was Orissa winning 3-0 versus Maharashtra. And so it will be so important for Maharashtra. They know they are playing versus a very good side. Both the teams are defeatless in this encounter, and so it is it is something that both will be harping so much, and it will be riding on this match. Of course, it's a knockout. You win it, you gain a place in the semi-final. All this action coming to you live and exclusive on the YouTube channel of Hockey India. Nice some workout from Orissa, getting some good now attack building on from the right. From the left to the right will be Orissa, who will be defending. From the right to the left, it will be Maharashtra, who will be defending. Whether do I say they'll keep on attacking from the left to the right of the picture is Maharashtra. Slapping it all across, nicely booming up. And to talk about the umpires, I already spoken about Miss Neetu Kumari. She is being assisted by Miss Sonu. Reserve umpire is Miss Madhu Kumari. The timing judge is Miss Kanishka Chauhan. And scoring judge is Miss Sweta. The technical officer is Miss Pratima Tirki. As I mentioned, inside the striking circle was invading the territory was Orissa. The very good bunch, Orissa. On the picture is Sonima Gaud. Sonima Gaud places it onto Saraswati Oram. Saraswati Oram gives it towards the left flank, who is Khushbu Kuzur. The captain is Rubina Bakhla. She doesn't have a goal to her name. Kiran Ekka now getting onto the picture. But keep an eye on Archana Kuzur. She is not featuring in the initial playing 11. It is really interesting because Archana Kuzur has 3 goals in the championship, including 2 field goals and a penalty corner. Princess Priya Ekka, she does feature in the playing 11. She has just 1 goal. In fact, the second goal, which was scored by Orissa in the tournament. I'm sure the substitutions will be coming in as Archana Kuzur will be there in the picture. Beg your pardon. To talk about the lineup of Hockey Association of Orissa, Nita Maji is the goalkeeper, Nikita Barla, Princess Priya Ekka, Sonima Gaud, Saraswati Oram, Khushbu Kuzur, the captain Rubina Bakhla, Priyanka Minch, Ankita Ba, Sweetie Kuzur. She was the first goal scorer for Orissa in the tournament, and then Kiran Ekka. In fact, Deepika Bej also has a goal, but she's not featuring in the initial playing 11. And the coach is Mr. Peter Soreng for Orissa. Of talking about Maharashtra, the playing 11 is goalkeeper Navalaha Rishika Pankaj, as we see inside the striking circle, but good defense work from Maharashtra. Continuing on the playing 11 for Maharashtra, Purva Dupare, Gauri Hiranwale, Rawat Anvi. She has 2 goals in the winning match versus Bihar, which was the first campaign to start off. And then in Purva Duvare also has the first goal in that winning campaign versus Bihar. Then Janvi Chavan
You have Diksha Kapse, Prachi Katare is the captain. No goals for the captain at the moment. Then you have Maitri Thakare, Vedika Moli Wagmore, Prunmai Ghorpade, you have Suneli Burg. So this is a playing 11 for Hockey Maharashtra, and the coach is Mr. Sagar Singh Thakur. The team manager is Ms. Manisha Suhas Akare, and the team manager for Orissa is Ms. Reshma Lakra. From the left flank, trying to get an injection was Priyanka Minch for Orissa. That's where they'll be continuously trying to break the defenses. And you have to talk about the statistics for Orissa 4-0 win versus Andhra Pradesh, and then 2-0 versus Punjab. That's how they have got into the quarterfinal. For Maharashtra, 3-0 versus Bihar, and a resounding 6-0 victory versus Jharkhand. So it's a good long names that they have come up and they've done interestingly very, very well. I'll be soon joined by, not in this quarter, but in the second quarter. The proceedings will be taken off by our distinguished Hindi commentator, Mr. Shami Malam. He also resides, I'm sure everyone knows him by now, resides in the same city here in the capital of Ranchi, here in Jharkhand. Also going through the paces of the men's national championship being played at Rajgir Hockey Stadium in Rajgir in Bihar, where dear friends Vikas Kumar and Arbaz Khan have been going through the paces with the mic. As in quarter number one, now less than 10 minutes remaining for the finishing of quarter number one. Orissa getting on very nicely, very quickly on the feet. So we'll be believing that the goal comes very soon. But what about the orange and white? They have been able to keep quiet, the girls from Orissa at the moment. And if I have to talk about the bifurcation of the goals of who scored which, in the 4-0 victory versus Andhra Pradesh for Orissa, it was Sweetie Kuzur, then Princess Priya Ekka, Deepika Beige, and then Archana Kuzur a field goal. Then 2-0 versus Punjab, both the goals were scored by Archana Kuzur. One was a field goal and the other was a penalty corner. So three goals for Archana Kuzur, and I'm sure she'll be one of those substitute coming in to replace. So for Maharashtra, 3-0 versus Bihar. First was scored by Purva Dupare, a field goal, and then consecutive goals for Anvi Rawat, and both were penalty corners. So she is a penalty corner expert, is Anvi Rawat, and she does a feature in the playing 11 jersey number 5, Anvi Rawat. And 6-0 campaign versus Jharkhand. It was a goal scored, each and all were field goals scored by Sushmita Guria, Sandeepa Kumari, Shruti Kumari, Pushpa Manji, Sania Tirki, and Preeti Bilung. So these are the 6 goal scorers for Maharashtra in the last campaign. So a very nice one. As Orissa trying to open up, it's a nice one. It's a nice zigzag fashion, and how nicely Priyanka Minj have been able to put the goal. Here comes the opening attack in the form of a goal for Orissa. 1 Orissa, 0 Maharashtra. What a lovely assist. Nice angle. And look at that. Look at that. Jig-jag. The defenders were behind. They were 2 in front. But how quickly she have seen that gap as the goalkeeper was vastly ahead. Goalkeeper Nawalaha Rishika Pankaj for Maharashtra now concedes 1 goal, unfortunately. So this will be getting a little tougher, and yes, this is how they'll be moving along. They know they they cannot be taking anything lightly, because very nicely they will be now putting this onto them if they don't quickly regroup and don't lay it fine. They can come up very strong, Orissa, and that's what they're doing. You're watching the 16th edition of the Hockey India Sub Junior Women National Championship 2026, the first quarterfinal, because there'll be 3 more. It's going to be good names, isn't it? Jharkhand featuring Punjab, there's Maharashtra already playing up. The, and then some
A bit of a halt of play here because of the goalkeeper probably changing her guards. This is always nice, isn't it? When you know the players have gone their best and have done so much in nice bit of a control, and execution has been so perfect for them. That's why it gives to be a nice happy picture as Miss Neetu Kumari keeps on looking. She's not okay, not being able to understand of exactly what has happened probably. Halt of play, 1 4 Orissa, 0 for Maharashtra. And we get it all started here. It's all good to get it going. Always nice to, and this is so nice, isn't it? I mean, with the 6 minutes now remaining, they have the task cut out. They cannot be taking it lightly. The way it is now going on, lively movement, nice. This is some slaps also going on the field. You can vastly feel what is coming along for them. That's why it makes to be such a nice, wonderful contest among the girls. It's going to be easy. Odisha right on the top of the game after scoring the first goal. As you can see, trying to make another inroads from the left flank. Nicely trying to just put it inwards. Cry for a fall. And girls from Maharashtra get it. That was number 4 in your picture. That was Gauri Hiranwale in the picture. And do they see that they get a do they get a penalty corner? No, it's game is all good, all fair and square at the moment. As you see, Sanjana Kuzur getting on with the ball. No goals for her in this contest till yet, but Priyanka Minch and then Sweetie Kuzur, who just came out of that striking circle, will be very huge. As I mentioned before, she scored the first goal for Orissa in this tournament. Since trying to play a hammer right from the corner. Umpires, Neetu Kumari says, I don't want to be dangerous, but I want to lift the green card. Oh, there you go and blows the whistle. It's a 2 minute suspension for one of the players from Maharashtra. Neetu Kumari, early mornings, he's getting strict. It's just 10 minutes past 7 o'clock, but it doesn't matter. You're playing the field, you're playing the match, you're playing a quarter final, and you need to play to the best abilities, yes, but you need to play to the spirit of the game. You cannot be over aggressive. Some of the shots can be little dangerous, and it's always befitting that they are penalized for that one. So unfortunately, 120 seconds that she need to warm the benches, and she can then come up to play. Less than 4 minutes remaining in the first quarter final. Of the first quarter of the first quarter final. Let's not get confused. Oh, she falls down. It's not an intentional one. She gets stuck into one of those legs from that player, just trying to bisect the angle, which is right behind the dotted line, carrying the waves, passing through Orissa on the top of the game. The gear has been changed towards the right flank. Circle entry has been done. It's a lovely pass, but straight into the goalkeeper, but eventually gets into the goal. Oh no, it won't be counted as a goal because
It's a penalty corner. It's a penalty corner. They have been able to convert two penalty corners in this tournament. One by Archana Kuzul and then Deepika Page also. What those girls says will be there for an injection, and I guess that's probably Priyanka Minch, who is the first goal scorer already for the injection. The first penalty corner injection has been done. Stops and the drag flicks straight to the corner, and it'll be out of bounds as signaled by Ms. Neetu Kumari. Uh, doesn't get too easy. I didn't get something right on the portion. The proportionate quality has been really nice from Orissa. They'll be little slightly unhappy that this hasn't come into what it needs to be. But you never know. And now we do have another penalty corner coming in. Just not something that you were just trying to hoping to do, but injection has been done. It's a nicely flick to Priyanka Min. She was already the first goal scorer. Oh, a nice trickle into the goal post, but it is not a goal as it gets onto the corner of the goal post, I believe. Interesting gameplay, very interesting. I'm sure it will put up so much pressure on Maharashtra as they've been able to keep into the houses. It's like a housewarming party of your opposition. Oh, Priyanka Min steals the ball, trying to give a good pass to Princess Priya Ekka. She's there. She's an astute. She is there in the striking position, and the center attacker position is Princess Priya Ekka, who scored the second goal for Orissa in this tournament in that win of 4-0 versus Andhra Pradesh. This is such an important player, isn't it? Much important. And the way they have been going and regressing and tracing this concern, this is really interesting, really lovely. I love to see how these girls perform and do it so nicely. Just keep on building it, and we'll be building it very nice. This is how it happens. The hand of God, as you know, browsing and blazing it all the way through. So 1 minute now remaining. Let's see what it is remaining here for the players. Very far in the corner, you can see just a slight bit of that commotion happening, but this is really nice to see. It's a good, wonderful work as they keep on just building on the attack. Is Orissa into the 23-meter circle, and it's Priyanka Minch again. All the way she keeps on hurling in that center forward position. Never lets Maharashtra settle in and playing in the orange and the whites and orange. It's going to be some contest, as I can see in building up. 24 seconds remaining. Use the hashtag #IndiaKaGame to get right into this game of hockey. So don't forget to download the app of Hockey India and also of Hockey India League, and also visit www.hockeyindia.org. Just 4 seconds remaining. Oh, can Orissa get a goal? Just a handful of milliseconds remaining. Miss Neetu Kumar signals out of bounds, and the hooter has been sounded. So 2 minutes of relaxation time. End of quarter number one in the first quarterfinal of the 16th edition of the Hockey India Sub Junior Women National Championship 2026, and it is Orissa who is leading by 1-0 versus Maharashtra. This is Mayur Barwa
who will be coming after 1.5 minutes. So you stick by, don't go far away. All the section will be coming live and exclusive on the YouTube channel of Hockey India. So stay tuned. Welcome back to the second quarter. As umpire Ms. Nitu Kumari lifts her hand, blows a whistle. We again get ready with a pushback. Hockey Association of Odisha leading by 1 goal to 0 versus Hockey Maharashtra from the blade of Priyanka Minch, jersey number 12, which goal came in to add up to the pressure. So it's just this first goal that she scored. That's all much needed to get on the process and the proceedings of this first quarter-final. And it's a ticket entry for the semi-final. Some good way to go. After this half-time will be, of course, and 2 more quarters remaining. So the girls really needs to be on their toes. We'd also like to thank the Jharkhand government and the Sports Authority of India for their great support in putting up a level playing field, a great platform for the girls to perform and showcase their talents and skills and exhibit the exuberance and energy, the enthusiasm that builds up for the tournament. And I'm sure all those girls will be loving it, will be acknowledging the fact that it's a great infrastructure right here at the Marangom Ke Jaipal Singh AstroTurf hockey venue here in the capital city in Ranchi, in Maharashtra. Great pictures coming to you live and exclusive on the YouTube channel of Hockey India, and recently celebrated 100 years of their existence. I'd like to also thank the president of Hockey India, Dr. Dilip Kumar Tirki, and also Mr. Bholanath Singh, the General Secretary, for their immense contribution in steadying the growth of Indian hockey. So it has hugely benefited for players which have come up the ranks. Miss Neetu Kumari, for the second time, she says, I'll do some exercise with my hand. She signals a green card this time for one of the players of Orissa. First, it was for Maharashtra, and now she says Orissa cannot be going. He'll not be lying far behind because there is a green card. So 120 seconds of suspension, 2 minutes for that girl from Orissa. So green card each for both the teams now. The ball just circles towards Orissa. Now they're playing with just 10 players. So 9 on the field. It's a zigzag fashion from the Minch coming in. And who else? Priyanka Minch. He has been such a player. Princess Priyanka is also number 5, rotating himself from the corner, rotating herself from the corner. Opponent and doing very well. Good attacking positions. They hold up both these players, and that's why your homework has to be so much to the team.
I believe that's Priyanka means again from the corner. It's a lovely pass, trying to go through that four of the defenses, two ahead, two behind, but cannot get it well from that corridor. Is there a question being asked? Oh, yes. So Maharashtra raises a question timeout signal and then a video referral. A video referral has been asked by Maharashtra because Snita Kumari has signaled a penalty corner and Maharashtra believes that it is not a penalty corner. Let's see what happens from upstairs. Orissa 1, Maharashtra 0. Ah, so she's getting something. She did get something. It's a good review. It's a lovely review from Maharashtra. Ah, this is good. They have retained a review, so it's not a penalty corner. Terrific. Really nice. This could have been gotten very hard on them. Now, what is happening there is a small little infringement, I believe. Just trying to check it up of who's who. And again, game moves on with 11 and a half minutes remaining in this match. Trying to get through the process, it can be sometimes hugely be a little distracting for the players. But that's what you need to really correct your veracity, your control. It needs to be very much interesting. It's into the sideline, corner pass back, and it is been one of those good gameplay that's so very vastly important. Getting through Maharashtra from the corner, trickles by side on. That is, it seems like Kiran Kuzur. Oh no, that's Rubina Bakhla, the captain, with the ball at the hard line right from the corner. Nitu Kumari! Oh, again she shows a green card. And this time to the goal scorer. Priyanka Minch gets a suspension of 2 minutes. Oh my goodness, it's crazy. Ah, two green cards now for Orissa, one for Maharashtra. Ah, how many green cards you have in your pocket? Oof, this is getting exciting. This is getting hotten up. And this is quarterfinal.
Oh, a ticket to the semi-final. It's getting aggressive. It's getting Yadmamum's Sweetie Princess Kuzu Priya Princess Eka. Beg your pardon. That's not Sweetie Kuzu. That's number 5. She's been all over the place. Now, Orissa gets the goal. They might have got the goal scorer Priyanka Minch for 2 minutes out, but the army of Orissa keeps their sojourn alive despite one player shot. Look at what a great pass this was. I believe that Princess Priya Eka with the stick on keeps on moving. The defenses were not quick enough as the goalkeeper comes ahead. They just smokes the goal. Namalaka Rishika Pankaj. You couldn't do much as the ball just tickles right over for the second goal for Orissa. So 2 for Orissa, 0 for Hockey Maharashtra. We'll find out now who is actually stocked up that goal. And yep, that's Princess Priya Eka, a field goal. Seen that. So, goal number 2 in this tournament for Princess Priya Eka. In fact, she scored the second goal, and now also scored the second goal. Second goal versus Andhra Pradesh, and now second goal in the quarterfinal versus Maharashtra. So, second goal scorer specialist, if you have to say, for Princess Priya Eka. Good one there, isn't it? Now the pressure is double on Maharashtra. How can now they reform themselves and make a comeback into this contest will be a question for them. Can be sometimes getting very daunting. Doesn't get easy. Doesn't get easy at all. Can be very be mindful of how this goes up to yourself. Can we just build on this? Is such a smarter of the contest. Eyes, nose, and oh, Neetu Kumari, what she's doing today? She's saying, I've run out of green cards. Now let me show a yellow card. It's a 5-minute suspension. She says, let me make the temperature go a little up. 2 plus 3. Oh, my goodness. My lord. How many of the cards they'll be trying to snatch the card away from Neetu Kumari? This is how it is going on. This building on. This is how the game needs to be played. This is how the quarterfinal has shaped up. Absolutely interesting the way it has gone up. It just intensifies. Maharashtra on the attack, trying to scoop the ball. It'll go out. It's probably signal for a long corner from the umpire. And we're back. If a technical glitch from my end. And at the other end, that's Miss Sonu, who signaled the long corner. It's less than 8 minutes remaining for the half time. Can they just make a nice nuances of what it is need to be? And Anvi Rawat was there, number 5. If for number 5, Princess Priyaika have scored 2 goals, Anvi Rawat also has consecutive goals in that win versus Bihar. This is going to be a very important cog in the wheel for Maharashtra if they'll have to move up the paces and come in equal level playing field along with Orissa in terms of goal scoring. In terms of paces with getting into ball position, I think that's not been very bad. That's Anvi Rawat with the ball trying to make a crisscross position but loses the ball to the defenders of Orissa. Very quick with a stick. Now on the ball is Advita Kamble from Maharashtra. She pushes it back onto Janvi Chavan. Stick work. That's Nikita Barla and Kiran Kuzul with the back of the defenses. And one of them is Kiran Eka. There you go. At just near the striking circle was Kiran Eka. Maharashtra slams it from the corner.
Does the ball go? It goes out of bounds. Some nice hard yard stick. That's, she says, if I cannot get it, I can move it along. That's Nikita Barla from Odisha. The ball, she plays a nice reverse angle and gets into the stick of Khushbu Kuzur. That's with Kuzur trying to snatch the ball. The whistle sounds it back past the center line. Now the attack going on. Orissa moving along nicely, smoothly with a stick of Saraswati Oram. Saraswati Oram gives it back to Khushbu Kuzur. So rotates, gives a reverse pass and a nice angle to Kiran Eka. Kiran Eka moving it on to I believe that is this is that's Kuraneka, and then giving it to, is it Priyanka Means, couldn't see it clearly because the sun is shining brightly on the back of the jerseys. It's actually obscuring the numbers on the jersey. Good defense work, Nikita Barla and Kuzbu Kuzur forming a nice bench number in the good defense corridor at 23-meter circle as Maharashtra was trying to break in for the first goal. Still an attempt remaining here. Let's see what happens. It's going to be good contest. I still feel and have this haunches. Oh, lovely pass. Great pass into the block of the goalkeeper. Second try attempt. But it goes heavenly close from the goal post into a Princess Priya Eka again with her stick coming to the 40 almost, but they will be happy still because Nitu Kumari, the umpire, signals a penalty corner advantage for Hockey Association of Orissa. Pooh, what a game. Getting so close. They said, okay, we haven't got the goal, but let's make this penalty corner work to advantage. Can they make it three? Now, Orissa, 5 minutes and 2 seconds remaining for the half time. And now it will be Sonima Gaur for the injection. Injected, stops and trying to drag it very hard. It's a lovely pass. What a good assist. And Priyanka Minch, the first goal scorer, finishes goal number 3 and her second goal. What a brilliant gameplay. This is what a lovely team performance this is. There you go. Waits it, slams it hard, gets into the padding of the goalkeeper. And 10 as I believe that's number 5. Yes, Princess Priyanka reflects it back to Priyanka Means, who does no mistake in getting the goal and slams it hardly for the third goal for Orissa. As Namalaka Rishika Pankaj, the goalkeeper, had no chance, absolute no chance. Lovely reflexes, everything that you want, reflexes, hand coordination, team coordination, was everything there to see, and that's why Orissa is such a great side to play. Oh, can be number 4. What a goal! What a terrific goal this is! I was just finished explaining goal number 3, and here comes goal number 4. What a stupendous brand of hockey! This are from the girls from Orissa. Goal number 4 for Orissa, 0 for Maharashtra. Look at that, what a bisecting angle. The defenses couldn't do much. 23-meter circle entry, then the striking circle entry. She gets it right between the legs of one of those defense corridor. And as she gets it, she just flicks it fine right into the jaws of the goal post. Oh, 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 Orissa. Oh, this girl seriously loves their hockey, and the brand they bring to the table is absolutely fascinating. Something which for everyone, for them to learn. I'm sure there's so much of they'll be happy to get it, and that goal formation. So goal number 4, I'll be telling you who have scored the goals. Sweetie Kuzur. So second goal in the contest for Sweetie Kuzur. Priyanka Minch now had her goal number 3. Priyanka Minch. So three two goals in this tournament. Priyanka Minch, including the penalty corner, and this last goal was scored by Sweetie Kuzur. Sweetie Kuzur now has 2 goals in the tournament. Was the one who have scored the first goal for Orissa in the tournament, and now scores this goal. She is seriously a great performer.
something which you always love to emulate. Can the humiliation get into number five? It's a lovely cross pass again onto Rubina Bakhla, the captain. Was just at the edge of the striking circle to receive the ball. Don't be surprised if they get it. Just love the brand of hockey that they just bring. It is such wonderful amendment of trying to play. As you see, a penalty corner has again come in. Not good news at all. Seriously, not good news. This has to be, as you say, some interesting ploy, but it's actually getting interesting for the girls from Odisha. Let's see what happens. Who will be there for the injection? Who's the injection specialist here? Number 10, number 12. Who she couldn't figure it out too much. Let's see what happens here. Injection has been done. Oh, crisscrossing the angle. Oh, back it was. This time from the blade of Sweetie Kuzur again. Could have been a lovely finisher. She just has scored goal number 4. Could have been back to back goals for Sweetie Kuzur. Ah, some good names, isn't it? They formed that invasion into the opposition's corridor so vastly. The defense of Maharashtra getting very weak in there. Less than 2 minutes remaining for the halftime in this first quarterfinal of the 16th edition of the Hockey India Sub Junior Women National Championship 2026, being played here at the Marang Gomke Jaipal Singh AstroTurf Hockey Stadium in the capital city of Ranchi in the state of Jharkhand. All this action live and exclusive on the YouTube channel of Hockey India. You can also be a part of all those buzz. Use the hashtag #IndiaKaGame and create the uproar and the commotion on social media. Get onto Facebook, Twitter, Instagram, and get joined with the fraternity, the family of Hockey India. Sure, we'll be forming a great part. Get into this also onto the website www.hockeyindia.org, and also download the app of Hockey India, and also the Hockey India League, and get right behind of all your favorite players, and also have to download the pictures and the fixtures, tournament statistics, all about that 100 years of Hockey India, how they have gone onto being reforming Indian hockey. So it'll be a good one for you to read through. And what are the preparations going on for the latest players who have been drafted into the funnels of Indian hockey. 13 seconds remaining, and in the halftime, Odisha absolutely huge at the moment with 4 goals versus Maharashtra. That's the second remaining, and the hooter has been blown as everyone stops in their tracks and gets into one direction where the dugouts are being situated. So we'll have a 10-minute breathing space. This is Mayur Barwa with the mic, and we'll take a bit of a break as the players get into the respective shadows. 4 for Orissa, 0 for Maharashtra. So stay tuned, come back for all those action becoming live and exclusive on the YouTube channel of Hockey India. So stay tuned.
And a very good welcome back to everyone for the next start of the half. Orissa clearly on the top of the game in this quarterfinal number one, 4 goals to 0 versus Maharashtra. This is something which I'm sure in those 10 minutes, probably in the orange and the whites playing Maharashtra, might have just trying to contemplate of what we can do. Purva Dubari, Anvi Rawat, especially just in number 5, can see just spin the game in their favor. Hugely will be depending on her. I'm sure number 5, the way just pulled a revolving, but whatever Urisa, they said, fortune favors the brave, and we want to claim the brevity of the action at the moment. There's a foul cry from Maharashtra as I see the action slam, stop a hook attempt, and well done from the goalkeeper. I believe it has taken the initial part of the stick of Navalakha Rishika Pankaj, the goalkeeper Maharashtra. Hmm, how huge it was. Ah, this is Mayur Barwa again with the mic, starting off the proceedings for the quarterfinal number 1. Watching the action of the 16th edition of the Hockey India Sub Junior Women National Championship 2026, live and exclusive on the YouTube channel of Hockey India. As Mishnu Kumari, the hands up, he starts off again. It's a foul cry. There's some Maharashtra and they gets the stick on. There have been 3 green cards, including a yellow card, all being given by Mishnu Kumari. And as she knows, it's going to be a tough contest. So their eyes as match officials needs to be on the game every time. And she is being assisted by Miss Sonu. 13 minutes and 15 seconds, a blink of an eye, and time just moves away very, very fast. And that's what sports can do. The more and more you get gruesome, get engaged with the game, you don't know when the time flies. Sometimes when nothing happens, you feel as the clock is not moving. But here is for Orissa, they keep on moving. Entry into the striking circle can get dangerous for Maharashtra. She twists and turns as she was trying to curve on the back of the stick. That was number 10, Kushbu Kuzur. No goals for her. And this tournament, Deepika Beige, interestingly, again, not getting too much of the angle today. Can she roll by? Oh, it was Priyanka Minch. She did get a green card today, unfortunately. It's a 2-minute suspension, but these girls are not letting anything easy. Look at how they keep on spinning. That's Anvi Rawat hitting it very hard, slamming from the corner. And number 3, that's Purva Dupare, who scored the first goal for Maharashtra in the tournament in the 3-0 victory versus Bihar. So she'll be a very important and interesting player, Purva Dupare. And then Anvi Rawal played 2 goals. And to recollect again for someone who has joined late, 6-0 versus Jharkhand in that win for Maharashtra in the last encounter. 1 goal, 1 field goal each for Shushmita Guria, Sandipa Kumari, Shruti Kumari, Pushpa Manji, Sanya Tirki, and then Preeti Bilung. So these were the goal scorers in the 6-0 victory versus Jharkhand. It's lovely ones, but now it's still 0 in the conundrum of uh, of Maharashtra. So that leaves some jitters, I'm sure, for them. As you see, Saraswati Oram giving a lovely pass onto Sweetie Kuzur, who scored the last goal, and she could have easily scored goal number 5 also to give her consecutive numbers in a goals column. At revolving strictly across with the ball into the 23-meter circle, but the defense has been nice from Maharashtra at that end. And Anvi Rawat with the ball twisting and turning her fate. Can she rotate it for Maharashtra? She just goes right between the defenses, gives a lovely pass towards the left corridor. Nice cross angle. Who slams it past the center line and gives it into the stick of Advita Kamble of Maharashtra. Gets on. Orissa, lovely pass onto his left wing, but the pace was much more there. It was trying to be received by Sweetie Kuzur of Orissa. That's Sweetie Kuzur on your screen running ahead past the 23-meter circle. Now a slam from Maharashtra at the corner.
received by Janvi Chavan of Maharashtra onto that ball past the center line. All the action, the commotion moving in one direction. Exactly 10 minutes now remaining here at quarter number 3 of the first quarter final. Orissa 4, Maharashtra 0. It's number 10 of Maharashtra. That's the captain, Prachi Katare. No goals for her in this tournament. It's all about leading the troops positively. Not really the mindset going forward. Going forward is no other than Priyanka Minch using the ball. That's Deepika Page in the picture. Deepika Page gives a lovely pass to Saraswati Ora. Inside the striking circle, slams it. A tomahawk attempted, but it's out of bounds. You know, they will be just moving it strongly. The moment they go past the 23-meter dotted line and then the striking circle, it becomes absolutely huge and yeah, very, very important for Maharashtra to be just be alert that there is a danger coming. There is a storm. There is a tsunami probably which is coming their way. And already this tsunami has destroyed 4 times into their home. Need to be really congratulated. This is all about getting into the semi-final. So don't remember, it's a knockout. You lose it, you move out. You win it, you get your name in the semi-finals, which will be played tomorrow. Then we have a gap on Saturday, and then the hardliner, the third and the fourth place, and then the final on Sunday on the 12th of April. Hardliner or not, Orissa says we don't want to play the hardliner. We want to play the final. And don't be surprised if they are there as one of the finalists. A good game. Number 17, Kira Nekka trying to spit and turn on the ball. Gives a lovely carve onto the 23-meter circle towards the right flank, trying to scoop the ball. And it's a penalty corner being signaled by Misono. And it's a penalty corner advantage for Orissa. Very familiar sight to see. Not getting easy now for Maharashtra as it goes to regroup and try and check who will be there for the penalty corner. Who goes for it? A discussion there. Let's see. Up, it's number 14. It's Sweetie Kuzur will be having the injection. She scored the last goal, Sweetie Kuzur, of this match, and scored the first goal in that 4-0 victory versus Andhra Pradesh. She starts an injection and lovely angle pass. It's a tomahawk straight into the goalpost from Kira Nekka. Oh, what a picture of concentration. Receives the ball, a diagonal cross pass to her, and she doesn't waste any time. Within a fraction of a second, her sticks makes a glorified goal. 5 for Hockey Association of Orissa, 0 for Hockey Maharashtra. That's a lovely cross pass, well received, and look at that, absolutely bangs it into the corner of the goalpost. Nothing much that Navalaka Rishika Pankaj, the goalkeeper, could have done. So that's how it is. This is really wonderful. We have been just getting on the work as Kira Neka now gets her name also in the goal scoring column. And this is the first goal in this tournament for Kiran Ekka. So 5 times the blow on Maharashtra now. This gets feeling it very, very tough. There's 7 minutes remaining in the third quarter. Looking ball again. Just muting some of the sensitive areas that has been received by Shushma Lakra. No more they can get it. Is there any more bodily blow? Can it be one of those interesting ploy? Let's see if the movement can be anything stronger. Exactly 8 minutes by my watch. Do I say by my clock? I don't have a watch. It's by my clock. I'm sitting here just doing my commentary. Just love it.
There is there at the corner number 60 specialist. That was Janvi Chavan, another very good player coming up the ranks for Maharashtra. Of course, we can speak about Anvi Rawat as much as you can. There's also been a great picture of concentration. As you see, we needed the Suneli Burg for Hockey Maharashtra getting on just near the 23-meter circle right at the corner. I see Prachi Katare, the captain, also ready to receive the ball right at the center forward and then try to get inwards, but the story has not been too good at the moment for Maharashtra. Yet to open the scoreline, Anvi Rawat slams it diagonally, a lovely cross into the angle of the striking circle, but could not get it. Defense strong. Sanjana Kuzur with the ball moving along as he receives it, and then on to Archana Kuzur. Archana Kuzur trying to give it to Priyanka Minch. Very long shot to Susma Lakra. Susma Lakra on to Priyanka Minch. Priyanka Minch gives it to dependable Princess Priya Ekka. Was trying to jig-jag. Then here's the whistle. Breaking the bondage, not much. Is a lovely pass from on to Deepika Bej. Deepika Bej on to number 7. And Archana Kuzur finally. Priyanka Minch finishes it off. Ah, as a long locks just makes a pendulum swing on the behind of her neck. It's all the happiness corridor which has opened up again for the 6th time as it's goal number 6 for Odisha. What a good receivable from Archana Kuzur as she passes on to Priyanka Minj, and she just deflects a stick right at the corner of the goal post with her right hand. 6 for Odisha, 0 for Maharashtra. One sided, absolutely one sided contest now that this is moving ahead. It is quarterfinal number 1. And Priyanka Minch now gets her second goal, in fact, her third goal for Priyanka Minch in this contest. It has been such a picture. Seriously, what a picture, what a player she is for Priyanka Minch, number 12. In a total now of she didn't have a single goal in her previous 2 outings, but now has 3 goals in the all important quarterfinal. That's why we say just move up the pace, and you know that how these girls have been routinely performing. So all so 2 field goals and a penalty corner for Priyanka Minch. This is seriously wonderful how the girls have gone, and it might be more smoothing on the cake. It's a lovely pass. This might be another goal. Yes, it is. And who else? It's Princess Priya Ekka. Oh, number 5. What a player. Oh, she has been absolutely dominating. So the second goal today for Princess Priya Ekka. Navalaka Rishika Pankaj, the goalkeeper, falling down. She knows the bullet is very strong. Seriously, been been such a wonderful story to say. That's why these girls are playing some spotless and some absolute gratified hockey, making it tougher and tougher now for Orissa. Princess getting a second goal. Siti Kuzur has a goal. Kiran Ekka has a goal in the form of a penalty corner. 7 for Orissa, none for Maharashtra. Absolutely wonderful. And it's vastly now one sided. Still 15 minutes remaining in the second quarter, and 2.5 minutes remaining from this quarter, number 3. What a half time they are enjoying at the moment. One after the other. They have been just grieving and gratifying the situation only for their own onwards. Seriously, scintillating hockey. A brand which they'll be so very proud of the way they have been playing. The colors, that yellow color, the yellow black, only getting more and more sparkling here at the Marangom Ke Jaipal Singh Astrota venue. Here in the capital city of Ranchi in the state of Jharkhand, the way we have been playing is absolutely something, a case in point for other players also to come up. And the way they're going, they're here to certainly seal a spot in the semi-final. The Hockey Association of Odisha. Less than 2 minutes remaining in quarter number 3.
You're watching the 16th edition of Hockey India Sub Junior Women National Championship 2026, live and exclusive on the YouTube channel of Hockey India. We'd also like to again thank the Jharkhand government and also the Sports Authority of India for the great support in bringing this to a great platform here for all the girls. We have been able to display the talent and skills to the fore and learning every moment as the ball just crosses by and goes out of bounds from the stick of Maharashtra. It was nothing to be, even if it was getting into the goal post. The whistle did come up from the umpire, Miss Neetu Kumari. Assisting her is Miss Sonu at the other end. Been a good one. It's always like a helpful memories for the match officials. Also, you learn every time, and not only for them, for the bench at the match, the technical bench, the timing judge, with the technical officer, the scoring judge. Everyone gets to learn. Not only for the players, of course. You get brownie points. You have all those awards that goes on to to acknowledge the efforts they have played and they have that sported on the hockey field. As you see, that's getting so much of the paces onto that ball and getting on was Princess Priya Ekka again, number 5. Anvi Rawat, number 5, somewhere will be there, and she'll be unhappy. Beg your pardon, with the way the process has been going. That's Archana Kuzur. They're targeting one more goal. And just a single digit of a second now remaining before the hooter just blows up. Do they get it? It's a good pass. It should be because just a second, milliseconds remaining. And the hooter has been sounded. The gong has been sounded, which means that just last 15 minutes are remaining in this quarterfinal number 1, and it's been one-sided with Hockey Association of Odisha 7, Hockey Maharashtra 0. We'll be back with the last quarter very soon. Don't go far away. This is Mayur Barwa. You stick by. All those action will be coming live and exclusive on the YouTube channel of Hockey India. Welcome back to quarter number 4, the last quarter of this match. Let's see now what happens from here on. Do Maharashtra get a chance to open their account? Watching the first quarterfinal of the 16th edition of Hockey India Sub Junior Women National Championship, live and exclusive on the YouTube channel of Hockey India. See how it now happens, how it now goes on from here on. Been playing some spotless hockey at the moment. We have been going into seriously wonderful. There have been some good overlays, and we'll only be trying to keep on harping and saying this is something which is really dependable, very demandable. That's why all those goal scorers will be very happy. Especially Priyanka Min. She didn't get a single goal in the whole tournament, but now come the quarterfinal, she scores 3 goals, including a penalty corner. On a corner, who else? It's Princess Priyanka. 2 goals, including the last goal of quarterfinal number of quarter number 3. And been such a resounding player. Has been both of them.
Golic for Kiran Ekka, also, and from Sweetie Kuzuru, who should have had 2 goals for her. But never mind, it's all for the team to play for, and they've been absolutely important assets in the team lineup for for hockey Orissa. Okay, Association of Orissa has been really great in signaling some good numbers, I believe. They have been so much really on the top of the game and meaning it to be very eventful. They always love it the way they gather. Been such a nice subject of the way they've been so be mindful, and that's how it is. They keep on going. They'll have to march along and have to just make it very spotless and stick by. Right? So very nice to go along. That's what you need. That's what you need to go for. They'll be absolutely loving the contest, and why not? You've been one some building of character. Orissa has been a hotbed, and especially with the chief minister, Mr. Navin Patnaik, giving that trust into sports with different stadiums and working on the grassroots. The infrastructure has been used. Different academies have come to the fore to enlighten both the genders, both boys and girls, men and women. And that's why you see the results in front of you. And not only that, the coaches have been very good hard taskmaster, making them go through the rigorous process of all those tournaments. Princess Eka giving into Priyanka Minch. Priyanka Minch trying to stick it up. Yeah, just at the corner of the line, the ball has been able to rotate away from Maharashtra. Could have been goal number 8. Oh, could have been 8-0. Hmm, could have been so nice. Could have been very close. If it was coming home. Let's see now what happens from here on. Can they just feed in the push? Let's see. Trying to Binjan puts it. Trying to get into the nice short corner. Can they just say that it just implies that the brand of hockey that the girls are playing seriously is spectacular to watch. At a very early morning, they might be just rubbing their eyes. Oh, this is quarterfinal time. We're one push away from the semifinals, and I'm sure it will be much more greatness of hockey they'll be playing when it comes to semifinals and then the final. They'll be keeping the fingers crossed. They edge over to the final and then win the Quater trophy. What about Maharashtra? 10.5 minutes remaining with 7 goals behind. It will be safe to say that Odisha are into the semifinals. So there will be lots to learn from Maharashtra from here on. It's all stepping stone, as I keep mentioning. These are all areas that you keep on learning. Of course, there will be gray areas which are needing to be addressed, remains of a huge concerns that can be addressed, can be ironed out. But practice makes perfect, and it's not to be ironed out. Then exactly 600 seconds now remaining in this match. In this quarter, last quarter, this first quarter final. And after this, for the next quarter final, it will be the voice in Hindi of Mr. Shamim Alam, who also is based in Ranchi in Jharkhand. Mr. Shamim Alam is such a nice human being. I'm sure will be up to just get with his paces going after this contest. Well, listeners, Mr. Shami Malam has been doing commentary for 40 years, over 40 years, in hockey, football, and athletics. Sometimes does cricket, but he's mainly into into hockey, football, and athletics. Absolutely loves it. Recently, there was we have a pet dog. We have the doggy. The dog is saying, I'm a little bored. Can I get into the hockey field, into the astroturf? I want to feel the venue. I love these girls playing hockey. Can I do it? No, she said it's official. You cannot be doing it.
The clock has been stopped at 9 minutes and 16 seconds just to break the momentum. Some Maharashtra says, "Oh, it's our pet dog. It's just to make us relax a little bit because Orissa has been really on the top of the game." But they have done well. 8 minutes have gone by, but there's not a single goal in this quarter. That's Hanvi Rawat slamming the ball from a little outside the line as Miss Nitu Kumari signals out of bounds. It's a wide. Same signal of wide in cricket also. It says goes out. She looks into the revolving ball very neatly, very deeply. It's the umpire, Miss Nitu Kumari. 8.5 minutes for this match to finish. 7 goals. So very much into sealing the semi-final slot now. The door is pushed open. They're knocking very hard. They don't have to knock because they are now there very much. It's all just about the formalities which is now remaining in this match. You can just put the ball twisting from here and there, and you'll only try and see what are the areas which needs to be addressed. Because there have been and this is really interesting the way they've gone on. It's fascinating again, and fascination will be continuing. So we finish and our play our last quarter. I'll just tell you what the other names which can come up in the last quarter. And so this is Orissa versus Maharashtra. After this, it will be Madhya Pradesh will be playing versus the Northeast Girls from Mizoram, and then Uttar Pradesh will be playing versus Haryana in the third quarterfinal. And at 4 o'clock, it will be Jharkhand versus Punjab at 4 p.m. to finish up the knockout phase, the first knockout phase of the quarterfinals. I have to say it again. It's Orissa and Maharashtra we're playing at the moment, and it will be Madhya Pradesh versus Hockey Mizoram, and commentary will be taken by Mr. Shami Malam. And the third, Uttar Pradesh versus Haryana, it will be mix of Mr. Shami Malam and me myself, Mayur Barwa, and then the last quarterfinal at 4 p.m. Hockey Jharkhand to play versus Hockey Punjab, and I'll be shouldering the responsibility of commentary. Responsibility is now being shared first from Princess Priyanka number 5 as she gives it to Priyanka Minch number 5 and finishes off on a wonderful fashion at goal number 8. Have to check of how they have got it. There we go. What lovely passing right through the corridors, two ahead, two behind the defenses, one ahead also. Look at that, everywhere they are. They knows what in it is. As both the hands of Miss Sonu gets in a straight line to say, "Yep, I'm happy." It's a lovely field goal. 8 for Hockey Association of Orissa, 0 for Hockey Maharashtra. As 8 bullets have been stemmed into Maharashtra. 6.5 minutes just remaining. Not great pictures for them to come up and understand of what it is. That's been the kind. And Kaminch now has 4 goals. So half of the goals which have been scored have come into the kitty for Priyanka Minch, what an outstanding player. 3 field goals, including a penalty corner. The penalty corner was goal number 3. She's been outstanding. And why not? I'm sure they'll be very happy the way they've gone on the paces. And this is what they need with 5.5 minutes now remaining in this match. They'll be saying, okay, let's see how it just goes, doubling up in this important encounter. Can they move it? They'll have to keep on going through the chores, unfortunately. So he'll try to make it as lively as possible. I'm sure possibilities will be met with those initial strings. And can the strings be pulled more for hockey? Orissa will be a question here. How much dependability it will be there? There's less than 5 minutes remaining for to call up the shots. This is really lovely.
Going has been good. The battle has been strong. It'll be absolutely been those which have really been and I'm sure this has been unstarring and staring up so nicely, going with the wind. If we can just say this is one of those blockage, probably we need to iron out from our mind. There's so much of the facilities we can just work it out. They will be mindful of how they can rotate up and keep on clinching the numbers. As you see, Sushma Lakra from Orissa carrying on the ball. There's so much on the team. A cry for a foul, and it has been acknowledged by the umpire. Time moves on. Less than 4 minutes remaining for the final hooter to be blown to signal the end of this one-sided encounter. Unfortunately, with absolute fortunes for Orissa, as they are on the doorsteps of entering the semi-final of the 16th edition of Hockey India Sub Junior Women National Championship 2026. Terrific eternity with 8 goals marking. As I mentioned before, half of them coming through the blade of Priyanka Minch. Princess Priyaka scoring the second goal, scored also the second goal in that 4-0 victory versus Andhra Pradesh. And then Archana Kuzur haven't had a goal today. Archana Kuzur, but back-to-back goals she scored in the 2-0 victory versus Punjab, a field goal and a penalty corner. And then for this match, 2 goals for Princess Priyaka, one for Kiran Ekka, and one for Sweetie Kuzur, and of course 4 for Priyanka Minch. If I have to repeat what I'm saying, it's been just a brilliant performance. It is really nice to know how they're just breeding up some absolute fire, carrying to trying to know the new nuances, trying to know of what it will be one and up. This is how they just keep on going and moving it all up across in personal. Trying to put a stick by. Let's see if it just moves along. Just creating some huge numbers and trying to just tot it up. Just see of how it will be going off the leather at the moment. What does the leather say? Do they just vastly go with some appropriation of the goal? Or do they just settle by? I think just 1.5 minutes remaining. Let's just play it up. That's what they're doing, little slowly, taking out the time as Urisa. There's 80 seconds now remaining for to signal the finish. Can Maharashtra get a goal here? Anvi Rawat trying. Anvi Rawat giving and scooping off to number 8 inside the striking circle, trying to thwart the shot. From the right was Diksha Kapse from Maharashtra. And she couldn't get it anything. There's 50 seconds now remaining from here on. Seconds can be huge in terms of how the match is just moving along. It's 40. That's Anvi Rawat spooning the shot. Almost like a dangerous predictor. What drama. What drama we had here. Just 32 seconds remaining for quarterfinal number 1 to finish. There is the first time that Maharashtra gets a penalty corner. Oh, what is it? Yeah, it was a dangerous shot. That's what probably Miss Nidhu Kumari had to save as number 10 comes in here all ready for injection. Can they open their account? They're down and out of this contest because just 32 seconds remaining. But it will be good to see if they can rotate the scoreline from 0 to 1 for Maharashtra.
and avoid a whitewash. Hammers the shot off straight into the into the goalpost, so it will not be a whitewash for Maharashtra, and that's why they are very happy. Really, really nice, really good. I think that the goalkeeper could do, and gets it, starts it, slams it right to the middle, stops, and direct flicks it. Anvi Rawat, a picture of absolute concentration. So 3 goals in total for her, 2 goals, and both the penalty corners were for versus Bihar. And now again she gets a penalty corner. The goal to her name is Anvi Rawat. It's just 10-9. It's just few of the seconds now remaining for this match to finish. Been really good. It's a single second, and hooter has been sounded, and so it is Hockey Association of Orissa who are into the semi-final, and Maharashtra will be just be okayish to know that okay, we've got 1 goal. It's not a whitewash. Just within 32 seconds of the match finishing, Anvi Rawat, we've been playing all up, struggling to get a goal. Finally gets on number. So 8 goals to Orissa, 1 for Maharashtra, as Maharashtra gets into the semi-final, which will be played tomorrow. Handshakes from the match officials. This is Mayur Barwa. I'll be moving out, and I'll be giving and paving my way to Mr. Shamim Alam, who will be going through the paces of the second quarter, which will be Hockey Madhya Pradesh versus Hockey Mizoram. Thank you so much, and we look forward for you to join us again. All the section will be coming live and exclusive on Hockey. Stay tuned. Cheers.
नमस्कार। झारखंड की राजधानी रांची के मरंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से मैं शमी आलम अपने साथी कमेंटेटर मयूर बरुआ के साथ आपका स्वागत करता हूं। ये बताते हुए कि हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आज यहाँ पर दूसरा क्वार्टर फाइनल सुबह के सत्र में शुरू होता हुआ मैरून रंग की जर्सी में बता दूं मैं, ये है मिजोरम की टीम, जबकि ब्लू रंग की जर्सी में खेल रही है मध्य प्रदेश की टीम। बहुत जोरदार आज यहाँ पर मुकाबला होने की संभावना है। जहाँ तक इनके टीमों का पिछले प्रदर्शन का सवाल है, मैं बता दूं मध्य प्रदेश ने मणिपुर को 6-3 से पराजित किया था, और जबकि मध्य प्रदेश ने हरियाणा को 5-1 से पराजित किया था। दूसरी तरफ से जहाँ तक सवाल है मिजोरम का, मिजोरम ने छत्तीसगढ़ को जो पराजित किया था 2-1 से, हालांकि मिजोरम की टीम उत्तर प्रदेश से हार गई थी 0 के मुकाबले 1 गोल से। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये मध्य प्रदेश की टीम पूल सी में थी और ये मिजोरम की टीम पूल डी में। तो इस तरह से मध्य प्रदेश ने अपने आरंभिक दोनों मुकाबले को जीता है, और उसका जो है अगर हम बात करें गोल डिफरेंस तो है 7+7, और मिजोरम का जहाँ तक बात है इसका जो है गोल डिफरेंस है ये 0। पहले मुकाबले में मिजोरम छत्तीसगढ़ को हराया, लेकिन दूसरे मुकाबले में ये उत्तर प्रदेश से हार गई थी। और यहाँ पहला गोल करती हुई शायद बिल्कुल मध्य प्रदेश ने यहाँ पर पहला गोल डाल दिया है। पलक झपकते ही ये यहाँ पर करिश्मा दिखाया एमपी की टीम ने। तो लगभग खेल का दूसरा मिनट चल रहा है और यहाँ पर एमपी को एक सफलता मिल गई है। देखिए राइट फ्लैंक से बॉल लेके निकली, स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंची एमपी के खिलाड़ी, और यहाँ पर जगह बनाया। बेहतरीन यहाँ डिफ्लेक्शन, व्हाट ए ब्यूटीफुल डिफ्लेक्शन बाय नौशीन नाज, जिसके ऊपर नाज है मध्य प्रदेश को। यहाँ खेल के दूसरा मिनट में यहाँ पर गोल डाल दिया गया। तो पहला गोल इस वक्त नौशीन नाज डालती हुई। तो इस खिलाड़ी से जर्सी नंबर 5 को आप याद रखिएगा। ये नौशीन नाज जो है, मैं बता दूं मध्य प्रदेश की जो ये खिलाड़ी है, ये अभी तक 5 गोल कर चुकी है। पहला मुकाबला में 3 गोल किया था, दूसरे मुकाबला में 2 गोल इन्होंने किया था, और अभी खेल के दूसरा मिनट में ही यहाँ पर नौशीन नाज ने बेहतरीन डिफ्लेक्शन से बॉल गोल कर दिया है। बहुत वेरी गुड ब्यूटीफुल डिफ्लेक्शन भाई नौशीन नाज। नौशीन नाज मैं बता दूं ये सिवनी से आती है। ये जबलपुर के नज़दीक सिवनी एक शहर है जहाँ से ये आती है। बहुत ही मध्यम परिवार की लड़की है नौशीन नाज, लेकिन खेल के ऊपर मध्य प्रदेश को पूरा नाज है इस खिलाड़ी के ऊपर। जैसा नाम वैसा काम। तो इस तरह से दूसरा क्वार्टर फाइनल यहाँ पर शुरू होता हुआ, और पहले ही क्वार्टर में यहाँ पर नौशीन नाज ने खेल के दूसरे मिनट में गोल डालकर अपनी टीम को बढ़त दिला दिया। चलिए मैं थोड़ा सा आपको खिलाड़ियों का आज का परिचय प्राप्त कराते चलूँ। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश की तरफ से गोलकीपर में खेल रही हैं मुस्कान रघुवंशी खेल रही हैं, और जर्सी नंबर 5 में खेल रही हैं केसर भवर। जर्सी नाज में जर्सी नंबर 4 में खेल रहे हैं केसर भवर। जर्सी नंबर 5 में नौशीन नाज, जो आज अपनी टीम की कप्तान भी हैं। कप्तान की बागडोर आज इन्हीं के हाथों में है। जर्सी नंबर 6 में वाल्मीकि, 7 में सुदीप्ता किंडो, 8 में गीताश्री, 9 में प्रियांशी छेत्री, 10 में स्नेहा दवाड़े, 11 में है साजिदा बेगम, 12 में प्रियांशी भंवर, 13 में सदफ जहाँ, 14 में सरोज मासी, 17 में शालिनी सिंह, 20 में विभा सिंह, 21 में जागृति यादव। इनके कोच हैं देवकी नंदन कुशवाहा, एक बेहतरीन कोच, काफ़ी मेहनत करते हैं अपनी टीम के ऊपर। और जब से इन्होंने कोचिंग की संभाली है बागडोर, अपनी टीम को बहुत हद तक चमकाया है और संवारा है ये मध्य प्रदेश की टीम को। ये ग्वालियर से आते हैं, ग्वालियर एकेडमी में, और इनकी जो टीम मैनेजर हैं वो प्रियंका जोहारी हैं। ये खेलो इंडिया से आती हैं, एक इकाई से है नेम चाओ
उस इकाई से ये आती हैं। और मैं बता दूं दूसरी तरफ से जहाँ तक मिजोरम का सवाल है, मैं मिजोरम के खिलाड़ियों का भी थोड़ा सा आपको परिचय प्राप्त करा दूं। इनके गोलकीपर में खेल रहे हैं पी शी लालरिन छानी, और जैसे नंबर 2 में लाल रेम रुआती, 3 में के भान लाल पेकी, 4 में शी लाल रुआत श्यामी, 5 में लाल रेम रुआती इस थर, 6 में लाल रित लुआंगी, 7 में लाल थी किमी, 8 में के लाल श्याम थारी, 10 में लाल बहन पुई, 11 में रेम रुआत पुई, 12 में लिजिया सी, 13 में लाल रेम रुआती, 14 में है लाल दीन पुई जो अपनी टीम के कप्तान भी हैं, 15 में है लियान लुन छिंगी, 17 में है सी मालाल साम लेली इनके, 18 में लाल पेखलुई, जबकि इनकी कोच हैं एफ भानलाल भेनी, टीम मैनेजर हैं एफ राम नेम मावी। मैं बता दूं आज के जो ये अंपायर जो खिला रहे हैं, जिनके ऊपर खेल को संचालित करने की जिम्मेवारी है, एक तरफ से सोनाली सिंह है जो आती हैं उत्तर प्रदेश से, जबकि दूसरी तरफ से हैं शेफाली छोकर, ये आती है हरियाणा से। आज की जो हैं स्कोरिंग जज है सोनाली साहू और टेक्निकल ऑफिसर हैं कनिष्का चौहान, जबकि टाइमिंग जंग है पिंकी नायक, रिजर्व अंपायर हैं रंजू करमकार। और मैं बता दूं रोहिणी है आज इनके पूरी टूर्नामेंट के टीम डायरेक्टर है, जबकि शिवानी शर्मा है अंपायर मैनेजर। ये है पूरा इनके स्वरूप है पूरा टीम टूर्नामेंट के स्ट्रक्चर का चल रहा है। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला रांची चैंपियनशिप का ये था टाइम ऑफिशियल और खिलाड़ी और अंपायर का परिचय। तो अभी स्थिति यहाँ पर 1-0, लगभग 7 मिनट का खेल शुरू यहाँ पूरा होने को है। मध्य प्रदेश ने यहाँ पर नौशीन नाज के बेहतरीन डिफ्लेक्शन से एक गोल की बढ़त प्राप्त कर लिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं, आपको मैं लिए चलता हूँ एक खूबसूरत अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम रांची का, झारखंड की राजधानी रांची का मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। चलते हैं मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। तो यहाँ पर मध्य रेखा के पास खेल चलता हुआ, नौशीन नाज के पास एक बार बॉल, नौशीन नाज गेंद से छिड़ गई, गेंद चली गई इस वक्त यहाँ पर एक बार फिर मिजोरम के खिलाड़ी के पास, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर बहुत अच्छा से रक्षापंच के खिलाड़ी ने बॉल को कलेक्ट किया है, जो एमपी की खिलाड़ी हैं। बहुत तेज हॉकी चलता हुआ, संभल के खेलना पड़ेगा आज यहाँ पर। जहाँ तक सवाल है एक तरफ से मिजोरम का, बहुत संभल के खेलना पड़ेगा मिजोरम की टीम को, क्योंकि बहुत ही तेज हॉकी खेलती है। जहाँ तक सवाल है मध्य प्रदेश एक बार फिर एक मौके को तलाश रही थी मध्य प्रदेश के खिलाड़ी, लेकिन यहाँ पर सफलता इस वक्त निकाल, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बॉल को निकाल दिया है। तो परिस्थिति जो है यहाँ पर इस वक्त जो बतला रही है वो बतला रही है कि पक्ष में तो यहाँ पर सफलता इस वक्त बहुत ही जबरदस्त मध्य मध्य रेखा के पास खेल होता हुआ इस वक्त यहाँ पर बॉल को संभाल लिया है मध्य प्रदेश के खिलाड़ी ने। अच्छा पास बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, हल्का फ्लिक राइट फ्लैंक में बॉल को निकालने की कोशिश। स्थिति इस वक्त जो है वो अभी भी है 0-1। तो मध्य प्रदेश 1 और यहाँ पर मिजोरम 0। एक खिलाड़ी को चोट लग गई, शायद मिजोरम की खिलाड़ी इस वक्त गिरी हुई है, और मिजोरम की एक खिलाड़ी हैं रेम रुआतपुई, इनको हल्की चोट लगी थी, लेकिन वैसी कोई चिंता की बात नहीं। रेम रुआतपुई खड़ी हो गई। गेंद इस वक्त मिजोरम के खिलाड़ी के पास गेंद है, लाल था किमी के पास। लाल थी किमी इस वक्त बॉल निकालने की कोशिश, लेकिन गेंद को संभाल लिया है इस वक्त एमपी के खिलाड़ी ने, और एमपी के खिलाड़ी मध्य से बाएं फ्लैंक से इस वक्त नौशीन नाज के पास है बॉल। नौशीन नाज ने बॉल को पीछे सरका दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। गेंद एक बार फिर अच्छा पत्ती के खिलाड़ी के पास बॉल, यहाँ पर एमपी के खिलाड़ी पास राइट फ्लैंक एक डायगोनल पास, यहाँ पर मध्य रेखा को क्रॉस करते हुए एमपी की खिलाड़ी बहुत तेज खेल रही इस वक्त। यहाँ एमपी की रूली वाल्मीकि बॉल लेके निकल रही थी, अच्छा पास बढ़ा दिया इस वक्त।
10 मीटर रेखा के पास पहुंच गई एमपी के खिलाड़ी। राइट फ्लैंक से इस वक्त सर्किल एंट्री करती हुई, बहुत अच्छा पास, लेकिन अच्छा इंटरसेप्ट यहाँ पर लाल रेमरुआती स्तर का, लाल रुआम स्तर जो है मिजोरम के खिलाड़ी ने बॉल को बढ़ा दिया, पास लाल था किमी के लिए, और एक बार फिर बॉल को यहाँ पर बढ़ा दिया गया लाल शेमज्वाली के लिए। इस वक्त राइट फ्लैंक से अटैक बनता हुआ यहाँ पर मिजोरम का, मिजोरम 0 यहाँ पर मध्य प्रदेश 1। खेल के जो यहाँ पर दूसरा मिनट में गोल बना था नौशीन के द्वारा, उस वह अभी तक की स्कोरिंग का बढ़त अभी तक बरकरार है यहाँ पर एमपी के पास। रेड फ्लैंक से इस वक्त बॉल लेके निकालने की कोशिश के लाल श्याम थारी कर रही थी, लेकिन यहाँ पर खेल के निर्णायक का इशारा और फ्री हिट मिलता हुआ अपनी क्षेत्र इस वक्त बाएं क्षेत्र से, बाएं फ्लैंक से जहाँ डॉक्टर लाइन है वहाँ से इस वक्त एमपी को बड़ी लंबा हिट यहाँ पर प्रियांशी छेत्री ने बॉल को बढ़ाया साथी खिलाड़ी के लिए। एक बार फिर यहाँ गेंद चली आई है केशर भाभर के पास, गेंद उनसे छीन गई, सफलता मिली है इस वक्त यहाँ पर मिजोरम के खिलाड़ी को। लाल भेन पुई के पास थी गेंद, लेकिन यहाँ पर नौशीन नाज को कुछ समझाते हुए खेल के अंपायर सोनाली सिंह है, एक तरफ से अंपायर, दूसरी तरफ से है शेफाली। एक पे अंपायर सोनाली सिंह आती हैं उत्तर प्रदेश से, शेफाली हरियाणा से। लंबा हिट, बहुत ही अच्छी पास यहाँ पर सीमाल लाल शाम चेली के लिए बॉल, गेंद निकल गई बाहर इस वक्त टच लाइन का। तो 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का झारखंड की राजधानी रांची के मरांग गोम के जपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में दूसरा क्वार्टर फाइनल इस वक्त चलता हुआ। लंबा हिट यहाँ पर बहुत ही साजिदा बेगम ने लंबी हिट लगाई अपने साथी खिलाड़ी के लिए। लेफ्ट फ्लैंक से बॉल लेके निकलने की कोशिश, इस वक्त बहुत अच्छा पास, एडवांस होती हुई स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर इस बार प्रवेश करती हुई यहाँ पर एमपी की खिलाड़ी गिर पड़ी है। एमपी की खिलाड़ी इस वक्त नौशीन नाज गिर पड़ी थी, सॉरी यहाँ पर गिर पड़ी थी। अब भाविका जो ग्वालियर से आती है उनको गलत तरीके से रोका गया और यहाँ पर पेनल्टी कॉर्नर का इशारा खेल कर निर्णायक का। तो स्थिति यहाँ पर है इस वक्त शुद्ध एक पेनल्टी कॉर्नर का इशारा है इस वक्त एमपी के लिए। इंजेक्शन रोका गया, स्टॉप और ब्रेक, यहाँ पर गेंद गई गोल पोस्ट के अंदर। व्हाट ए ब्यूटीफुल गोल, क्या खूबसूरत गोल, पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया गया एमपी के खिलाड़ी के द्वारा। तो इस तरह से यहाँ पर अब यहाँ पर पेनल्टी देखिए, इंजेक्शन रिप्ले में स्टॉप और ये ड्रैग, बहुत बेहतरीन खूबसूरत ड्रैग यहाँ पर नौशीन नाज ने एक बार फिर स्टिक का जादू दिखलाया और नौशीन नाज के स्टिक से लगती हुई गेंद गई सीधा गोल पोस्ट के अंदर। 12वां मिनट, खेल के 12वां मिनट में एक बार फिर नौशीन नाज ने गोल किया। क्या जबरदस्त है, क्या जाबाज खिलाड़ी है नौशीन नाज। दूसरा मिनट 12वां मिनट में लगातार गोल नौशीन नाज के द्वारा। इसके बाद अगर एक गोल और कर दिया जाता है नौशीन नाज के द्वारा तो यहाँ पर हैट्रिक बना गया। एक अच्छा मौका यहाँ पर, बहुत बढ़िया मौका मिला था मिजोरम के लिए, लेकिन उतना ही अच्छा बचाव, सुंदर बचाव। अब बॉल लेकर बढ़ते हुए इस वक्त यहाँ पर गीताश्री नम्मी बॉल लेकर बढ़ रही थी। गीताश्री नम्मी के पास अभी भी बॉल, राइट फ्लैंक में बॉल के निकालने की कोशिश, यहाँ पर एमपी का दबाव बढ़ता हुआ राइट फ्लैंक से सर्किल एंट्री की कोशिश, क्रॉस पास, बहुत तेज हॉकी चलता हुआ। ये मध्य प्रदेश की टीम ने बिल्कुल खलबली मचा के रख दिया है यहाँ पर मिजोरम के खेमे में। तो यहाँ पर आया फेट में तब अपने क्षेत्र से। तो स्थिति इस वक्त है 0-2। जब रात है इतनी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा। जब शुरुआत इतनी इस वक्त भयंकर है, इतनी ऑफेंसिव है, इतनी आक्रामक है यहाँ पर मध्य प्रदेश का, तो अंतिम क्या होगा। अभी तो 3 क्वार्टर का खेल बाकी है। दूसरा क्वार्टर, पहला क्वार्टर का इस वक्त लगभग 2 मिनट का खेल बाकी है। इस वक्त बॉल लेके स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंचने की कोशिश कर रही थी मिजोरम के खिलाड़ी, गिर पड़ी। बहुत अच्छा इंटरसेप्ट इस वक्त एमपी का खिलाड़ी का, राइट फ्लैंक से बॉल को बढ़ाने की कोशिश। आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिसीविंग, कितना अच्छा पासिंग और किस तरह से अटैक एमपी के खिलाड़ियों का, काबिल तारीफ। रूली वाल्मीकि के पास है बॉल, रूली वाल्मीकि ने पीछे
बॉल को सरका दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। यहाँ पर गेंद साजिदा बेगम के लिए, साजिदा बेगम ने समांतर पास बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। बॉल को यहाँ शेनाहा दवाड़े के लिए, दवाड़े ने बॉल को बढ़ाने की कोशिश की थी प्रिंसा छत्री के लिए, गिन गई बाहर। टच लाइन का फ्री हिट मिलता हुआ यहाँ पर साजिदा बेगम ने लंबा फ्री हिट लगाया है, बेहतरीन फिट फ्री हिट और अच्छा पास मध्य रेखा से बाएं फ्रेंड से लेफ्ट फ्रेंड से बॉल लेके निकली, क्योंकि प्रियांशी छेत्री नौशीन नाज को बॉल को बढ़ा दिया। गेंद एक बार फिर नौशीन नाज के पास और नौशीन नाज ने हिट लगाई थी, गेंद गई बाहर। गोलकीपर के दाएं फ्लैंक से बॉल निकल गई यहाँ पर गोल लाइन के बाहर। बहुत ही हड़बड़ी खलबली मचा के रख दिया है इस वक्त एमपी के खिलाड़ियों ने, और ये बहुत ही हद तक कहा जा सके तो ये प्रबल दावेदार है यहाँ पर। फाइनल मुकाबले को जीतने की प्रबल दावेदार नजर आ रही है इस वक्त एमपी की खिलाड़ी। खेल के तेवर से पता चल रहा है कि उनका तेवर बहुत ही खतरनाक है, आक्रामक रुख अपना लिया है इस वक्त यहाँ पे एमपी के खिलाड़ियों ने। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी यहाँ जूझती हुई मिजोरम के खिलाड़ी, लेकिन सफलता मिली इस बात एमपी के खिलाड़ी को। बॉल लेके निकलने की कोशिश लेफ्ट फ्लैंक से घुसने के लिए चाह रहे हैं क्षेत्र में, बहुत अच्छा पास इस वक्त। बॉल लेके धीरे धीरे बढ़ते हुए यहाँ पर प्रियांशी छेत्री बॉल लेके सर्किल एंट्री करने की कोशिश। यहाँ पर एमपी का बाएं लेफ्ट फ्लैंक से हमला पनपता हुआ, अच्छा पास नौशीन नाज के लिए पास बॉल था, नौशीन नाज से गेंद आगे बढ़ गई, पीछे से उनके साथी खिलाड़ी ने बॉल को कलेक्ट किया, गेंद बढ़ा दिया गीताश्री नम्मी के लिए। ये गीताश्री नम्मी, सुनीता किंडो, नौशीन नाज, भाविका, ये बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं। बिल्कुल एक तरफ से आंधी की तरफ बॉल लेके चलती हैं, समांतर चलती हैं जब कोई खिलाड़ी इनका बॉल लेके आगे बढ़ता है। इस बीच यहाँ पर मिजोरम के खिलाड़ी के पास बॉल, समांतर पास। मैरून रंग की जर्सी में है मिजोरम की टीम, जबकि नीली रंग की जर्सी में दिख रही है यहाँ पर मध्य प्रदेश के खिलाड़ी। तो फ्री मिलता हुआ यहाँ पर, तो स्थिति है 2-0। और यहाँ पर इस बीच यहाँ पहला क्वार्टर का समय खत्म होता हुआ, पहले क्वार्टर का समय खत्म होने तक नौशीन नाज जो कप्तान है मध्य प्रदेश के, उसके 2 गोल के बदौलत यहाँ एमपी की टीम 0 के मुकाबले 2 गोल से आगे चल रही है। मिजोरम से हम मिलेंगे दूसरे क्वार्टर में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड की राजधानी रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह स्टेडियम। और मैं शमी मालूम आपको लिए चलता हूँ एक बार फिर खेल की दुनिया में, हॉकी की दुनिया में ले चलता हूँ। और चलिए चलते हैं रांची का मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जहाँ एक कांटे की ट्रैकर चल रही है। एक तरफ से मिजोरम की टीम, दूसरी तरफ से है मध्य प्रदेश की टीम। दूसरा पेनाल्टी दूसरा फाइनल, ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला इस वक्त चलता हुआ। मैं बता दूं, एक गोल फील्ड गोल के द्वारा किया गया नौशीन नाज के द्वारा, कि दूसरा गोल पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करके नौशीन नाज ने जो है मध्य प्रदेश की जो जाबाज खिलाड़ी है 2-0 की बढ़त दिला दिया इस वक्त मध्य प्रदेश को। स्थिति इस वक्त है यहाँ पर 2-0।
दूसरा क्वार्टर का खेल इस वक्त शुरू होता हुआ। तो यहाँ पर एक पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित करती हुई खेल के दूसरा क्वार्टर में यहाँ पर दूसरा पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित कर लिया है यहाँ पर एमपी ने। मध्य प्रदेश दूसरा पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित करती हुई दूसरे क्वार्टर में। देखिए इंजेक्शन स्टॉप और यहाँ पर एक बार फिर बढ़ा दिया गया है ड्रैग के लिए। ये टॉम हॉक गेंद गई बाहर। ये जीवन दान मिलता हुआ यहाँ पर मिजोरम को। शुक्र मनाइए कि ये टॉम हॉक गोल पोस्ट से बाहर गई, अन्यथा खतरा बना था यहाँ पर मिजोरम के ऊपर। मिजोरम के खिलाड़ी के पास बॉल इस वक्त लेफ्ट हैंड से बॉल लेके निकलते हुए मिजोरम के बहुत तेज तर्रार इस वक्त के बेलाल पेकी बॉल लेके निकल रही थी। जैसे नंबर 3 एक बार फिर के बेलाल पेकी के पास बॉल स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर घुसने की तैयारी। इस वक्त स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर खेल होता हुआ यहाँ पर एमपी के स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर, लेकिन वहाँ पर बहुत चकन्नी थी। यहाँ पर एमपी के खिलाड़ी बॉल को बाहर किया खतरे के क्षेत्र से पोजीशन बनाती हुई हिट लेने के लिए। गेंद यहाँ पर एक बार फिर फ्री हिट का इशारा यहाँ पर है मिजोरम के लिए। सर्किल के ऊपर खेल चलता हुआ इस वक्त, लेकिन गेंद एक बार फिर यहाँ पर मिजोरम के खिलाड़ी केलर श्यामी के पास थी। गेंद बहुत हड़बड़ी में बाहर मार गई। फिर हिट मिलता हुआ इस वक्त रूली वाल्मीकि के पास से बॉल एमपी के खिलाड़ी और गेंद गई बाहर इस वक्त टच लाइन का। फिर हिट मिलता हुआ एक बार यहाँ पर एमपी को। मध्य प्रदेश की टीम 0-2 की बढ़त के साथ इस वक्त दूसरा क्वार्टर का यहाँ पर तीसरा मिनट का खेल चल रहा है। अच्छा पास ये बहुत अच्छा इंटरसेप्ट यहाँ पर के भेलाल पे की बॉल को कलेक्ट करने की कोशिश कर रही थी मिजोरम की खिलाड़ी। फिर मिलता हुआ इस वक्त मिजोरम को पीछे से कर दिया बॉल को मिजोरम के खिलाड़ी मध्य रेखा के पास। धीरे धीरे बॉल को निकलने की कोशिश, डायगोनल पास यहाँ पर मध्य रेखा से लेफ्ट फ्लैंक से एक अटैक बनता हुआ इस वक्त मिजोरम का। सर्किल एंट्री की कोशिश, डॉटेड लाइन के पास पहुंच गए मिजोरम के खिलाड़ी। बहुत ही बेहतरीन लेकिन अच्छा इंटरसेप्ट यहाँ पर बॉल को निकाल दिया साजिदा बेगम। अभी भी साजिदा बेगम के पास है बॉल। एमपी की खिलाड़ी साजिदा बेगम बॉल को डायगोनल पास बढ़ाती है अपने साथी खिलाड़ी के लिए। बहुत बेहतरीन पास लेफ्ट विंगर के लिए बॉल को बढ़ाने की कोशिश, पीछे से दौड़ की आई वहाँ पर एमपी के खिलाड़ी। बॉल को बढ़ा दिया प्रियांशी छेत्री के लिए। प्रियांशी छेत्री ने बॉल को बढ़ा दिया नौशीन नाच को गलत तरीके से रोका गया। फिर हिट मिलता हुआ धीरे धीरे एमपी की टीम एडवांस होती हुई क्षेत्र में इस वक्त मिजोरम के क्षेत्र में बढ़ती हुई। गेंद इस वक्त प्रियांशी छेत्री के पास। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी प्रियांशी छेत्री ने बॉल को डायगोनल पास दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए साजिदा बेगम के लिए। साजिदा बेगम ने लंबा हिट किया है बॉल को सरोज मानसी के लिए। सरोज मानसी ने बॉल को पीछे सरका दिया। एक बहुत अच्छा नपतुला पास और एक थ्रू पास बढ़ाने की कोशिश स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर वहाँ पर, लेकिन बहुत तेज गति से गेंद निकल गई बाहर। बॉल को भेजने की कोशिश की गई थी नौशीन नाज के लिए वहाँ पर। स्थिति 0-2। खेल का 5 मिनट लगभग खत्म होता हुआ दूसरे क्वार्टर का 10 मिनट का समय बाकी है। लंबा हिट यहाँ पर एमपी के खिलाड़ी के द्वारा। बहुत अच्छा पास नौशीन नाज बॉल बढ़ने की कोशिश करी थी, लेकिन उनसे छिन गई गेंद। सफलता मिली इस वक्त यहाँ पर मिजोरम के खिलाड़ी को मध्य रेखा से बॉल लेके बढ़ते हुए इस वक्त राइट फ्लैंक में पास सर्किल एंट्री चाह रही है इस वक्त मिजोरम की टीम। राइट फ्लैंक से बॉल को निकलने की कोशिश साथ में लगी हुई है साजिदा बेगम इस वक्त मध्य प्रदेश की। साजिदा बेगम ने बॉल को बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। वहाँ पर तो बहुत अच्छा पास बढ़ा दिया प्रियांशी छेत्री के लिए। प्रियांशी छेत्री ने बॉल को पीछे सरका दिया और यहाँ पर एक बार बीएमसी पर अच्छापंथी के खिलाड़ी ने बॉल को बाहर कर दिया। बहुत अच्छा पास लेफ्ट विंग से इस वक्त हमला बनाता हुआ मध्य रेखा को क्रॉस करती हुई इस वक्त यहाँ बहुत तेजी के साथ निकल रही है। एमपी की खिलाड़ी देखिए बढ़ गई यहाँ पर स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर हट मार बनता हुआ बहुत तेज हमला। ये तीसरा गोल होता हुआ यहाँ पर लगता है केशर भावर ने गोल किया है। बहुत तेजी से आक्रमण बना, देखिए किस तरह से आक्रमण बना। बॉल लेके आगे बढ़ते हुए ये देखिए बड़ी बाएं तरफ सर्किल के अंदर बॉल को बढ़ा दिया गया और यहाँ पर एक बहुत बढ़िया पास और ये गेंद गई। केसर भावर ने गोल किया है यहाँ पर दूसरा क्वार्टर का 6वां मिनट यानी 21वां मिनट में। 21वां मिनट में केसर भावर ने गोल किया है तीसरा गोल। तो अब यहाँ पर
स्कोरिंग का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ। तो स्थिति इस तरह से मैं बता रहा था कि जब रात है इतनी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा। दूसरा क्वार्टर में यहाँ पर पहला गोल, एक क्वार्टर में 2 गोल हुआ था, दूसरा क्वार्टर में यहाँ पर केशर भाबर ने नौशीन नाज के पास के ऊपर बेहतरीन गोल किया। तो स्थिति 3-0। यहाँ पर मिजोरम को बहुत संभल के खेलने की जरूरत है, अन्यथा खतरा बढ़ेगा मिजोरम के ऊपर। 3-0 की स्थिति यहाँ पर इस वक्त बॉल लेके मिजोरम के खिलाड़ी लाल रिंगपुई जो कप्तान है आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, गलत तरीके से रोका गया। फिर मिलता हुआ यहाँ पर लंबा हिट साजिदा बेगम के द्वारा, साजिदा बेगम लेकिन गेंद चली इस वक्त यहाँ पर लाल पेक पुली के पास। अलेक पुली ने बॉल को बढ़ाने की कोशिश की थी यहाँ पर के रात स्वामी के लिए, लेकिन गेंद से निकल गई। राइट फ्लैंक से इस वक्त एमपी के खिलाड़ी बॉल को कलेक्ट करते हुए थ्रू पास बढ़ाने की कोशिश, गेंद गई बाहर। 7 मिनट का लगभग खेल होता हुआ इस वक्त दूसरा क्वार्टर का। बहुत तेज हॉकी चल रहा है, दूसरा क्वार्टर फाइनल चल रहा है, देख रहे हैं आप। यहाँ पर रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में खुला मौसम है और यहाँ खुला चुनौती है दोनों टीमों के बीच। एक तरफ से यहाँ पर मिजोरम और दूसरी तरफ से यहाँ पर मध्य प्रदेश की टीम। मध्य प्रदेश के खेल से ऐसा प्रतीत हो रहा है, इसकी ने आरंभिक मुकाबले को दोनों जीता था। मणिपुर को 6-3 से पराजित किया था, हरियाणा को 5-1, जबकि हरियाणा एक बहुत मजबूत टीम है। ये 2 मुकाबले को बहुत बेहतरीन तरीके से जीत के बाहर आई थी यहाँ पर क्वार्टर फाइनल के लिए। ये क्वालिफाई की थी ये मध्य प्रदेश की टीम। तो बहुत ही ज़बरदस्त खेल रही है मध्य प्रदेश की टीम हॉकी। यहाँ पर आक्रामक हॉकी खेल रही है। यहाँ पर लाल रिंगपुई ने बॉल को स्कूप किया था अपने साथी खिलाड़ी के मध्य रेखा के पास। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी बॉल को कलेक्ट करने की कोशिश से लेफ्ट विंगर को पास बढ़ा दिया है, बहुत अच्छा पास यहाँ बढ़ा दिया है गीता सिंह नमी के लिए अपने साथी खिलाड़ी को। गेंद को बॉल के पीछे अपने क्षेत्र में खेलती हुई इस वक्त एमपी की टीम। राइट फ्लैंक से एक थ्रू पास बढ़ाने की कोशिश, बहुत तेज गति से गेंद निकल गई बाहर। अंपायर ने अपने दोनों बाहों को फैला के इशारा किया वाइड का, यानी गेंद बहुत दूर जा रही है गोल पोस्ट का। हिट स्थिति यहाँ पर 3-0, मध्य प्रदेश 3 और मिजोरम 0। लंबा हिट, बॉल को बढ़ाने की कोशिश के शिमालाम स्वाम जेली के लिए है बॉल यहाँ पर, लेकिन बहुत अच्छा इंटरसेप्ट यहाँ पर एमपी के खिलाड़ी का। बॉल को सुरक्षित बढ़ा दिया है। राइट फील्ड में डायगोनल पास अपने साथी खिलाड़ी के लिए। राइट फील्ड से बॉल लेकर निकलते हुए बहुत तेजी के साथ इस वक्त देख रहे हैं मध्य प्रदेश के खिलाड़ी बॉल को बढ़ा दिया नौशीन नाज के लिए। नौशीन नाज ने यहाँ पर बॉल को क्रॉस पास बढ़ाने की कोशिश की और फिर हिट मिलता हुआ इस वक्त यहाँ पर मिजोरम के खिलाड़ी ने लंबा हिट लगाया है। बहुत तेज गति से गेंद निकल गई बाहर, हालांकि उनके पीछे भाग रही थी शिमालाओसाओ मेजली। एक बार बहुत तेज हिट और ये गोल, चौथा गोल यहाँ पर देखिए, बहुत तेज आक्रमण और ये चौथा गोल होता हुआ यहाँ पर एमपी के द्वारा। यहाँ पर देखिए किस तरह से ये लंबा हिट और यहाँ डिफ्लेक्शन और गेंद गई गोल पोस्ट के अंदर। चौथा गोल होता हुआ खेल का 9वां मिनट, दूसरा क्वार्टर का 9वां मिनट। अगर कुछ हम बात करें तो खेल के 24वां मिनट में ये गोल हुआ। खेल के 24वां मिनट में ये चौथा गोल हुआ। स्थिति 4-0। अब यहाँ से मुसीबतें बढ़ती हुई मिजोरम के खिलाड़ी के पास बस शिमालाल स्वाम जेली के पास सर्किल एंट्री करने की चाह रही हैं, लेकिन रक्षा पंक्ति भी बहुत मजबूत नजर आ रहा है इस वक्त। एमपी का जो रक्षा पंक्ति है काफी मजबूती के साथ अड़ा हुआ है। 5.5 मिनट का समय बचा हुआ है। स्कूप किया यहाँ पर एमपी के खिलाड़ी ने, बहुत अच्छा बॉल लेकर निकलने की कोशिश कर रही हैं। बॉल को बढ़ा दिया यहाँ पर केशर भाभा ने अपने साथी खिलाड़ी के लिए लेफ्ट फील्डिंग से और गेंद के ऊपर कब्जा जमाया इस वक्त मिजोरम के खिलाड़ी ने।
बॉल लेके निकलने की कोशिश, लाल रेत रुवांगी के पास है बॉल, बहुत अच्छा पास इस वक्त मध्य रेखा के पास। इस वक्त मिजोरम के खिलाड़ी बॉल लेके निकलने की कोशिश कर रही है, फ्री मिलता हुआ मिजोरम को, धीरे धीरे बॉल लेके निकलने की कोशिश। बहुत जबरदस्त खेल होता हुआ मुकाबले में वापसी के लिए बेकरार है इस वक्त मिजोरम की टीम, लेकिन बहुत मजबूती के साथ अड़ी हुई है रक्षा पंक्ति की भी टीम जो है एमपी की टीम, कोई मौका नहीं दे रहे हैं जो इनका आक्रमण पंक्ति के खिलाड़ी हैं मिजोरम को, उनको आगे बढ़ने का और कोई हिट लेने का यहाँ पर सर्किल के अंदर जाकर के। स्थिति है 0-4, मध्य प्रदेश 4 मिजोरम 0। मध्य रेखा के पास खेल चलता हुआ सेंट्रल लाइन से एक बार बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एमपी के खिलाड़ी थ्रू पास, अच्छा मौका है एक बार फिर स्टैकिंग सर्किल के अंदर, ये हिट, अच्छा बचाव, नौशीन नाज पहुंच गई है एक बार फिर वहाँ पर, गेंद से छीन गई नौशीन नाज से, यहाँ इशारा कर रही है नौशीन नाज। और मैं बता दूं इस वक्त यहाँ पर खेल के अंपायर ने मदद मांगी है यहाँ पर वीडियो अंपायर से। तो वीडियो अंपायर से मदद मांगी है यहाँ पर खेल के निर्णायक ने, देखिए क्या होता है, आता है क्या डिसीजन वहाँ से। स्लो मोशन में इसे देखा जा रहा है इस तरह से, स्लो मोशन में यहाँ पर देखते हुए तो 4-0 की स्थिति है। खेल के दूसरा मिनट में गीताश्री नम्बी ने गोल किया, 12वां मिनट में नौशीन नाज ने, 21वां मिनट में बाबर केशर भाभर ने, और खेल के 24वां मिनट में नौशीन नाज। तो इस तरह से 4 गोल हो चुके हैं यहाँ पर एमपी की तरफ से। क्या डिसीजन आता है देखिए यहाँ पर। तो दोनों कप्तान को बनाया है यहाँ पर अंपायर ने, और यहाँ पर खेल शुरुआत करने की इस वक्त इशारा नौशीन नाज है एक तरफ से कप्तान, दूसरी तरफ से लालदीन पुई, और खेल शुरू होता हुआ यहाँ पर दूसरा क्वार्टर का लगभग 4 मिनट का समय बचा हुआ है। लबाहिट यहाँ पर बॉल को नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है यहाँ पर लाल रेम रुआत स्थर, अभी भी यहाँ पर मिजोरम के खिलाड़ी के पास बॉल, राइट साइड में बॉल को पास बढ़ा दिया गया है यहाँ पर लालदीन पुई के लिए, लेकिन लंबा हिट और गेंद इस वक्त गई बाहर। फ्री हिट मिलता हुआ इस वक्त अपने क्षेत्र में यहाँ पर एमपी को, बॉल को प्रियांशी छेत्री ने बढ़ाया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, बहुत अच्छा पास, नपातुला पास, बॉल को बढ़ा दिया गया था केशर भाभर के लिए। केशर भाभर भी एक गोल कर चुकी है आज यहाँ पर, खेल के 21वां मिनट में केशर भाभर ने गोल किया था। एक बार फिर यहाँ पर लेकिन निकलने की कोशिश, यहाँ बॉल का अच्छा पास गीताश्री नम्मी के द्वारा, और बहुत अच्छा पास, एक बार क्लीन करने की कोशिश, यहाँ पर खतरा बनता हुआ था, लेकिन यहाँ पर बॉल को निकाल दिया गया मिजोरम के खिलाड़ी के द्वारा। 3 मिनट का समय बचा हुआ है इस वक्त, दूसरा क्वार्टर का मध्यांतर का समय होने को है। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में बता दूं जो चल रहा है
1 अप्रैल से यहाँ पर शुरू हुआ था। ये दूसरा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चल रहा है इस वक्त। एक यहाँ पर सामने टीमें हैं मिजोरम मैरून रंग की जर्सी में, जबकि दूसरी तरफ से यहाँ पर नीली रंग की जर्सी में नजर आ रही है मध्य प्रदेश की टीम। ताज़ा तरीन स्थिति यहाँ पर यह है कि मध्य प्रदेश की टीम ने 0 के मुकाबले 4 गोल की बढ़त प्राप्त कर लिया है मिजोरम के खिलाफ। लेफ्ट फ्लैंक से मिजोरम का आक्रमण पनपता हुआ, बहुत अच्छा पास, नपातुला पास, सर्किल एंट्री के लिए चाह रही है मिजोरम के खिलाड़ी, एंट्री करते हुए भी अच्छा पास, लेकिन यहाँ पर से पहले अंपायर का इशारा। तो स्थिति 0-4, लगभग 2 मिनट का समय बाकी है। हिट मिलता हुआ खिलाड़ी के पास, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी के पास है बॉल, लंबा हिट, धीरे धीरे लेफ्ट फ्लैंक से बॉल लेके निकलने की कोशिश। यहाँ पर बहुत अच्छा पास है, सुदीप्ता किंडो के पास है बॉल, एमपी के खिलाड़ी सुदीप्ता किंडो ने बॉल को सरका दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। गेंद चली है केसर भावर के पास, केसर भावर ने राइट फ्लैंक में एक बढ़िया पास बढ़ा दिया, नपीतुली पास, बहुत दूर से सर्किल के अंदर पास, वहाँ पर पहुँच गई थी गीताश्री नम्मी। गीताश्री नम्मी है जिन्होंने खेल के दूसरा मिनट में गोल किया था। तो इस तरह से, लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है वो मौका तो नहीं मिला गीताश्री नम्मी को, लेकिन गेंद गई बाहर। 0-4 की स्थिति है, 0 के मुकाबले 4 गोल की बढ़त। लंबा हिट मध्य रेखा के पार, राइट फ्लैंक से बॉल लेके निकालने की कोशिश। इस वक्त हमला पनपता हुआ कि लाल श्याम थारी बॉल लेके निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहाँ पर अच्छा इंटरसेप्ट एमपी के खिलाड़ी बॉल को अक्षर खान के लिए बढ़ा दिया गया, जैसे नंबर 2 ने बढ़ा दिया अक्षर खान अपने साथी खिलाड़ी के लिए, केसर भावर के लिए। केसर भावर के पास है बॉल, 2 खिलाड़ियों के झुरमुट में से निकल पड़ी वहाँ केसर भावर, लेफ्ट फ्लैंक में पास, नपातुला पास, बहुत बढ़िया पास बढ़ा दिया है इस वक्त अपने साथी खिलाड़ी के लिए। सुदीप्ता किंडो के लिए बॉल को बढ़ाई थी, और यहाँ पर पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा है। सुदीप्ता किंडो बॉल लेके बढ़ते गलत तरीके से रोका गया, और यहाँ पर ये दूसरा क्वार्टर में ये पीसी, सेकंड पीसी, दूसरा क्वार्टर में दूसरा पेनाल्टी कॉर्नर मिलता हुआ खेल अंतिम मिनट में चला गया इस वक्त। किंडो इंजेक्शन स्टॉप और बढ़ा दिया गया ड्रैग के लिए, और यहाँ गेंद गई बाहर। तो 4-0 की स्थिति है इस वक्त। खेल लगभग 15 सेकंड का बचा हुआ है। बॉल है इस वक्त यहाँ लालरीन पुई के पास, जो कप्तान है, उन्होंने समांतर पास बढ़ाया अपने साथी खिलाड़ी नीचे, एक नपातुला पास बढ़ाया था लालरीत लुआंगी के लिए, राजरीत लुआंगी ने बॉल को बढ़ा दिया है, बहुत बेहतरीन पास, धीरे धीरे बॉल लेके लाल रेम रुआती स्तर के लिए, स्तर ने बॉल को बढ़ाया, लेफ्ट फ्लैंक में एक अटैक बनता हुआ इस वक्त बॉल को बढ़ा दिया लाल रुआत श्यामी, लाल रुआत श्यामी बॉल लेके निकलने की कोशिश कर रही थी, गेंद गई बाहर। 2 अंपायर, और यहाँ पर दूसरा क्वार्टर का खेल खत्म हुआ।
नमस्कार, स्वागत है आपका। आदाब, जोहार। झारखंड की राजधानी रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जहां एक जबरदस्त कांटे की टक्कर चल रही है मध्य प्रदेश और मिजोरम के बीच। मध्यांतर का समय के बाद तीसरा क्वार्टर इस वक्त शुरू होता हुआ है। उन दर्शकों के लिए जिन्होंने अभी अभी स्मार्टफोन के ऊपर खेल देखना शुरू किया होगा, मैं आपको बता दूं, हॉकी इंडिया यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। लाइव एक्शन यहाँ रांची से रियलम स्पोर्ट्स टोटल स्पोर्ट चैनल के ऊपर आपको दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर खेल इस वक्त तीसरा क्वार्टर का प्रगति पर है। गेम में इस वक्त मध्य से चलता हुआ गेम इस वक्त यहाँ पर लाल रात फुआती जैसी नंबर 5 जो है ये बॉल लेके निकलने की कोशिश कर रही हैं। ठीक हमारे सामने है लाल थाकिमी जैसी नंबर 7 बाएं फ्लैंग में एक डायगोनल पास बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन परिस्थिति जो है इस वक्त पक्ष में नहीं है। यहाँ पर जहाँ तक मिजोरम का सवाल है, बहुत बेहतरीन तरीके से इस वक्त खेल के ऊपर पकड़ बनाए हुए है मिजोरम यहाँ पर, लेकिन एक पेनल्टी कॉर्नर इस वक्त अर्जित कर लिया है। तीसरा क्वार्टर में जाके मिजोरम को इस वक्त पहला पेनल्टी कॉर्नर मिलता हुआ। इंजेक्शन की तैयारी मिजोरम की तरफ से, बिल्कुल इंजेक्टर तैयार। इंजेक्ट, ये स्टॉप, और यहाँ पर गिर पड़ी मिजोरम के यहाँ लाल रिनपुई जो कप्तान थी, और एक बार फिर पेनल्टी कॉर्नर का इशारा। जबकि स्नेहा दावड़े इस वक्त बात कर रही थी अंपायर से, लेकिन अंपायर अपनी यहाँ पर अड़िग हैं डिसीजन के ऊपर। फिलहाल इस वक्त लाल थाकिमी इंजेक्शन को तैयार। इंजेक्ट, स्टॉप, बढ़ा दिया गया ड्रैग के लिए, और यहाँ पर ड्रैग की कोशिश, सर्किल एंट्री, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पर रक्षाबंधी के खिलाड़ी का भी, मिडफील्ड के खिलाड़ी यहाँ पर पिरांसी छेत्री ने बॉल को क्लियर कर दिया है। एक बार फिर यहाँ मिजोरम सर्किल एंट्री की कोशिश कर रही है, लेकिन बेहतरीन क्लियरेंस, गेंद चली बाहर। इस वक्त टच लाइन का स्थिति यहाँ पर 4-0 तीसरा क्वार्टर का खेल इस वक्त चलता हुआ है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आज 4 क्वार्टर फाइनल यहाँ पर खेले जाने हैं। पहला हुआ है उड़ीसा और महाराष्ट्र के बीच हो गया, मिजोरम और मध्य प्रदेश के बीच चल रहा है। 11 बजे फिर होगा यूपी और हरियाणा के बीच, और जबकि 4 बजे मेजबान झारखंड के सामने होगी पंजाब की टीम। यह है स्थिति आज के क्वार्टर फाइनल का। तो स्थिति इस वक्त 4-0 मध्य प्रदेश 4-0 से आगे है। यहाँ पर तीसरा क्वार्टर में इस मिजोरम की टीम जूझ रही है मैदान के अंदर, पूरी कोशिश को झोंकती हुई के बैन लाल पेकी के पास थी गेंद। इस वक्त बॉल को बढ़ा दिया गया। पालदार फकी ने अपने लाल फेंक लुई के लिए, लाल फेंक लुई इस वक्त साथी खिलाड़ी की तलाश कर रही हैं, उनके साथ साथ चल रहे हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के खिलाड़ी। तीसरा क्वार्टर में कुछ बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करती हुई यहाँ पर मिजोरम की टीम लेफ्ट लाइन से बॉल लेके निकलने की कोशिश, वहाँ पर सफलता मिली है। और देखिए बॉल को निकालने की कोशिश कर रही थी एमपी के खिलाड़ी, सर्किल एंट्री करने की कोशिश इस वक्त यहाँ पर मिजोरम के द्वारा। फ्री मिलता हुआ इस वक्त एमपी को, समांतर पास बॉल को बढ़ा दिया है रूली वाल्मीकि के लिए। एमपी के खिलाड़ी रूली वाल्मीकि ने एक सीधा पास, थ्रू पास अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाया, बॉल लेके निकलने की कोशिश। इस वक्त एमपी के खिलाड़ी यहाँ पर केशर भाभर लगी हुई थी, लेकिन सफलता मिली है वहाँ पर मिजोरम के खिलाड़ी को। मिजोरम के लाल श्याम थारी बॉल लेके आगे बढ़ते हुए, गेंदबाज एक बार फिर यहाँ पर बॉल को नियंत्रण करते हुए एमपी के खिलाड़ी, बहुत अच्छा पास, धीरे धीरे बॉल लेके केशर भाभर के पास बॉल बढ़ाया। केशर भाभर इस वक्त भाभी भी नियंत्रण करती हुई, केशर भाभर ने बॉल को बाएं फ्लेम में एक हल्का फ्लिक पास बढ़ा दिया साथी खिलाड़ी के लिए। एक बार फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश के खिलाड़ी के पास बॉल, लेफ्ट फ्लैंग में पास, गेंद गई बाहर टच लाइन का। 7 मिनट का खेल होने को है, लेकिन स्थिति इस वक्त 4-0। अभी भी बॉल है यहाँ पर
एमपी के खिलाड़ी के पास बॉल, थ्रू पास बढ़ाने की कोशिश। तीसरा क्वार्टर में यहाँ पर कुछ अच्छे खेल का प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है इस वक्त मिजोरम की टीम। मिजोरम के खिलाड़ी के पास है बॉल, लालरिनपुई जो कप्तान है बॉल लेकर आगे बढ़ने की चाह रही थी। इंफ्रीमेंट हुआ, फ्रीट मिलता हुआ यहाँ पर मिजोरम को स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर, यहाँ पर एमपी के सर्किल के ऊपर लंबा हिट और ये निकाल दिया। समांतर पास मध्य प्रदेश की टीम अपनी क्षेत्र में खेलती हुई बॉल को बहुत अच्छा पास बढ़ा दिया रूली वाल्मीकि के लिए। रूली वाल्मीकि ने बॉल को बढ़ा दिया केसर भावर के लिए। केसर भावर ने एक थ्रू पास बढ़ाने की कोशिश की, यहाँ पर बॉल लेकर बढ़ने की कोशिश नौशीद नाज कर रही थी, लेकिन नौशीद नाज से गेंद छीन गई, सफलता मिली। यहाँ पर मिजोरम के खिलाड़ी को बॉल को पीछे सरका दिया गया। बहुत अच्छा पास लालरेम रुआती स्तर के लिए। लालरेम रुआती अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाया, बहुत बेहतरीन पास से खेल रही है। एक बार फिर यहाँ पर अटैक करती हुई मध्य प्रदेश की टीम। फ्री हिट मिलता हुआ यहाँ पर मिजोरम को लाल रुआत श्यामी ने हिट किया, साथी खिलाड़ी के राइट फ्लैंक से बॉल लेके मध्य रेखा को क्रॉस करती हुई इस वक्त मिजोरम की टीम के खिलाड़ी गेंद गई बाहर। स्थिति 4-0 7-0 हाँ सॉरी 4-0 4-0। तो मैं बता दूं समय के क्रांतर में पहला गोल गीताश्री नमी दूसरा मिनट में, फिर खेल के 12वां मिनट में नौशीन नाज, फिर 24वां मिनट में नौशीन नाज, खेल के 21वां मिनट में केशर भाभर। तो 4 गोल हुआ है यहाँ पर मध्य प्रदेश की तरफ से और बहुत हद तक दबाव बना के रखा है। लेकिन तीसरे क्वार्टर में कुछ अच्छे खेल का प्रदर्शन, कुछ अच्छे मूव बन रहे हैं यहाँ पर मिजोरम के द्वारा, लेकिन स्थिति वो बन नहीं पा रही है जिसकी जरूरत है। मिजोरम लाल था किमी इस वक्त बॉल लेके आगे बढ़ते हुए बॉल को बढ़ा दिया था लाल रिनपुई के लिए, कप्तान के लिए। कप्तान ने दाएं फ्लैंक में एक हल्का फ्लिप पास बढ़ाया है, राइट फ्लैंक से अटैक करने के लिए इस वक्त जा रही है मिजोरम की टीम। लाल रेवाती स्तर के पास है बॉल, स्तर से गेंद निकली, सफलता मिली है। वहाँ पर बॉल के पीछे भाग रही थी एमपी के खिलाड़ी। स्तर के पास एक बार फिर बॉल, लेकिन अच्छा इंटरसेप्ट यहाँ पर एमपी के खिलाड़ी के द्वारा। अपने क्षेत्र में खेलती हुई एमपी की टीम बाएं फ्लैंक में बॉल को पास बढ़ा दिया गया है। 22 मीटर रेखा को क्रॉस करती हुई यहाँ पर मध्य प्रदेश की खिलाड़ी के पास गेंद 83 छेत्री के पास। छेत्री ने छोड़ दिया वहाँ पर साथी खिलाड़ी के लिए शालिनी सिंह के लिए। शालिनी सिंह मैं बताता हूँ ये मानसौर से आती हैं, बॉल को पीछे सरका दिया, गेंद इसमें चली आई है रूली वाल्मीकि के लिए। रूली वाल्मीकि बॉल लेके निकलने की कोशिश, गलत पास दे बैठी, गेंद चली गई मिजोरम के खिलाड़ी के पास। गेंद एक बार फिर संभालने की कोशिश की गई थी, लेकिन इंफ्रीमेंट हुआ, फ्री हिट मिलता हुआ यहाँ पर मिजोरम को। मिजोरम है 0 और मध्य प्रदेश 4 गोल हो चुका है एमपी की तरफ से। लेकिन 4 गोल होने के बाद यहाँ पर खेल कुछ थम सा गया है और मिजोरम ने जो आक्रमण था एमपी को, उसको कभी बहुत हद तक रोक के रख दिया है इस वक्त। गेंद एक वफी एमपी के खिलाड़ी के पास बॉल, बहुत अच्छा पास यहाँ पर सुदीप्ता किंडो ने बॉल को बढ़ा दिया है। बहुत अच्छा केशर भावर के लिए लेफ्ट फ्लैंक में बॉल लेके निकलने की कोशिश इस वक्त बहुत तेजी के साथ यहाँ पर नौशीन नाज के पास गेंद चलाई, सबसे खतरनाक खिलाड़ी नौशीन नाज ने बॉल को बढ़ाया साथी खिलाड़ी के लिए, सुदीप्ता किंडो के लिए गेंद से छीन गई। यहाँ पर स्थिति 0-4 मध्य प्रदेश की टीम इस वक्त जूझ रही है मैदान के अंदर। रस्सी माललाल साम जेरी के पास बॉल, राइट फ्लैंक से बॉल लेके निकलने की कोशिश इस वक्त। गेंद एक बार फिर लाल रिनपुई कप्तान के पास, इस वक्त मिजोरम के कप्तान बॉल लेके निकलने की कोशिश कर रही थी। बहुत अच्छा इंटरसेप्ट साजिदा बेगम के द्वारा, साजिदा बेगम मग रेखा को क्रॉस कर रही है इस वक्त। बहुत अच्छा पास केसर भावर धीरे धीरे बॉल लेके निकलने की कोशिश, एक समानता पास बढ़ा दिया है। और देखिए कितना बढ़िया इंटरसेप्ट करके बॉल लेकर आगे बढ़ती है इस वक्त। देखिए सर्किल एंट्री करती हुई एमपी की टीम, लंबा हिट, लेकिन गेंद गई इस वक्त यहाँ पर। बहुत अच्छा बचाव गोलकीपर ने किया है, मारिया जे रेड्डी ने बहुत अच्छा बचाव किया था। देखिए यहाँ पर ये टॉम हॉक गेंद गई बाहर। बहुत तेज अटैक बनता हुआ यहाँ पर जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है। लेकिन तीसरा क्वार्टर में अच्छे मूव बने हैं कुछ मिजोरम के द्वारा। देखिए एक लंबा हिट, अच्छा मौका, गेंद गई बाहर।
लॉन्ग कॉर्नर हिटिंग का इशारा खेल का निर्णायक का। 0-4। तीसरा क्वार्टर खेल प्रगति पर है इस वक्त। और यहाँ पर बात कर रही हैं अंपायर, फील्ड अंपायर, वीडियो अंपायर से। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का दूसरा क्वार्टर फाइनल का आप मुकाबला देख रहे हैं। झारखंड की राजधानी मराम गोम के जयपाल से मुंडा स्टेडियम रांची का। आज रांची में मौसम खुला हुआ है, एक सुखद मौसम का एहसास करा रहा है मराम गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। देखिए यहाँ पर किस तरह से लंबी हिट लगाई गई थी और गेंद गई इस वक्त गोल लाइन का बाहर। लंबी वार्ता चल रही है। और यहाँ पर मैं बता दूं पेनाल्टी कॉर्नर अवार्ड कर दिया गया है। एक खतरा बनता हुआ यहाँ पर मिजोरम के ऊपर। इस वक्त इंजेक्शन की तैयारी, इंजेक्ट किया गया, बॉल को रोका गया और ये हिट, ये गोल, 5वां गोल। बेहतरीन ट्रैक फ्लिक यहाँ पर और गेंद गई गोल पोस्ट के अंदर। देखिए क्या स्थिति बनी, देखिए यहाँ पर ये इंजेक्शन रिप्ले में देखिए, ये बॉल को रोका गया है, बहुत दूर से हिट, बेहतरीन डिफ्लेक्शन और गेंद सीधा गोल पोस्ट के अंदर। 5वां गोल ये खेल के तीसरा क्वार्टर का 12वां मिनट में हुआ। यानी कुल अगर हम बात करें तो खेल के 42वां मिनट में ये गोल हुआ है। तो ये खेल के 42वां मिनट में गोल होता हुआ, तो बहुत बेहतरीन गोल, 5वां गोल यहाँ इस वक्त होता हुआ पेनाल्टी कॉर्नर का बेहतरीन परिवर्तन गोल के अंदर। तो अब यहाँ परिस्थिति 5-0 और ये परिस्थिति बतला रही है कि अटैक जो हुआ है बहुत तेज अटैक हुआ है यहाँ पर। अभी तक जो हमला बना है मध्य प्रदेश की तरफ से बहुत चमत्कारिक हमला बना है। खेल के 42वां मिनट में यहाँ पर नौशीन नाज ने गोल किया है, पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करके। तो आप नौशीन नाज के द्वारा आज 3 गोल हो गया है। 12वां मिनट, 24वां मिनट, 42वां मिनट। एक गोल है गीताश्री नम्मी के द्वारा, दूसरा गोल है केशर भावर के द्वारा, 3 गोल नौशीन नाज। इससे पहले नौशीन नाज ने 5 गोल कर चुकी है। तो कुल मिला के नौशीन नाज का 8 गोल हो गया इस टूर्नामेंट में अभी तक। नौशीन नाज देखिए, नौशीन नाज को देखिए जो बॉल लेकर आगे बढ़ रही हैं, कितनी शानदार खिलाड़ी हैं, कितनी जानदार खिलाड़ी हैं और कितनी आक्रामक खिलाड़ी है। बहुत पॉजिटिव हॉकी खेलती है नौशीन नाज। तो इस तरह से अब यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई जहाँ तक सवाल है मिजोरम का इस यहाँ पर मुश्किलें बढ़ रही है। बॉल एक बार फिर यहाँ पर क्षेत्र में बॉल लेके निकलने की कोशिश, सर्किल के ऊपर फील्ड मिलता हुआ इस वक्त बॉल है सरोज मासी के पास, बॉल को बढ़ा दिया गया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, यहाँ पर ले नहीं पाई उनके साथी खिलाड़ी। एक बार फिर यहाँ पर बॉल लेके निकलने की कोशिश,
मिजोरम के खिलाड़ी लंबा पास, गलत पास दे बैठी, गेंद चले इस वक्त यहाँ पर मध्य प्रदेश के खिलाड़ी के पास बॉल, 10 मीटर रेखा के पास एक अच्छा समांतर पास, बॉल लेके अब धीरे धीरे दाएं फ्लैंग में राइट विंगर को बॉल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्थिति जो है बहुत ही बेहतरीन कहा जाए नहीं है इस वक्त यहाँ पर मिजोरम के लिए। मिजोरम की टीम कोशिश कर रही है, लेकिन कोशिश सारी इस वक्त बेकार जाती हुई धूमिल हो रही है मिजोरम का। परिस्थिति को इस वक्त कब्जे में कर रखा है यहाँ पर एमपी की टीम ने। एमपी 5 और मिजोरम 0। बहुत ही कठिन ये अब डगर हो गई है मिजोरम के लिए। कहा जाता है बहुत ही कठिन डगर है ये, पंघट का वही हाल है यहाँ पर अब मिजोरम के लिए। और यहाँ पर तीसरा क्वार्टर का समय खत्म हुआ। तीसरे क्वार्टर का खत्म होने तक यहाँ पर समय 5-0 की स्थिति, मध्य प्रदेश 5 मिजोरम 0। मिलेंगे हम आज के आखिरी क्वार्टर में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड की राजधानी रांची के मरांग घूम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। और हम चलते हैं एक खूबसूरत स्टेडियम जहां पर एक ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है, लेकिन स्थिति को इस वक्त अपने कब्जे में करके रखा है मध्य प्रदेश की टीम ने, और वक्त को अपने कहा जाए गिरफ्त में करके रखा है। वक्त इस वक्त बिल्कुल यहाँ पर उल्टा चल रहा है, मिजोरम के बरक्स चल रहा है। और क्योंकि मिजोरम की टीम 5 गोल से इस वक्त पिछड़ रही है। फिर शुरू होता हुआ इस वक्त चौथा क्वार्टर का यहाँ पर बॉल है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के खिलाड़ी के पास बॉल, धीरे धीरे बॉल लेके निकलने की कोशिश, बहुत ही तेज आक्रमण पनपा है आज। खेल की शुरुआत से यहाँ पर बेहतरीन मौके को तलाशा है। जहाँ तक कहा जाए तो मिजोरम की टीम को बैकफुट पे जाने को मजबूर किया। तो परिस्थिति है 5-0। बहुत ही जबरदस्त आक्रमण चल रहा है। एमपी के खिलाड़ी के पास बॉल को सीधे पास बढ़ा दिया गया। धीरे धीरे बॉल लेके निकलने की कोशिश, देखिए एक बार फिर यहाँ पर आक्रमण पनपता हुआ, बहुत अच्छा पास, सर्किल एंट्री करती हुई एमपी की टीम। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर एमपी की टीम बॉल लेके निकलने की कोशिश कर रही है। अटैक बनता हुआ इस वक्त मध्य प्रदेश का लगातार लगता है कि जैसे मध्य प्रदेश का गोल करने की भूख कम नहीं हुई है अभी तक। स्थिति है इस वक्त 5-0। चौथा क्वार्टर का खेल इस वक्त चल रहा है। इस बीच यहाँ पर जो आक्रमण पनपा, काबिल तारीफ आक्रमण पनपा है।
एमपी के द्वारा। एक बार फिर यहाँ पर आक्रमण की डोर संभाल लिया है मिजोरम के खिलाड़ी ने। मिजोरम के खिलाड़ी के पास है बॉल, धीरे धीरे बॉल लेके निकलने की कोशिश। एमपी के खिलाड़ी के पास बॉल, पीछे सरका दिया, रक्षापंथी के खिलाड़ी के पास बॉल, बहुत सीधा पास, डायनल पास लेफ्ट फ्लैंग में, बहुत ही सटीक पास से खेल रही है एमपी की टीम। जहां तक कहा जाए अपने क्षेत्र में खेलती हुई एमपी की टीम, सीधा पास, एक डायनल पास बढ़ा दिया शालिनी सिंह के लिए। शालिनी की सिंह बॉल, लेकिन गलत पास, गेंद मिजोरम के खिलाड़ी के पास। मिजोरम के खिलाड़ी बॉल लेके निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक मिजोरम के खिलाड़ी बॉल को अपने पास नहीं रख पाते हैं। चौथा क्वार्टर का 3 मिनट का समय लगभग खेल हो चुका है। बहुत अधिक दबाव बना के रखा है एमपी की टीम ने यहाँ पर मिजोरम के ऊपर। लंबा हिट, एमपी के खिलाड़ी के पास बॉल, एमपी के खिलाड़ी ने एक बहुत अच्छा पास बढ़ा दिया है राइट फ्लैंक से। इस बात बीच 3 खिलाड़ियों के झुरमुट में से बॉल को निकालने की कोशिश, और गेंद यहाँ मिजोरम के खिलाड़ी के पास। लंबा हिट यहाँ पर लेफ्ट विंगर के लिए बॉल को बढ़ा दिया गया है, लालरेम रुवाती स्तर के लिए। लालरेम रुवाती स्तर बॉल लेके निकालने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर 3 खिलाड़ियों से घिर गई थी, सफलता मिली है यहाँ पर। प्रियांशी भंवर के पास है बॉल, एमपी के खिलाड़ी बॉल को बढ़ा दिया था शालिनी सिंह के लिए, गेंद गई बाहर। इस वक्त टच लाइन का शालिनी सिंह वहाँ पहुँच गई है। समांतर पास बढ़ा दिया यहाँ पर रक्षाबंधी के खिलाड़ी के पास बॉल, लेफ्ट लाइन में बॉल को बढ़ा दिया गया। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी के पास बॉल, थ्रू पास बढ़ाया गया, बॉल लेके निकलते हुए सरोज मानसी, एक अच्छा पास डॉक्टर लाइन के पास पहुंच गए एमपी के खिलाड़ी। एक बार फिर आक्रमण पर उतरता हुआ सर्किल एंट्री करती हुई एमपी की टीम, बॉल लेके निकल रही थी रूली वाल्मीकि, लेकिन बढ़िया इंटरसेप्ट यहाँ पर मिजोरम के खिलाड़ी का। सर्किल के ऊपर खेल हो रहा है इस वक्त, मिजोरम के सर्किल के ऊपर फ्री हिट लेते हुए अपनी सर्किल के ऊपर से यहाँ पर मिजोरम के खिलाड़ी। इस बीच बॉल बाहर गई एक खिलाड़ी गीताश्री नम्मी, मैं दिखाता हूँ, गीताश्री नम्मी ने गोल किया था अपनी टीम के लिए खेल के दूसरा मिनट में। एक बार फिर यहाँ आक्रमण करती हुई स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर चौथी क्वार्टर में कोशिश कुछ ज़्यादा कर रही है जहाँ तक मिजोरम का सवाल है, लेकिन मिजोरम 0, प्रदेश 5। लंबा हिट, एक बार फिर बॉल बाहर जाती हुई, गेंद एक बार फिर एमपी के खिलाड़ी के पास बॉल, सीधा डायगोनल पास, सुनीता किंडो के पास, मध्य प्रदेश के सुनीता किंडो मध्य रेखा को क्रॉस करते हुए डायगोनल पास बढ़ा दिया है वहाँ पर बहुत अच्छा पर केसर भावर के लिए। केसर भावर ने अच्छा पास बढ़ा दिया है, अच्छा मौका यहाँ पर डिफ्लेक्शन, और ये बच गई, बहुत जीवन दान मिला। केसर भावर ने बॉल को बढ़ाया था, नौशीन नाज ने फिर एक आगे बढ़ के डायगोनल पास बढ़ाया था केसर भावर के लिए, लेकिन केसर भावर तब तक वहाँ पहुँच नहीं पाई स्पॉट के ऊपर। वहाँ पर सिर्फ डिफ्लेक्शन का ज़रूरत था क्योंकि गोलकीपर डिस्पोजिशन हो गए थे, दूसरे तरफ चली आई थी। यहाँ पर ये तो छठा गोल होता, लेकिन एक कहा जाए तो जीवन दान मिला इस वक्त यहाँ पर मिजोरम को। स्थिति यहाँ पर है इस वक्त 0-5, लगभग 6 मिनट का खेल हो चुका है चौथा क्वार्टर का। इस वक्त यहाँ पर मिजोरम के खिलाड़ी के पास बॉल, रेम रुवाती पुई बॉल के निकालने की कोशिश से सर्किल एंट्री की कोशिश कर रही है इस वक्त मिजोरम की टीम। दूसरा क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है इस वक्त झारखंड की राजधानी रांची में, और ये मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में दूसरा क्वार्टर फाइनल होता हुआ। इसके बाद मैं बता दूं तीसरा क्वार्टर फाइनल 11 बजे होगा, जो होगा उत्तर प्रदेश और हरियाणा की टीम। एक बहुत ही बेहतरीन, एक रोमांचक बड़ा हॉकी देखने को मिलेगा आपको। आज सबसे लास्ट जो है, अंतिम जो है, जो 4 बजे खेला जाएगा झारखंड और पंजाब के बीच। मेजबान झारखंड की टीम के सामने होगी पंजाब की टीम। तो लगभग 7 मिनट का खेल हो चुका है तीसरा क्वार्टर फाइनल का चौथा क्वार्टर में इस वक्त खेल चल रहा है।
एक पेनाल्टी कॉर्नर इस वक्त अर्जित करती हुई मिजोरम की टीम। मिजोरम के लिए एक मौका है यहाँ पर, जो मरुभूमि चल रहा है गोल का, सुखाड़ जो चल रही है, जो बिल्कुल नील की स्थिति में है, उसको तोड़ने का, श्रीगणेश करने का एक मौका है यहाँ पर मिजोरम के लिए। ये इंजेक्शन, ये स्टॉप, ये बढ़ा दिया गया है ड्रैग के लिए, लेकिन गलत पास दे बैठी। गेंद चली आई यहाँ पर एमपी के खिलाड़ी के पास, एमपी के खिलाड़ी ने बॉल को बेहतरीन क्लियर कर दिया, बेहतरीन क्लियरेंस। तो स्थिति है यहाँ पर स्थिति 0-5, और यहाँ पर खेल के निर्णायक ने मांगी है मदद वीडियो अंपायर से। अच्छा, यहाँ पर देखिए तैयारी, रिफ्लेक्शन, और देखिए किस तरह से हमले को विफल कर दिया गया था। इंतजार हो रहा है वीडियो अंपायर का, क्या डिसीजन आता है। फाइनल डिसीजन विल कम फ्रॉम वीडियो अंपायर। अंतिम निर्णय वहीं से आएगा। और यहाँ पर पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा, आखिरी में पेनाल्टी कॉर्नर इशारा किया गया है। यहाँ पर मिजोरम के लिए अच्छी खबर, देखते हैं मिजोरम क्या कर पाती है। मिजोरम की तरफ से निकली हुई यहाँ पर लाल था किमी, इंजेक्ट, स्टॉप, और ये ड्रैग, ये गोल, बेहतरीन गोल। मिजोरम को जाके चौथा क्वार्टर में जाके सफलता मिली। वेरी ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन ऑफ पेनाल्टी कॉर्नर इनटू गोल। क्या सटीक यहाँ पर इंजेक्शन, क्या सटीक स्टॉप, और उतना ही बेहतरीन ड्रैग फ्लिकर। ये देखिए आप विधि पले में किस तरह से इंजेक्शन रोका गया, बढ़ा दिया गया। यहाँ पर गेंद गई गोल पोस्ट के अंदर, और यहाँ पर शी माललाल सोम एली ने यह बेहतरीन पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करके अब स्थिति कम से कम जो सूखे की स्थिति थी उसको ख़त्म किया। 5-1 की स्थिति लाया, लेकिन 8 मिनट का समय खेल ख़त्म हो गया है। 7 मिनट, लगभग 7.5 मिनट का समय बचा हुआ है। मिजोरम की टीम आई होश में, लेकिन तब तक
यहाँ पर सब कुछ खेल खत्म हो चुका था। कहा जाता है सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या हुआ। और लेकिन चलिए, जब जागो तभी सवेरा। तो यहाँ पर गेंद गई इस वक्त गोल लाइन के बाहर। मिजोरम फिलहाल एक गोल की बदौलत अब 5-1 की स्थिति हो गई है। लंबा हिट यहाँ पर एक बार फिर मिजोरम के खिलाड़ी बॉल लेके निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस परिस्थिति से यहाँ पर उबरने के लिए मिजोरम को काफ़ी तेज मेहनत की ज़रूरत है। एक बार फिर सर्किल एंट्री करने की कोशिश मिजोरम के द्वारा। बॉल को लेके के बहन लाल पे की बढ़े थी, बॉल बढ़ा दिया साथी खिलाड़ी के लिए, और लेकिन बढ़िया इंटरसेप्ट यहाँ पर। इस बीच एमपी के खिलाड़ी के द्वारा सर्किल के ऊपर खेल हो रहा है। यहाँ पर मिजोरम के एमपी के सर्किल के ऊपर अच्छा मौका है यहाँ पर मिजोरम के लिए। लेकिन कहा जाए तो लाल दिन पुई ने यहाँ पर अपनी टीम के लिए खेल के 53वां मिनट में गोल डाला। तो स्थिति जो है वो अब कहा जाए तो यहाँ पर पहली जैसी नहीं है। और एक मौका को निकाला मिजोरम ने, अब गोल किया अपनी टीम के लिए। कप्तान ने एक कप्तानी पारी खेली। स्थिति है इस वक्त कहा जाए तो 5-1। लेकिन इस वक्त का तकाजा जो है कहा जाता है कि समय बहुत तेज़ी के साथ निकल रहा है। एक मौके को हमेशा तलाश रही है मिजोरम की टीम, लेकिन वो परिस्थिति नहीं बन पाई जिसकी अपेक्षा थी। बहुत देर के बाद मिजोरम की टीम ने यहाँ पर वापसी किया, और ये लाल दिन पुई जो उनके कप्तान हैं, उन्होंने खेल के 53वां मिनट में वापसी एक गोल किया अपनी टीम के लिए। और बहुत हद तक स्थिति को बहुत अच्छा सुधारने में कहा जाए, उतनी हद तक तो नहीं सुधर पाई टीम, लेकिन फिर भी नहीं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यहाँ पर स्थिति को उधर तक अपने पक्ष में किया। 5-1। तो स्थिति लेफ्ट फ्लैश से एक बार फिर अटैक बनता हुआ, यहाँ पर बहुत तेज हमला बनता हुआ। और ये देखिए नौशीन नाज यहाँ पर बहुत ही तेज अटैक, और गिर पड़ी यहाँ पर नौशीन नाज। एकल प्रयास था नौशीन नाज के द्वारा। यहाँ पर देखिए वीडियो अंपायर जो है इसको देख रही हैं स्लो मोशन में, क्या परिस्थिति यहाँ पर बनी थी। देखिए बॉल लेके बढ़ रही थी बॉल बहुत तेजी के साथ रूली वाल्मीकि बढ़ रही थी। और देखिए यहाँ पर एक खिलाड़ी को ड्रिल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उनको रोका गया। और गिर पड़ी, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन किया गया, और यहाँ पर इसी कारण से पेनाल्टी कॉर्नर अवार्ड कर दिया गया है। लेकिन बात कर रही हैं फील्ड अंपायर, बात कर रही हैं यहाँ पर वीडियो अंपायर से।
5-1। पहला गोल गीताश्री नम्मी ने किया था मध्य प्रदेश की तरफ से 2 मिनट में। उसके बाद फिर नौशीन नाज ने 12वां मिनट में, फिर 21वां मिनट में केशर भावर, 24वां मिनट में फिर नौशीन नाज, और फिर 42वां मिनट में फिर नौशीन नाज। 3 गोल आज नौशीन नाज ने किया है एमपी की तरफ से। 1 गोल केशर भावर और 1 गोल की दासरी नम्मी। 5 गोल हुआ है एमपी की तरफ से, जबकि मिजोरम की तरफ से एकमात्र गोल मिजोरम के कप्तान लालदीन पुई ने खेल के 53वां मिनट में किया। स्थिति है 5-1। इस वक्त यहाँ पर पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा है मध्य प्रदेश के पक्ष में, लेकिन देखिए क्या होता है। फील्ड अंपायर इंतजार कर रहे हैं क्या निर्णय आता है वीडियो अंपायर से। वीडियो अंपायर इसके ऊपर कड़ी निरीक्षण कर रही है। फाइनल डिसीजन विल बी कम फ्रॉम वीडियो अंपायर। काफ़ी समय लग रहा है डिसीजन लेने में, और उम्मीद है कि देखिए डिसीजन किसके पक्ष में आता है। 5-1 की स्थिति है। खेल 4 मिनट 27 सेकंड का बचा हुआ है यहाँ पर चौथा क्वार्टर का। सोनाली सिंह एक तरफ से अंपायर, दूसरी तरफ से है शेफाली छोकर। मैं बता दूं सोनाली सिंह आती है उत्तर प्रदेश से, जबकि शेफाली आती है ये हरियाणा से। सोलहवीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का ये दूसरा क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है इस वक्त रांची की मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। सुबह के सत्र का दूसरा क्वार्टर फाइनल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। इसके बाद जो तीसरा क्वार्टर फाइनल 11 बजे होगा, वह होगा हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच, जबकि चौथा क्वार्टर फाइनल झारखंड और पंजाब के बीच शाम को 4 बजे खेला जाएगा। तो यहाँ पर खेल शुरुआत कराने की फिर तैयारी दोनों कप्तान को बुलाया गया है। एक तरफ से लालदीन पुई हैं, दूसरी तरफ से नौशीन नाज हैं। नौशीन नाज ने बॉल को फ्लिक किया था, गेंद चली गई बाहर इस बार टच लाइन का। 4 मिनट 20 सेकेंड और यहाँ से मुश्किलें बढ़ रही है अब मिजोरम के लिए, क्योंकि 4 गोल के अंतर से मिजोरम की टीम पीछे चल रही है। यहाँ पर बॉल है इस वक्त, यहाँ पर मध्य प्रदेश के खिलाड़ी के पास बॉल इस वक्त, यहाँ पर सुदीप्ता किंडो बॉल लेके आगे बढ़ रही थी, गेंद गई बाहर। तो स्थिति यहाँ पर 5-1। लंबा हिट, बॉल बढ़ने की कोशिश, सीधा पास, धीरे धीरे बोले कि बढ़ने की गेंद इसमें चली आई है केशर भावर के पर। केशर भावर खिलाड़ी को, लेकिन गेंद इस बार यहाँ पर मिजोरम के खिलाड़ी ने बहुत बेहतरीन तरीके से कब्जे में करके बॉल को लालदीन पुई जो कप्तान के बॉल को बढ़ा दिया। स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुँचते हुए यहाँ पर एक अच्छा मौके को तलाश कर रही है मिजोरम की टीम, अवसर को तलाश कर रही है गोल करने का, लेकिन इतनी मजबूती के साथ जटी हुई है कि ये रक्षा पंथी की टीम मध्य प्रदेश का कोई मौका नहीं देते हैं। एक बार फिर बाय फ्लैंक से हमला पनपता हुआ मिजोरम का, सीधा पास बढ़ाने की कोशिश की गई थी के लाल श्याम थारी के लिए। गेंद एक बार फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश के खिलाड़ी के पास बॉल, स्टिक से लगती हुई गेंद बाहर चली गई। यहाँ पर मिजोरम के मेसी माल शाम आती क्या
फिट मिलता हुआ शालिनी सिंह के पास है बॉल। इस वक्त एमपी के खिलाड़ी शालिनी सिंह ने छोड़ दिया, साथी खिलाड़ी के लिए स्कूप किया है, ऊंची उड़ती हुई गेंद राइट फ्लैंग में बॉल को लेने की कोशिश। सरोज मासी से गेंद छिन गई। इस वक्त सफलता मिली है लाल भेनपुई के पास है बॉल। मिजोरम के खिलाड़ी लाल भेनपुई बहा दिया वहाँ पर लालरित लुआंगी के लिए राइट फ्लैंग में पास, फिर क्या गलत पास दे बैठे, गेंद चली। इस बात एमपी के खिलाड़ी के पास बॉल लेके बढ़ती हुई इस बात यहाँ पर रूली वाल्मीकि बॉल को बढ़ाने की कोशिश की गई थी साथी खिलाड़ी के लिए। समय के पास पीछे खड़ी है वहाँ पर नौशीन नाज और गेंद से छीनी। यहाँ पर सफलता मिली है मिजोरम के खिलाड़ी को, एक खिलाड़ी को डील करने की कोशिश, गलत पास दे बैठी। धीरे धीरे यहाँ पर मिजोरम के खिलाड़ी सरहद की तरफ एडवांस हो रही है, एमपी की सरहद की तरफ, लेकिन वक्त की तकाजा है, समय इस वक्त बतला रहा है। इसमें बाहर गई प्रियांशी भंवर मैदान से बाहर गई एमपी का, और गेंद इस वक्त चली है एमपी के खिलाड़ी के पास बॉल, सीधा पास यहाँ पर केसर भाबर के लिए बॉल। केसर भाबर एक खिलाड़ी को डील करती हुई यहाँ पर 23 मीटर रेखा के पास इस वक्त पहुँच गई है, बॉल को बढ़ा दिया है। बहुत अच्छा नपतुला पास इस वक्त 23 मीटर रेखा के पास से डॉटर लाइन के पास से पहुँच गई है कि यहाँ समांतर पास स्टैकिंग सर्किल के अंदर बहुत बेहतरीन पास बढ़ाया गया था, लेकिन वहाँ पे हड़बड़ी में गलती कर बैठी और गेंद एक बप्पी चली आई है। इस वक्त मिजोरम के खिलाड़ी के पास है, मिजोरम के खिलाड़ी लालरेम रुआती स्थिर बॉल लेकर निकलने की कोशिश कर रही थी, गलत पास दे बैठी, गेंद चलाई। इस वक्त एमपी के खिलाड़ी के पास बहुत तेज हॉकी चलता हुआ मध्य रेखा के पास खेल होता हुआ इस वक्त एमपी के खिलाड़ी ने बॉल को पीछे सरका दिया। 5-1 की स्थिति, 1 मिनट का समय बचा हुआ है और अब यहाँ से मुश्किलें बढ़ती हुई मिजोरम के लिए खेल हाथ से निकलता हुआ जीत की देवी दरवाजे के ऊपर दस्तक देती हुई इस वक्त मध्य प्रदेश का सेमीफाइनल में अब प्रवेश होने को है, जबकि यहाँ से बाहर निकलती हुई टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। जहाँ तक सवाल है यहाँ पर मिजोरम का सवाल है। हालांकि मिजोरम की टीम बहुत ही देर तक तीसरा क्वार्टर में अच्छे खेल का प्रदर्शन किया, और जबकि गोल चौथा क्वार्टर में 53वां मिनट में उनके कप्तान ने कप्तानी पारी खेलती हुई लालरीन पुई ने गोल किया अपनी टीम के लिए, लेकिन बहुत हद तक अपनी टीम को सफलता नहीं दिला पाई उनके कप्तान, क्योंकि ये खेल संगठन का खेल है, यूनिटी का खेल है, यूनियन का खेल है। सारे खिलाड़ियों के सहयोग से यहाँ पर कोई भी टीम आगे बढ़ती है। बॉल लेके आगे बढ़ने की कोशिश इस वक्त एमपी के खिलाड़ी के पास है बॉल, और यहाँ पर गेंद इस वक्त गई बाहर। स्थिति वहाँ पर 5-1 और यहाँ पर हूटर बजा उदासी इस वक्त छाई हुई है। यहाँ पर कैंप में जो है इस वक्त क्षेत्र में उदासी छाई हुई है। मिजोरम के यहाँ पर कैंप में उदासी छाई हुई है, क्योंकि 5-1 से मध्य प्रदेश की टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया है। मिजोरम को 1 के मुकाबले 5 गोलों से पराजित करके सेमीफाइनल में प्रवेश। यहाँ पर नौशीन नाज का बेहतरीन 3 गोल होता हुआ, 1 गोल किया है केसर भाबर ने, 1 गोल गीताश्री मम्मी ने। तो इस तरह से गीताश्री मम्मी का 1 गोल, केसर भाबर का 1 और 3 अकेले गोल नाज का। जीत लिया है। मैं सभी मालूम आपको बता रहा हूँ।
नमस्कार। झारखंड की राजधानी रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में शमीम आलम अपने साथी कमेंटेटर मयूर बरुआ के साथ आपका स्वागत करता हूं, ये बताते हुए कि 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आज क्वार्टर फाइनल मुकाबले का है। ये दूसरा मुकाबला होने के लिए जा रहा है। यहाँ पर सॉरी, ये तीसरा मुकाबला होने के लिए जा रहा है। सामने टीमें हैं उत्तर प्रदेश और हरियाणा की टीम। पहला मुकाबला में उड़ीसा ने महाराष्ट्र को 8-1 से पराजित किया। दूसरा मुकाबला में एमपी ने मिजोरम को 5-1 से पराजित किया। और तीसरा मुकाबला यहाँ यूपी और हरियाणा के बीच शुरू हो गया है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो ये तीसरा क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है, इसमें हरियाणा की टीम ने पहले मुकाबले में मणिपुर को 4-2 से पराजित किया, लेकिन हरियाणा की टीम मध्य प्रदेश से 5-1 से पराजित हो गई थी। माने 2 मुकाबले में एक हरियाणा की टीम ने जीती है, एक मुकाबले को हारी है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश का पहले मुकाबला छत्तीसगढ़ से हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश ने छत्तीसगढ़ को 5-1 से पराजित किया। लेकिन दूसरा मुकाबला में उत्तर प्रदेश ने मिजोरम को 1-0 से पराजित किया। यानी यूपी की टीम जो है वो दोनों मुकाबले को जीती है। तो इस तरह से यूपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है हरियाणा से। पिछले अगर इतिहास हम करें, मुकाबले की बात करें, लेकिन आज हर दिन नया दिन होता है, रात नई रात होती है। आज क्या ऊँट किस करवट बैठेगा ये कहना मुश्किल, लेकिन दोनों टीमों की इस वक्त करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि जो भी टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में चली जाएगी। और सेमीफाइनल में उड़ीसा की टीम पहुंच गई है, सेमीफाइनल में पहुंच गई है मध्य प्रदेश की टीम। आज का आखिरी मुकाबला होगा झारखंड और पंजाब के बीच। तो इस यहाँ से पता लग जाएगा कि कौन सी टीम सेमीफाइनल में, तीसरी टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली कौन टीम हो रही है। तो चलिए अब चलते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का थोड़ा परिचय आपको बता दूं। वर्षा सिंह है, ये हैं आपका उत्तर प्रदेश के गोलकीपर के रूप में। 2 नंबर में आरिका कुमारी, 3 में आद्या यादव, 4 में राशि सिंह, 5 में वैशाली सेन, 6 में मानसी सागर, 7 में अंशु कुमारी, 8 में ममता कुमारी, 9 में अंकाक्षा मित्रा, 10 में रूबी यादव, 11 में अनुपाल, 12 में नैना, 13 में है दिव्यांशी सिंह और 14 में है दिव्या यादव। ये आज की टीम की कप्तान हैं। आज की कप्तानी की बागडोर इन्हीं के हाथों में है, दिव्या यादव के हाथ में। और 15 में विभा कटियार, 16 में है गुरमीता, 17 में है आराधना यादव। तो ये था उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का परिचय। हॉकी हरियाणा का जहाँ तक सवाल है, गोलकीपर में खेल रहे हैं हिमांशी यादव, और जैसे नंबर 2 में रवनीत गौर, 3 में वंशिका, 4 में खुशी। और यहाँ एक पेनल्टी कॉर्नर अर्जित करती हुई इस वक्त यहाँ पर हरियाणा की टीम पहले ही क्वार्टर के तीसरा मिनट में पेनल्टी कॉर्नर अर्जित कर लिया है। सरोहा, नैन्सी सरोहा इस वक्त इंजेक्शन के लिए पहुंची हुई हैं हरियाणा की तरफ से। एक खतरे का बादल मंडराता हुआ उत्तर प्रदेश पे। इंजेक्शन, स्टॉप, और ये ड्रैग, गोलकीपर का अच्छा बचाव, लेकिन फिर यहाँ पेनल्टी कॉर्नर का इशारा। लगातार दूसरा पेनल्टी कॉर्नर अर्जित करती हुई हरियाणा की टीम। 4 में खुशी, 5 में आशी, 6 में नाबिया, 7 में आरती, 8 में वंशिका, 9 में दिव्या, 10 में है नैन्सी सरोहा, 11 में अंकिता, 12 में हिमांशी, 13 में अनु। ये इंजेक्शन, ये स्टॉप और ये ड्रैग गई बाहर, गेंद बाहर बहुत दूर निकल गई। 13 में अनु, 14 में अंजलि, 15 में ज्योति, 16 में शानिया, 17 में राधिका, 18 में है मानसी। रवनीत कौर आज की कप्तान हैं। अभी देखा जा रहा है कि हर दिन टीमें जो है अपना कप्तान बदल रही है, यानी कप्तानी की बागडोर हर खिलाड़ी को दिया जा रहा है, कोशिश की जा रही है हर दिन कप्तान बदलने की। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ। अकरम महमूद हैं, ये उत्तर प्रदेश के हैं कोच, जबकि अर्शिफ परवीन सिद्दीकी ये है टीम मैनेजर। अंपायर आज की नोमिता खालको, ये झारखंड से आती हैं, जबकि दूसरी अंपायर हैं खुशप्रीत कौर, ये आती हैं पंजाब से।
और हरिंदर कौर हैं, ये है स्कोरिंग जज, टेक्निकल ऑफिसर असीता लकड़ा, ये झारखंड से आती है। प्रतिमा तिर्की, ये हैं टाइमिंग जज, ये उत्तर प्रदेश से आती है। और रिजर्व अंपायर है अंजलि राठौर, ये एमपी से आती हैं। तो इस तरह से यह है खिलाड़ियों का और टीम ऑफिशियल और अंपायर का हम परिचय आपको बता रहे थे, आपसे रूबरू करा रहे थे। तो अब चलते हैं खेल की मैदान की तरफ और देखते हैं आज की क्या खेल की स्थिति बनती है। आज कौन सी टीम यहाँ पे बाजी मारेगी और कौन सी टीम तीसरा सेमीफाइनलिस्ट हो जाएगी। तो इस वक्त मैं बता दूं, ठीक हमारी कमेंट्री बॉक्स की है दाईं तरफ है हरियाणा की टीम, और जबकि बाईं तरफ है इस वक्त उत्तर प्रदेश की टीम। उत्तर प्रदेश की टीम इस वक्त अटैक करने की मूड में है, रणनीति बन रही थी लेकिन विफल कर दिया गया। और हरियाणा के खिलाड़ी इस वक्त बॉल लेकर निकलने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा पास हरियाणा के खिलाड़ी के द्वारा, स्कूप किया, लंबा स्कूप, ऊंची उड़ती हुई गेंद, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में गेंद चली आई है। लेकिन इस वक्त परिस्थिति जो बतला रही है वो बतला रही है 0-0 की परिस्थिति है। और हरियाणा के कोच हैं अयाशी मलिक, मैं बता दूं ये एक बेहतरीन कोच हैं और काफ़ी दिनों से ये हरियाणा में कोचिंग की जिम्मेवारी संभाले हुए हैं। और निश्चित रूप से हरियाणा की अगर हम सब जूनियर टीम की बात करें, जूनियर की बात करें या सीनियर की बात करें, हर खिलाड़ियों को इन्होंने हॉकी की तकनीक को सिखाया है बच्चों को। हर खिलाड़ियों के अंदर एक नई उमंग, एक नई जोश पैदा किया है, और ताकि वो मैदान के अंदर एक रही रणनीति की तहत उतरते हैं और उन्हें सफलता भी मिलती है। देखते हैं इस 16वीं सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हरियाणा की टीम क्या कर पाती है। फिलहाल ये क्वार्टर फाइनल का खेल चलता हुआ, सेमीफाइनल का यहाँ से प्रवेश हो जाएगा जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी। यह है खुशप्रीत कौर एक तरफ से, और दूसरी तरफ से है नमिता खालको। खुशप्रीत कौर मैं बता दूं ये पंजाब से आती है, नमिता खालको मेजबान झारखंड की है। लगभग 7 मिनट का खेल हो चुका है। यहाँ उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी के पास है बॉल को कलेक्ट करने की कोशिश, तेज हिट यहाँ पर सर्किल के अंदर प्रवेश करती हुई यूपी की टीम। अच्छा मौका है यहाँ पर यूपी का प्रवेश, और यहाँ पर पेनल्टी कॉर्नर का इशारा उत्तर प्रदेश के लिए। एक अच्छी खबर यहाँ पर हरियाणा के विरुद्ध पेनल्टी कॉर्नर अर्जित करती हुई खेल के लगभग 8वां मिनट में पहला क्वार्टर का 8वां मिनट में यहाँ पर पीसी मिला है उत्तर प्रदेश को। इंजेक्शन की तैयारी उत्तर प्रदेश की तरफ से, इंजेक्शन, ये स्टॉप और ये ड्राइव के लिए बढ़ाया गया, लेकिन ये खिलाड़ी वहाँ टैकल कर रहा है और ये अच्छा मौके को यहाँ पर विफल किया है हरियाणा की टीम ने। तो स्थिति है 0-0। पहला क्वार्टर का खेल चल रहा है, बराबरी का खेल चल रहा है। परिणाम जो पहले का था उसमें हरियाणा की टीम ने मणिपुर को पराजित किया था 4-2 से, लेकिन हरियाणा की टीम एमपी से हार गई थी 5-1 से। तो हरियाणा की तरफ से गोल हुआ 5, हरियाणा के विरुद्ध में हुआ गोल 7, यानी -2 है इनका गोल डिफरेंस। जहाँ तक यूपी का सवाल है, यूपी ने पहले मुकाबले में छत्तीसगढ़ को 5-1 से पराजित किया। मिजोरम के साथ मुकाबला बहुत
कड़ाके कांटे की टक्कर की हुई 1-0 से वो परिणाम आया। तो यूपी की तरफ से गोल हुआ है 6 और यूपी के विरुद्ध में गोल डाला गया 1, इनका है +5 गोल डिफरेंस, जबकि हरियाणा का गोल डिफरेंस है -2। तो स्थिति गोल डिफरेंस की अगर बात करें तो एक पलड़ा भारी है इस वक्त उत्तर प्रदेश का। लेकिन जैसा मैं बता रहा था, हर दिन नया दिन होता है, रात नई रात होती है। और उस परिस्थिति से यहाँ उबरने के लिए अब बहुत तेज आक्रमण करना पड़ेगा। किसी भी टीम को एक लय के साथ खेलना पड़ेगा, रणनीति के तहत खेलनी पड़ेगी। जिस तरह से हमने देखा आज के पहला क्वार्टर फाइनल में जो खेली थी मध्य प्रदेश की टीम, मिजोरम के विरुद्ध खेली थी। बहुत कलात्मक हॉकी खेल के एक बेहतरीन मुकाबले में दूसरा मुकाबला जो हुआ था क्वार्टर फाइनल को, उसमें 5-1 से पराजित कर दिया था मिजोरम को। बल्कि पहला मुकाबला में 8-1 की स्थिति रही। तो इस तरह से खेल बहुत ही हॉकी का कहा जाएगा तो एक बहुत ही तेज खेल है और अजीबो गरीब की खेल होता है, जिसमें मिनट नहीं सेकंड के अंदर परिणाम बदल जाते हैं। फ्लिट मिलता हुआ है यहाँ पर स्लोगन हेडिंग हरियाणा के लिए। हरियाणा के खिलाड़ी के पास है बॉल, मदरसा के पास बॉल एक खिलाड़ी की निकलने की कोशिश, एक खिलाड़ी को डिप किया, 2 खिलाड़ी को झुरमुके से बॉल को अच्छा सुरक्षित पास निकाल दिया है। बहुत अच्छे गैपिंग, लेकिन बीच में से उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी आए और गेंद छिन गई इस वक्त हरियाणा के खिलाड़ी से। अच्छा पास, लेफ्ट फ्लैंक से अटैक बनता हुआ उत्तर प्रदेश का, बॉल को साथी खिलाड़ी के लिए डायगोनल पास बढ़ा दिया है। 10 मीटर रेखा को क्रॉस करते हुए सर्किल एंट्री की कोशिश कर रही है यहाँ पर हरियाणा की टीम। तो इवेंट फ्रीट मिलता हुआ हरियाणा को। उत्तर प्रदेश के विरुद्ध अपने क्षेत्र से हरियाणा की टीम ने एक सीधा पास, हल्का फ्लिक पास बढ़ा दिया है। मदरेका को क्रॉस करते हुए हरियाणा का अटैक बनता हुआ इस वक्त लेफ्ट फ्लैंक से बॉल लेकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। 23 मीटर रेखा के पास पहुंच गए हैं। एक अच्छा पास, गैप ओपन स्पेस ढूंढा है, बहुत बढ़िया पास है। ये क्रॉस यहाँ पर हिट, लेकिन ये पेनल्टी कॉर्नर का इशारा। तो इस वक्त पहला पेनल्टी, ये दूसरा पेनल्टी कॉर्नर जीत करती हुई हरियाणा की टीम। हरियाणा को एक अवसर मिलता हुआ पेनल्टी कॉर्नर के रूप में। और इस वक्त हरियाणा की तरफ से ज्योति जो है हरियाणा की लंबी कद की खिलाड़ी, एक बहुत ही जाबाज खिलाड़ी है, इंजेक्शन को तैयार। ज्योति ने इंजेक्ट किया, स्टॉप, और ये ड्रैग, ये डिफ्लेक्शन, लेकिन गेंद गई बाहर। लॉन्ग करो हिटिंग का इशारा हरियाणा के लिए। लंबा हिट, तेज गति से बॉल को निकालने की कोशिश, गई बाहर। पहला क्वार्टर का 3 मिनट 35 सेकंड का समय बचा हुआ है। बॉल तेज गति से गेंद निकल गई बाहर। इस बार टच लाइन का स्थिति 0-0। अभी तक कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई है। लंबा हिट टैकल सर्किल के अंदर, लेकिन अच्छा डिफ्लेक्शन वहाँ पर, बेहतरीन टैकलमेंट यूपी के खिलाड़ी के द्वारा। गेंद छीन गई यूपी के खिलाड़ी से। अच्छा पास, सर्किल प्रवेश करने की कोशिश कर रही है हरियाणा की टीम, लेकिन वहाँ पर मुस्तैद थे उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी, बॉल को बाहर कर दिया, क्लियर कर दिया। लेफ्ट विंगर इस वक्त बॉल लेके निकलते हुए बहुत तेजी के साथ 28 मीटर रेखा के बाद पहुँच गए। इस वक्त सर्किल के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रही है टीम, बॉल को पीछे सटा दिया गया। हरियाणा के खिलाड़ी बीच में से आए और यहाँ
पर देखिए पोजीशन बना रही है ये हरियाणा की खिलाड़ी, पीछे सरका दिया साथी खिलाड़ी के लिए। अब डीप डिफेंडर के लिए बॉल, ओपन स्पेस ढूंढ रही है इस वक्त हरियाणा की खिलाड़ी। अच्छा पास, बहुत अच्छा ड्रिबलिंग, बेहतरीन ड्रिबलिंग कर रही है ये, और यहाँ पर टॉम हॉक लगाने की कोशिश कर रही है। बहुत बढ़िया पास, डायगोनल पास, लंबा हिट, क्रॉस पास, लेकिन बढ़िया इंटरसेप्ट यहाँ पर यूपी के खिलाड़ी के द्वारा। अब यूपी का काउंटर अटैक मतलब को क्रॉस करते हुए यूपी के खिलाड़ी बॉल निकाल के बढ़ते हुए बहुत अच्छा पास बढ़ा दिया। अच्छा मौका यहाँ पर यूपी के लिए, एक देखिए सुनहरी मौके को तलाश रही है, लेकिन बहुत देर कर बैठी वहाँ पर, और ये पेनल्टी कॉर्नर का इशारा है उत्तर प्रदेश के लिए। अच्छा मौका, उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पर पहला क्वार्टर का 13वां मिनट में एक पेनल्टी कॉर्नर मिलता हुआ। इंजेक्शन को तैयार यहाँ पर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी, इंजेक्ट किया गया, स्टॉप, और यहाँ पर ड्रैग लगाने की कोशिश, उससे पहले बेहतरीन क्लियरेंस। 1 मिनट 52 सेकंड का समय बचा हुआ है। परिस्थिति इस वक्त पक्ष में किसी भी टीम का नहीं है। हिट, तेज हिट इस वक्त, और लेकिन निकलने की कोशिश यहाँ पर स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंचने की कोशिश, और यहाँ पर इंक्रीमेंट फ्रीट मिलता हुआ यहाँ पर यूपी को। सीधा पास बढ़ा दिया यहाँ पर यूपी के खिलाड़ी ने, नैना ने बढ़ाया था साथी खिलाड़ी के लिए यहाँ पर, और सर्किल को इंटी की कोशिश, इंक्रीमेंट हुआ, फ्रीट मिलता हुआ यूपी को। दिव्या यादव के पास है बॉल, दिव्या यादव बॉल लेकर आगे बढ़ती हुई, एक अच्छा पास, डायगोनल पास, बहुत तेज गति से निकल गई टच लाइन के बाहर। खेल आखिरी मिनट में चला गया है पहला क्वार्टर का। लंबा हिट, धीरे पढ़ने की कोशिश, बहुत तेज पास इस स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर, लेकिन वहाँ पर काउंटर हिट स्ट्राइकिंग सर्किल से। लेकिन इस बार ड्यूटी पे के खिलाड़ी के पास बॉल, यहाँ पर फ्री मिलता हुआ हरियाणा को। हरियाणा 0 उत्तर प्रदेश 0। खेल आखिरी मिनट में चला गया है, मात्र कुछ सेकंड का समय बाकी है पहला क्वार्टर खत्म होने में। हरियाणा का यहाँ पर सर्किल एंट्री इस वक्त होती हुई, और यहाँ पर पेनल्टी कॉर्नर का इशारा खेल के निर्णायक खुशप्रीत कौर का। खतरे का बादल कुछ समय के लिए मंडराता हुआ उत्तर प्रदेश के ऊपर। हरियाणा के लिए अच्छी खबर कि उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर को अर्जित किया है, लेकिन इस पेनल्टी कॉर्नर को कितना हद तक गोल में करने में कामयाब हो पाती है, ये हरियाणा की टीम बात आके यहाँ पे टिक जाती है। और हरियाणा की तरफ से इस वक्त गई है नैन्सी सरोहा हिट करने के लिए। नैन्सी सरोहा क्या वहाँ पर बहुत तेज हिट, बहुत तेज ड्रैग, और लेकिन गेंद आई नहीं स्टिक के ऊपर। और मैं समझता हूँ कि अभी यहाँ पर हूटर बजने की तैयारी हो रही है। ये हूटर बजता हुआ इस बात का संकेत कि कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई है अभी तक, लेकिन एक पेनल्टी कॉर्नर यहाँ पर अर्जित कर लिया है आखिरी सेकंड में हरियाणा की टीम ने। जेट को रोका गया, देखिए यहाँ पर रोका गया, और ये हिट लेने की कोशिश,
और यहाँ पर इस बीच हूटर बजता हुआ इस बात का संकेत कि पहले क्वार्टर का खेल खत्म हुआ। और पहले क्वार्टर समाप्ति तक यहाँ पर हरियाणा नील, उत्तर प्रदेश नील, कोई भी टीम। ये देखिए यहाँ पर दिखलाया जा रहा है, ये दिखलाया जा रहा था रिप्ले में। तो 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का मुकाबला चल रहा है। पहले क्वार्टर का खेल खत्म हुआ, पहले क्वार्टर तक यहाँ ये है आजाद सिंह मल्लिक, आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही अनुभवी कोच हैं ये हरियाणा के, अपने खिलाड़ियों को दिशा निर्देश देते हुए। तो उन्होंने इस बात, और ये देखिए आजाद सिंह मल्लिक अपने खिलाड़ियों को दिशा निर्देश देते हुए किस तरह से गोल किया जाए। स्थिति है, राजेश मल्लिक उनके साथ हैं असिस्टेंट कोच। तो हम चलेंगे दूसरे क्वार्टर में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, शुक्रिया। नमिता खाको की यहाँ पर सिटी के साथ खेल की शुरुआत। दूसरा क्वार्टर का खेल शुरू होता हुआ गोल रहित मुकाबला चल रहा है। हरियाणा नील, उत्तर प्रदेश नील। कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई अभी तक। नमिता खाको, मैं बता दूं, ये मेजबान झारखंड से आती हैं, जबकि दूसरी तरफ से खुशप्रीत कौर जो खेल को संचालित कर रही हैं, ये आती हैं पंजाब से। दोनों के पास काफ़ी लंबा समय का अनुभव है अंपायरिंग करने का। हरियाणा के खिलाड़ी के पास बॉल, लंबा हिट यहाँ पर। दो हरियाणा के खिलाड़ी, एक यूपी के खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं वहाँ पर। सफलता मिली यूपी के खिलाड़ी को फीट लेने का। दैट फ्रेंच है, दाएं फ्रेंच है, बिल्कुल कॉर्नर के पास, यहाँ पास दाएं फ्रेम में इस वक्त ही उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी अग्रसर होते हुए यहाँ पर उनकी बिल्कुल साथ चिपके हुए थे। हरियाणा के खिलाड़ी इंफ्रीमेंट हुआ, फ्रीट मिलता हुआ उत्तर प्रदेश को। क्षेत्र में हरियाणा के डी के ऊपर गेंद गई इस वक्त बाहर। सोलहवीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 जो 1 अप्रैल से शुरू हुआ था, यह हॉकी का कारवां धीरे धीरे बढ़ता गया और अपने अंतिम मंजिल की तरफ अब बिल्कुल करीब मंजिल को नजर आ रही है, क्योंकि क्वार्टर फाइनल का खेल है। इसके बाद 2 दिन का खेल होगा, एक सेमीफाइनल और एक फाइनल। कल का दिन है सेमीफाइनल का, उसके बाद 11 तारीख को विश्राम का दिन है, 12 को फाइनल खेला जाएगा। के खिलाड़ी के पास बॉल, देखिए इस तरह से सर्किट एंट्री की कोशिश कर रही है टीम, सीधा डायरेक्ट पास। अब राइट खिले खिलाड़ी को, खिलाड़ी आ गए हैं, धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश, पीछे सरका दिया गया। शून्य शून्य की स्थिति, परिस्थितियों से जूझ रही है यहाँ पर दोनों टीमें। एक तरफ से उत्तर प्रदेश की टीम, दूसरी तरफ से हरियाणा की टीम।
हिट मिलता हुआ यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लिए। और यहाँ पर स्टार्टिंग सर्किल के ऊपर खेल चलता हुआ हरियाणा के सर्किल के ऊपर उत्तर प्रदेश की टीम इस वक्त सर्किल एंट्री करती हुई। देखिए बॉल को बढ़ा दिया गया अपने साथी खिलाड़ी के लिए और यहाँ पर बॉल को घुमा करके पोजीशन बनाते हुए हिट किया। गेंद एक बार फिर यूपी के खिलाड़ी के पास, लेकिन अब वहाँ से बहुत बेहतरीन इंटरसेप्ट हरियाणा के खिलाड़ी के द्वारा फिर हिट मिलता हुआ। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर कुल भारतवर्ष के अलग अलग कोने से राज्य अलग अलग केंद्र प्रशासित राज्य से चलकर कुछ 28 टीमें यहाँ पे पहुँची हुई थी। मात्र एक त्रिपुरा की टीम जो है, त्रिपुरा ओलंपिक एसोसिएशन की टीम यहाँ पे नहीं पहुँच पाई। और सारे टीमों को 3 डिवीजन में बांटा गया था, डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन सी। डिवीजन ए में 12 टीमें थी, डिवीजन बी में जो है 10 टीम और डिवीजन सी में 6 टीम। तो कुल 28 टीमें यहाँ पे आई और मुकाबले इस वक्त डिवीजन सी, डिवीजन बी के साथ खेले जा चुके हैं। कल डिवीजन बी का आखिरी मुकाबला था और इससे पहले कुछ मुकाबले खेले गए डिवीजन ए का भी, और आज से बिल्कुल डिवीजन ए का मुकाबला चल रहा है क्वार्टर फाइनल का। क्वार्टर फाइनल में जो टीमें पहुंची वो उड़ीसा थी, महाराष्ट्र, एमपी, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और झारखंड और पंजाब। पहले मुकाबले में उड़ीसा ने महाराष्ट्र को 8-1 से पराजित किया, दूसरे में एमपी ने मिजोरम को 5-1 से, तीसरे मुकाबले में यूपी और हरियाणा का मुकाबला चल रहा है और आज का आखिरी मुकाबला मेजबान झारखंड और पंजाब के बीच होगा। चौथा क्वार्टर का यहाँ पर खेल चल रहा है, यहाँ पर गोल रहित मुकाबला चल रहा है। और देखिए यहाँ पर हरियाणा की टीम की कोशिश, पेनल्टी कॉर्नर का इशारा। हरियाणा को अवसर मिल रहा है बार बार, लेकिन अवसर का फायदा नहीं उठा पा रही है हरियाणा की टीम। पेनल्टी कॉर्नर को गोल में डालने में बहुत कमजोर नजर आ रही है। हम दूसरी तरफ से देखे थे जो मध्य प्रदेश की टीम थी, वो पेनल्टी कॉर्नर को बहुत सटीक गोल में तब्दील कर रही थी मध्य प्रदेश की टीम। ऐसा अभ्यास करना पड़ेगा दूसरी टीमों को भी अगर मुकाबले को जीतना है। दिया इस वक्त पहुंची हुई हैं इंजेक्शन के लिए, इंजेक्ट किया, स्टॉप और ये ड्रैग गई गेंद बाहर। वाइट लेफ्ट फ्लैंक से अटैक बनता हुआ, बहुत तेज हमला बनता हुआ यूपी का, सर्किल एंट्री करती हुई टीम। अच्छा मौका है, देखिए यहाँ पर पेनल्टी कॉर्नर का इशारा है, यूपी के लिए अब मौका मिलता हुआ यहाँ पर। इंजेक्शन की तैयारी, नैना कुमारी पहुंची हुई इस वक्त इंजेक्शन के लिए यूपी की तरफ से। उत्तर प्रदेश का एक मौका इस वक्त इंतजार कर रहा है। इस वक्त इंजेक्शन, स्टॉप और ये ड्रैग के लिए जगह, फिर यहाँ पर इशारा है पेनल्टी कॉर्नर का। एक बार फिर इंजेक्शन के लिए आगे कदमों को बढ़ाती हुई उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी इस वक्त नैना कुमारी, नैना का इंजेक्ट, स्टॉप और ये ड्रैग। अच्छा मौका, अभी भी गेंद गोलपोस्ट के अंदर घूम रही थी और मौका मिला था यहाँ यूपी को, लेकिन डिफेक्ट नहीं हो पाया। 6 मिनट का खेल हो चुका है।
नमिता खाल को बात कर रही है, खेल के अंपायर, फील्ड अंपायर है, वीडियो अंपायर से। इंजेक्शन इस वक्त नैना का, स्टॉप, ये ड्रैग, गोलकीपर का बढ़िया बचाव, अभी भी मौका है यहाँ पर, डिफरेंट करना था, बार बार मौका मिल रहा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लिए, बहुत बेहतरीन मौका था यहाँ पर बढ़त बनाने का, लेकिन गोलकीपर जो है हरियाणा का, उन्हें बहुत बढ़िया बचाव किया। देखिए किस तरह से यहाँ पर घटना घटी, देखिए गोलकीपर का बचाव, देखिए हिमांशी यादव का, हरियाणा का गोलकीपर कितना बेहतरीन बचाव किया है। हिमांशी यादव ने एक उत्तर प्रदेश के खतरनाक मूव को बेकार किया। Penalty stop. What a danger decision. What a danger decision has been given by नमिता खाल को। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है इस वक्त। अरिका कुमारी इस वक्त पहुंची हुई है पेनल्टी स्टॉप लेने के लिए। दूसरा क्वार्टर का 6ठा मिनट में बहुत ही एक खतरनाक डिसीजन अरिका कुमारी के द्वारा। यहाँ पर पेनल्टी स्टॉप, ये गई गेंद गोल पोस्ट को, गोलकीपर को यहाँ पर मात देती हुई हिमांशी यादव को। यहाँ पर ये देखिए, ये गोल से लगी ये गेंद, और खेल के 6ठा मिनट में ये गोल हुआ। अरिका कुमारी ने अपनी टीम के लिए पहला गोल किया पेनल्टी स्टॉप से। चिंताएं बढ़ रही इस वक्त यहाँ पर हरियाणा के लिए। अगर देखा जाए तो हरियाणा वो परंपरागत वो खेल नहीं खेल रही है जैसे खेलती है हरियाणा की टीम। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी के पास बॉल, यहाँ पर एक बार फिर हरियाणा का टीम का वो त्यौहार नहीं नजर आ रहा है जो पहले हरियाणा की टीम की देखा जाता था। सामंजस्य तालमेल वैसा नहीं बन पा रहा है। अच्छा, यहाँ पर यह सर्किल एंट्री करने की कोशिश, गेंद गई बाहर। दूसरा क्वार्टर का तो यहाँ पर बहुत बेहतरीन दूसरा क्वार्टर का 6ठा मिनट में यहाँ पर गोल हुआ, हिट। तो ये परिस्थिति इस वक्त जो है बहुत ही, अब यहाँ पर है पेनल्टी कॉर्नर अर्जित करती हुई हरियाणा की टीम। खेल के 8वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर यहाँ पर अर्जित किया है हरियाणा की टीम ने। खेल के 6ठा मिनट में पेनल्टी स्टॉप को गोल में डाला अरिका कुमारी ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लिए। इंजेक्शन की तैयारी इस वक्त हरियाणा की तरफ से। एक मौका है हरियाणा के लिए यहाँ पर बराबरी पर आने का। इंजेक्ट स्टॉप, और यहाँ पर जगह बनाते हुए अच्छा मौका, अभी भी मौका है, और ये पेनल्टी स्टॉप। व्हाट ए डेंजर डिसीजन नाउ हैज बीन गिवन अगेंस्ट उत्तर प्रदेश। और इस वक्त इधर है यहाँ पर खुशप्रीत कौर, उस तरफ थी नमिता खाल को, और इस तरफ है खुशप्रीत कौर। खुशप्रीत कौर ने इस पेनल्टी स्टॉप को पूरी कंफर्मेशन के लिए मांगी है मदद यहाँ पर वीडियो अंपायर से।
खेल का 8वां मिनट और खेल के 6वां मिनट में पेनल्टी स्टॉक, खेल के 8वां मिनट में पेनल्टी स्टॉक इस वक्त हरियाणा के लिए देखा जा रहा है। देखिए ये यहाँ पर, और इस तरह से इस डिसीजन के लिए पेनल्टी स्टॉप दिया गया है, इस एक्शन के लिए, जो भी एक्शन आपने देखा था उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के द्वारा। बार बार देखा जा रहा है यहाँ पर। देखिए ये जो अभी 3 खिलाड़ी आपस में भिड़ गए, आपस में स्टिक को ऊपर उठाया, उसके लिए पेनाल्टी स्टॉप का इशारा किया था। खुशप्रीत कौर को आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर। ये अंपायर हैं पंजाब की। स्लो मोशन में बार बार देखा जाता है। कन्फर्म जब हो जाते हैं वीडियो अंपायर तब वो एक कंक्रीट डिसीजन लेते हैं। और यहाँ पेनाल्टी कॉर्नर को पेनाल्टी स्टॉप को पेनाल्टी कॉर्नर में बदला गया डिसीजन को। लेकिन फिर भी कुछ उम्मीदें हैं इस वक्त यहाँ पर हरियाणा के लिए। पेनाल्टी स्टॉप के डिसीजन को कन्वर्ट किया गया पेनाल्टी कॉर्नर में। इंजेक्ट स्टॉप, ये ट्रैक गोलकीपर का बढ़िया बचाव, अच्छा गोलकीपर वर्षा सिंह ने अच्छा बचाव किया, जो उत्तर प्रदेश के गोलकीपर हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह से बचाव किया। फिर मिलता हुआ यहाँ पर हरियाणा की टीम कुछ समय से यहाँ पर खेल के ऊपर हावी है, आधे मैदान के अंदर खिला रही है इस वक्त उत्तर प्रदेश को। कॉर्नर का इशारा, एक बार फिर पेनाल्टी कॉर्नर। बार बार अवसर मिल रहा है, वक्त की रफ्तार बता रही है कि अवसर इस वक्त मिल रहा है हरियाणा को। इंजेक्शन की तैयारी, इंजेक्ट किया गया, स्टॉप,
और ये ड्रैग, लेकिन ड्रैग आई नहीं स्टिक पर। और यहाँ पर नमिता खालको का इरादा लगता ठीक नहीं है। अनुशासन रख के, अंदर रख के तो आपको खेलना पड़ेगा, क्योंकि अनुशासन ही। और ये पीला कार्ड, हार्ड डिसीजन, ग्रीन कार्ड। पीला, फिर बाद में ग्रीन। एक खिलाड़ी मैदान से बाहर गई। जा रही हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश का दिव्या यादव। मैं बता दूं, दिव्या यादव आज की कप्तान भी हैं। फिट मिलते हुआ हरियाणा को। इस वक्त 16 गज की हिटिंग हरियाणा के लिए। अच्छा पास, बेहतरीन पास, अच्छा इंटरसेप्ट यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी के द्वारा। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी बहुत फर्स्ट अटैक में माहिर दिख रहे हैं। अब बहुत तेज गति से इस वक्त देखिए कितना बेहतरीन बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी। सर्किल एंट्री करती हुई उत्तर प्रदेश की टीम। बिल्कुल एक साथ 3-4 खिलाड़ी चल रहे थे बिजली की गति की भांति। यूपी का बहुत अच्छा दृश्य बन रहा था देखने को। गेंद इस वक्त चली है यहाँ पर दिया के पास। दिया मैं बता दूँ ये सोनीपत से आती हैं हरियाणा की, लेकिन गेंद से छिटक गई। अच्छा बेहतरीन क्लियर इस वक्त उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी को राइट फ्लैंक से अटैक बनता हो उत्तर प्रदेश को। 27 मीटर रेखा को कर सकते हैं, डॉटेड लाइन के पास पहुंच गई। इस वक्त को बढ़ाया है लेकिन गेंद गई बाहर। लगभग अब 5 मिनट 30 सेकेंड, यानी लगभग 5 मिनट का, 5.5 मिनट का समय बाकी है दूसरा क्वार्टर का। डायगोनल पास, मध्यरेखा को क्रॉस करते हुए डायगोनल पास बढ़ाने की कोशिश। वहाँ गेंद चलाई उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी के पास। एक खिलाड़ी को डील करते हुए यहाँ पर काउंटर अटैक होता हुआ इस वक्त उत्तर प्रदेश का 28 मीटर रेखा के पास पहुँच गई है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की टीम के खिलाड़ी इस वक्त एक खिलाड़ी को ड्रिबल करने की कोशिश कर रही है और बढ़ा दिया सामने खड़े यूपी के खिलाड़ी को। डायगोनल पास, अच्छा नियंत्रण है खेल के ऊपर उत्तर प्रदेश का, लेकिन गेंद अब चली आई यहाँ पर हरियाणा के खिलाड़ी के पास। और बहुत तेजी के साथ सर्किल एंट्री करती हुई हरियाणा की टीम अच्छा मौके को तलाश रही है हरियाणा। उत्तर प्रदेश 0 हरियाणा, उत्तर प्रदेश 1 हरियाणा 0। उत्तर प्रदेश पेनाल्टी और स्टॉक्स को रिका कुमारी ने खेल के 6 मिनट में डाल करके अपनी टीम को बढ़त दिला दिया था। तो पहला क्वार्टर में बढ़त मिला दिया था। इस बीच यहाँ पर रिका कुमारी के पास बॉल, पास गेंद को बढ़ाया था वैशाली सेना ने। वैशाली सेन फ्रीट मिलता हुआ ये नमिता खाल को इस वक्त हरियाणा के खिलाड़ी को समझाते हुए। ड्रिबलिंग करने की कोशिश यूपी के खिलाड़ी के द्वारा। गेंद से छीनी हरियाणा के खिलाड़ी पर, लेकिन हरियाणा के खिलाड़ी से भी गेंद छिन गई। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी बॉल को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंफ्रीमेंट हुआ, फ्रीट मिलता हुआ लगातार फ्रीट। आराधना यादव जो आज की टीम के एक मजबूत खिलाड़ी, आराधना यादव लंबा हिट लगाया है। डायगोनल पास, इंफ्रीमेंट हुआ, फ्रीट मिलता हुआ हरियाणा को। हरियाणा 0 उत्तर प्रदेश 1। हरियाणा को अभी अपना खाता खोलना है, लेकिन अभी तक हरियाणा संघर्ष रत नजर आ रही है। सर्किल एंट्री करती हुई हरियाणा की टीम दाएं छोर से इस वक्त फिर मिलते हुए हरियाणा को सर्किल के ऊपर हमले को तेज कर दिया है। टॉमहॉक, गेंद गई बाहर। दूसरा क्वार्टर का समय बहुत तेजी के साथ निकल रहा है। इस वक्त हरियाणा की चिंताएं बढ़ती हुई, सूरज पश्चिम की ओर लगातार बढ़ता हुआ ठीक माथे के ऊपर से सूरज गुजर रहा है।
बारी उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी के पास बॉल, अपने क्षेत्र में बॉल को सरका दिया है। यूपी के खिलाड़ी ने, 2 खिलाड़ी वहाँ पहुँच चुके, हरियाणा का गेंद गई बाहर टच लाइन का। फ्री मिलता हुआ उत्तर प्रदेश को 3 मिनट का समय बचा हुआ दूसरा क्वार्टर का, यानी 3 मिनट के बाद आधे समय का खेल खत्म हो जाएगा। यूपी की टीम 1 गोल की लीड पर है। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी के पास बॉल, सफलता मिली हरियाणा के खिलाड़ी को, एक खिलाड़ी को डील करते हुए राइट फ्लैंक से। और यहाँ तो परिस्थिति बहुत ही इस वक्त क्षेत्र में नहीं है हरियाणा के पक्ष में। हालांकि उत्तर प्रदेश की टीम 1 गोल जो 6 मिनट में किया गया था रिका कुमारी के द्वारा पेनाल्टी स्टॉप को गोल में डाल कर, वही अभी स्थिति कायम है। वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। फर्दर कोई हरियाणा की टीम बराबरी का गोल नहीं कर पाई है, ना तो उत्तर प्रदेश की टीम ने अपने गोल की संख्या को बढ़ाया है। लीड मिलता हुआ उत्तर प्रदेश को, लेफ्ट साइड से खेल चला गया है लगभग आखिरी मिनट में अब जाता हुआ। दूसरा क्वार्टर का इस वक्त समय बहुत तेजी के साथ निकल रहा है। यूपी के खिलाड़ी के पास बॉल, समांतर पास, अपने क्षेत्र में खेलती हुई यूपी की टीम एक खिलाड़ी को डील करने की कोशिश पीछे सरका दिया गया है। वहाँ पर दिव्या यादव के लिए, दिव्या यादव राइट फ्लैंक में बॉल को बढ़ाने की कोशिश, फ्री हिट मिलता हुआ यूपी को। इसको क्या ऊंची उड़ती हुई गेंद। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आज के दिन का तीसरा क्वार्टर फाइनल चल रहा है। उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी यूट्यूब हॉकी इंडिया के चैनल के ऊपर खेल देखना शुरू किया होगा, मैं बता दूं सुबह के सत्र में जो पहला मुकाबला हुआ उसमें उड़ीसा ने महाराष्ट्र को पराजित किया। दूसरे मुकाबले में एमपी ने मिजोरम को 5-1 से पराजित किया। और तीसरा मुकाबला इस वक्त चल रहा है यूपी और हरियाणा के बीच। ताज़ा तरीन स्थिति है कि यहाँ पर यूपी की टीम 1 गोल से खेल के 6 मिनट में जो गाला डाला गया रिका कुमारी के द्वारा, उस गोल के बदौलत 1 गोल की बढ़त बनाई हुई है। जबकि हरियाणा की टीम जूझ रही है मैदान के अंदर। लंबा हिट, सीधा क्रॉस पास, खिलाड़ी मौजूद वहाँ नहीं था, लेकिन अभी भी कोशिश कर रही यूपी की टीम। नैना कुमारी के पास है बॉल, नैना कुमारी डायगनल पास बढ़ाने की कोशिश, लेकिन गलत पास दे बैठी। हरियाणा के खिलाड़ी ने बॉल को क्लियर कर दिया है। हरियाणा का आवश्यक तालमेल सामंजस्य नहीं बन रहा है, जैसे कि हरियाणा परंपरागत हॉकी खेलती है। स्थिति है 1-0 और यहाँ पर दूसरा क्वार्टर का खेल खत्म हुआ। दूसरे क्वार्टर के खेल खत्म होने तक उत्तर प्रदेश की टीम हरियाणा से 0 के मुकाबले 1 गोल से आगे चल रही है। हम चलेंगे तीसरे क्वार्टर में और तीसरे क्वार्टर में मैं ले चलता हूँ
And welcome to quarter number three of the third quarter final of the 16th edition of the Hockey India Sub Junior Women National Championship 2026, live all the way from the Marangom ke Jaipal Singh Hockey Stadium here in the capital city of Ranchi in the state of Jharkhand. This is Mayur Barwa with the mic to bring you all the action with my commentary in English. You're watching all the section live and exclusive on the YouTube channel of Hockey India. As now Haryana gets regrouped for the penalty corner, which is within 27 seconds. Thank you so much, Mr. Shami Malam. We have been very nice from his previous match and then the first two quarters of this quarter number three. And congratulations also to Madhya Pradesh for getting into the semi-finals, winning 5-1 versus Mizoram. All ready for the penalty corner. Injection has been done. The drag flick straight into the paddings of the goalkeeper. Second try. And the penalty corner stays. This is wonderful. It probably would be a little eventful here. Let's see what happens. But this is one ascendancy of what happens here. Another attempt at a drag flick. Another, it's almost like copy paste from the goalkeeper. Very much ahead towards the left. And he circles towards the center. Haryana still trying to snatch the ball and get into the goal. Whoa, what drama. What exciting passage of play. And I won't say passage. This is almost getting with one way in there. They'll have to wear those caps again for the third time. The girls from Uttar Pradesh, they're leading by one goal. But into the third goal, it's just one, but it can be very quickly been 1-1. Injection done. It was the right corner between the striking circle and 23-meter line. They're still struggling to get in. And face marks just goes out. And this penalty corner might just go in cold storage. It has not been done. Uttar Pradesh gets back with the ball. The defense getting very tight in there. The scoreline remains Uttar Pradesh 1, Haryana 0. Might be just an important quarter trying to zigzag through the channels of the defense was Haryana. Uttar Pradesh on the other end. What a lovely camera angle that one was. They keep on running, sprinting, and a lone sprinter. Striking circle has been inserted, trying to reverse herself. Two of the defenses right behind her. And it's a cry for a foul from Uttar Pradesh as she thinks that it has might hit the base or actually the footing. Green card. She says it's a green card. Look at me for a second. Oh my goodness, this is what tension is. This is what you're playing for the semi-final. This is what you love, isn't it? If you talk about Uttar Pradesh, they won 5-1 versus Chhattisgarh, 1-0 versus Mizoram. On the flip side, Haryana versus Manipur, they won 4-2. Just number 2 from Uttar Pradesh is going out for that 2-minute suspension. But they lost. Haryana lost 1-5 versus Madhya Pradesh. But still, beside that setback, they're into here quarterfinals because of the points which they have hopefully garnered. Haryana versus Manipur. At one point, Manipur were leading by 2 goals, and after that, they inserted 4 consecutive goals to win that contest. So now let's see what Haryana does. Does the girls' nice colors of the jersey, pink and white and white. Oh, something is coming from the back. Something is coming from the back. She's saying you have done an intentional push. I do see it. And she says another green card. Oh my goodness. Within 1 minute. First jersey number 2 and now jersey number 7. This is not nice. They have lost 2 players within a minute and a half. And now they're playing with 9 players, which means 8 on the field because there is a goalkeeper also. Oh, really not good. Really not good. This is not what you pick on try for. Umpires in question today. Umpire Nomita Halko, assisted along with his Miss Khusprit Kaur.
Reserve umpire is Miss Anjali Rathore. The timing judge is Miss Pratima Tirki, and the scoring judge is Miss Harinder Kaur, and technical officer is Miss Asrita Lakra. This is something to shiver about. Let's see what happens. Still at 1-0 for Uttar Pradesh on the match. Let's see what the live pictures just says for them. They'll be very dreadful not to get it. Might be just one of those days when they'll be saying, okay, we do see an entry, but we really don't know where to go from. Uttar Pradesh hockey, Arika Kumari got that goal. So Arika has a total of now 3 goals in this tournament, including 2 field goals and a penalty corner. That penalty corner came versus Chhattisgarh, which they won 5 goals to 1. Then they won 1 goals to 0 versus Mizoram, in which Vaishali Sen was the only goal scorer. So versus Chhattisgarh, Harika Kumari field goal, Mamta Kumari a field goal, Rasi Singh a field goal. Again, Rasi Singh consecutive goals for her in the field goal category. Then Harika Kumari finished with a penalty corner for 5-1 victory versus Haryana, 4-2 versus Manipur. Radhika, Dia, Vishakha, and Antika all scored a goal each in terms of a field goal, and which they lost 1-5 versus Madhya Pradesh. It was Jyoti with a field goal. It was for Haryana. And the Jyoti, the name, so Radhika, Dia, it's all good names. Himanshi Yadav is the goalkeeper. Ravneet Kaur is the captain for Haryana. And for Uttar Pradesh, the captain is Divya Yadav. And goalkeeper is Varsa Singh. Less than 10 minutes now from here on. But a good first match that you've seen. Maharashtra lost versus Odisha. A huge goal scoreline. 8-1. Odisha won. Zanvi Rawat, who had so much of riding beside her, but just one solitary goal for Maharashtra came from the stick of Anvi Rawat. Besides that, Priyanka Minj, then you had Princess Priya Ekka, all getting good numbers with the goal sticks. Sweetie Kumari, Kiran Ekka also with the goals. So half of those 8 goals did come from the blade of Priyanka Minj. Just number 12 has been very nice, outstanding with her gameplay. Just trying to get the precedence correct. You all know how they can get it. Trying to get birds from left corner, but not much movement ahead, I believe, and that's the reason why they didn't get that perfect angle to go for him, go for her in the 23-meter circle. Trying to get to the dotted line. The defense work is rightly tight from Haryana. Good work. Sikolites falls down. No whistle coming in from the umpire there. Let's see umpire Nomita Halko, and umpire is Khushpreet Kaur. Assistant umpire reserve is Anjali Rathore. It has to be very quickly gone and to snatch that initial first pointer for Haryana to open the account. Good 360-degree angle, crosses towards the right inside the striking circle was Uttar Pradesh. Lovely venue, isn't it? As Hockey India celebrates 100 years of its glorious existence, we'd also like to thank the Jharkhand government, also the Sports Authority of India, for their tremendous support in laying a great building platform for all the girls. As you see Haryana sprinting along the ball with a long way to travel. Somewhere they had to lose it because the defense again from Uttar Pradesh is really nice in there.
slams the shot, and striking circle entry was done. Or trying to hammer that shot between the striking circle and 23-meter line was Haryana. And I stay in Haryana, but I had to be neutral. And this is called the Delhi NCR belt. The Delhi, Haryana, Uttar Pradesh, so very much the northern Indian counterparts. And this is really and one awesomeness that they really needs to be craving for one after the other. This is so the brand of hockey they are playing at the moment is something which I'm sure there'll be so much loving and interesting for sure. Some question being asked: can they be much more helpful? There is a question being asked from Uttar Pradesh. Some pressure the man's official. It's very hot and humid. You don't want to lose your energy. Oh, penalty corner has been signaled. This is Uttar Pradesh. That's the captain Divya Yadav along with Divyansi Singh trying to ask that why the penalty corner has been given. It's a timeout decision also. So I'm sure, yes, the rectangular shape and the T. So video referral, they're very, very confident, the girls from Uttar Pradesh, that it shouldn't be a penalty corner. Let's see what happens. One for Uttar Pradesh, zero for Haryana in the third quarter. Just trying to check where the defense has been broken here, where the stick work formulation actually came in. There you can see very, very closely it did come, strikingly close inside the 23 dotted line. And there was the stick work. This is where the whistle was being blown by the umpire. We have to see whether there was a reverse flap of the stick. Not that one. She lost the stick, the grip, as she was trying to bisect. I think that's jersey number 11. That's Anupal. As she was trying to sneak into the corner, into the legs of her opposition. Haryana comes, gets into the 23-meter circle. Here there was a whistle being broken. Some have to probably nicely just check it up, or what exactly is the breach for the infringement. Let's see what happens with 6.5 minutes remaining in the third quarter. So good review. I believe this is a very, very good review. Uh, let's just check it out for what it is. Can it see? Did they say of the third quarter? That's how quickly they have been able to boil it through. Very nicely poised, I believe. This is a sub junior category of that you're watching at the moment. Let's see what happens.
It has to be so clean with the stick work. Does it even qualify? That they'll be saying. Let's see what happens. Can they address it properly? Addressing it goes, and aggressively, I believe it is now going at the moment. Are they trying to just say that, okay, that here is an opportunity for us, as the penalty corner again has been signaled? This is not that much of a news that they'll be taking through Haryana. This is trying very quickly and hard to make and mold much of the factor. Not a good side, not a good side at all. And the signs will only be something for the blue army, blue and the yellow. It becomes very tough because the conditions are not easy also. Right at the peak of the summer, the natural factors also plays a huge role already for injection. It's a slow injection actually, or reverse, with the stick to give it towards a right, and a slam did come on, and the penalty corner stays. This is nice. Uttar Pradesh says we have an opportunity again. Let us not take it away. Still with Adya Yadav for the injection, all important injection. If I have to say, there was a nice shot onto the left, which will be effectively right of your picture in the previous penalty corner. But this was not to be. This was not nicely injected, I believe, as the road was much more longer for Uttar Pradesh to make a comeback to get that goal. 5 minutes remaining. Oh, super from the goalkeeper of Haryana. And she's Himanshi Yadav right at the top, numero uno, doing fantastically well to stop the goal. So 4.5 minutes remaining from here on. As I see, there's bicycles galore right behind. You can see on the left-hand side, behind the fence, two of the girls bicycling and shedding their calories, enjoying this good game of hockey. 4.5 minutes, this match to finish, for this third quarter to finish. This is really nice. Let's see if we can just move on. Oh, it's a green card. So many green cards we have seen today. And I remember in the first quarter final, 3 green cards, and then a yellow card came in from umpire Miss Neetu Kumari. This is a wonderful judgment of a nice quarter. Let's not forget, this has been really, really good of how those bisection angle did come in. With 3.5 minutes, will be really good if you can feel in for the purpose. Can it be right? It is almost into the zone. Uttar Pradesh doing eventually very well. Less than 200 seconds remaining. Look at her, almost like PT Usha. I love that name coming up. And it says, and why not? Why not? Is there such a huge household name, isn't it? PT Usha. We all know. So 3 minutes from here on. How can it be coming on to terms now? It's into the legs for Haryana. I believe that was Divya who had ball in her stick. She has a goal in the tournament, but Uttar Pradesh doing well. Lovely cross pass diagonally, getting into it. The zone, the control was not there, but before that, the whistle did come in. No, not a penalty corner. I felt there was, because the players went right behind along with the goalkeeper.
138 minutes now remaining. Trying to hit the balls fine. It will be out of bounds already. So that's ball, anyways, getting into the goal post doesn't mean anything. Still one goal. Don't be surprised if it remains one goal till the end, because both the teams are struggling to implode and bombard huge goals. And to be honest, Haryana has done well to keep Uttar Pradesh at bay, and they know this one goal, at least for a goal, they have to struggle very hard. Uttar Pradesh is no pushover when it comes to playing hockey or playing cricket. We've been good team, largest state in India, and they know how to put it into perspective when it comes to sports, the culture. They've been really right through. It's hot, it's humid right here in Jharkhand. So they'll be trying to get in the shadows as quickly as possible. And after this, it'll be 2 minutes break, and then we'll be having the last quarter. You're watching the quarterfinal number three of the 16th edition of Hockey India Sub Junior Women National Championship. The British might just get a second one. 360-degree twisting, trying to get the blade, but Haryana have now quickly gained the momentum. Can it keep on moving for them? It's not there to be. Less than 40 seconds for them to go by and quickly make a movement. Can be a little slow going as much as they're trying to relinquish the opportunity that they have got here. Getting to be a stubborn effort from them. Stops well. Haryana trying to squeeze the ball from the dotted line to be oh, she smiles. He says, "I'll not waste a second in taking out the green card because I know what I've seen. I don't want to take it even higher. I know this is what you have done. You've intentionally got your stick in an area which has not to be." She's asking the opposition, don't tell me she's another green card coming for Uttar Pradesh also. She's not showing it up. She's not showing it up. She's relaxing. She's keeping her calm, her composure. Oh, there's already been a green card being shown. She says, "You go out." That's number 4. That's Rasi Singh. So 2 of the players now goes out. Rasi Singh of number 5. I couldn't figure out who's the other one from Haryana. Is it Nancy Saroha? But 2 green cards been given by the umpire, and both of them, both from each team, has gone out. Oh my goodness, what quarterfinals we are seeing at the moment as the match begins with just 12 seconds. 9 now. Ball wobbles up. One bounce onto the striking circle. Becomes a job for the umpire. Becomes hugely tough. The hooter has been blown. Quarter number 3 comes to an end, but not before we had some good hockeytainment. 1 for Uttar Pradesh, 0 for Haryana. We'll be back for the 4th quarter very soon. Don't go far away. All those action will be coming live and exclusive on the YouTube channel of Hockey India. So stay tuned.
The last quarter starts. Let's see what happens. It'll be really good. Less than 15 minutes now remaining. This is the last quarter start. Watching quarter final number three between Uttar Pradesh and Haryana. With Uttar Pradesh one goal, they've been trying to conquer and cement the name in the semi-final. Already we have two names. We have Orissa, we have Madhya Pradesh. Let's see whether it will be Uttar Pradesh or Haryana. And after this, it will be the home team Jharkhand will be playing versus Punjab. So it is going to be a good game for sure. And I'll be calling the shots with the mic. And it'll be really, really seriously wonderful. This is me, Mayur Barwa, getting the shots here in the 16th edition of the Hockey India Sub Junior Women National Championship 2026. Live from this gorgeous venue, the blue penalty corner. As I was trying to mention, the blue and the lovely Astrota venue of the Marangom Ke Jaipal Singh Hockey Stadium here in the capital city of Ranchi in the state of Jharkhand. We have a chance for Haryana to make it 1-1. Get it going, girls. You need it. If you have to upset the rhythm of Uttar Pradesh. She's ready. She looks like Rani Lakshmi Bai. You know who she is, that the Princess Warrior. Injection has been done. Penna! The drag flicker. Ball is scooped up, looming with some hope and belief, carrying from Haryana on to Jharkhand. Not to be. It didn't go the way that was thinking it to be. Again, the seeds have been seeded to see whether they can understand of how this match is now moving out. For Uttar Pradesh, they don't have to do anything obnoxious, anything which can send the kittens among the pigeons for their team. Just relax, play the game up, try and use the opportunity to build on the attack and keep the goal scoring probably going from 1 to 2, if not 3, and then keep on building the pressure. Nice curve angle from Mamta Kumari. The ball has been snatched away. If I can see, it's actually because it's written in yellow on the back of white, and the sun is shining so bright, shining so much on the background of the jersey. That's why I couldn't figure out the uh, the jersey number. So apologies for that. I'm not getting any younger. So some fresh eyes probably will be able to look into it. But I'm sure some naked fresh eyes also sometimes will be missing it because they keep on moving from one end to the other at a good space. So I don't makes it easy. Thank you so much. You Barwa, that's my name. We love to get an H at the end also. so so there, let's see what. Thank you so much. Is This is all good, and also let's thank the all the people who are working tirelessly behind the scenes, including production team and the cameraman. Never easy. So it is something which happens in very fruitful manner. Let's keep on moving. Less than 12 minutes now remaining. It's going in the end. Number 4 in this important quarter. This is the main universal quarter that we are looking forward to, moving it very largely. And sometimes you can have that confusion leading up of, do we need to just spoke and make it fine? It cannot be more fine. So you have to play all your cards very tightly because you are playing for the the semi-final slot, and it's going to be very tough. As I mentioned before, Orissa is there, Madhya Pradesh is there. Don't know who will be between Jharkhand versus Punjab. Any of the teams, in fact, the home team Jharkhand is playing well, the superlative hockey, and in front of the home crowd, and I'm sure it will be it'll be something to shiver for them.
might be feeling it's the usuals, but it also tells you the story of how the backdrop, the background, the academy is also just have so much of hope on them, and that's why it just harps on how the players are playing at the moment. So not surprised. This is how it is going for them, doing so well, and eventually it just prompts them to play some good strong hockey. Coming well now as the ball just crisscrosses in a nice light angle from the left to the right flank for Haryana, losing the ball possession. That's the bench on the left hand side. You can see of Haryana in pink and white. As I mentioned, you love the color pink. And one of those rolling substitutions is ready to take on the field. Less than 10 minutes remaining. You'll have to count down 600 seconds to go from here on. Girls from Haryana need to be on your toes now. Directorate of Youth Affairs and Sports Jharkhand. Also, a massive thank you to them for this great playing field for all the girls. The men's hockey champ competition is also going on at Ranchi Hockey Stadium in Rajgir in Bihar. We're calling the shots with the commentary is dear friends Vikas Kumar in Hindi and Arbaz Khan in English. Did see that shot coming in from Haryana. Could have been 1-1. Lovely to see the gobbling up of the stature. Coming with the ball. Stinking pass between the defenses. There's 3 behind, 2 in front. Can they get it? Oh, penalty. Corner being given to Haryana. Oh, don't lose the chance. They have got this within 4 minutes. So can they go it? Now the discussion. It's called the group discussion. We have so much of group discussions in corporate lives. And then you get through your final interview. This is like an interview because you are trailing by 1 goal, just 1 goal until the fourth quarter. This is how heavily it has been played. Let's now see who takes it. Seems like jersey number 19. It's 9, I believe. Dia has a goal to her name. There's the second goal that they scored versus Manipur. Oh, euphoric! Haryana 1-1. The girls from Haryana in the pink and white are savoring the moment. And what they needed in quarter number 4, they have displayed it with so much good character and aplomb. Look at that spot. The usher came towards the battery, and look at the joy. Look at the elation. As he said, yes, I got it. Jersey number 17, and it's Radhika. They've got it. Radhika got the very first field goal, that win of 4-2 versus Manipur, and now she gets a penalty corner. 1 for Uttar Pradesh, 1 for Haryana. The game is alive again. It's on fire right here at quarter number 3. Come on, if you're somewhere, if you're taking a lunch break, because this is 12:30, you're somewhere near Ranchi, come to this venue. Watch these girls battle it out as they're trying to mushroom into a nice breed of hockey right here at the Marangom ke Jaipal Singh AstroTurf venue here in Ranchi in Jharkhand. After this, Jharkhand is going to play versus Punjab, but that's at 4 p.m. So we have a breathing space of around 3 hours. What a game. What a game. Now Uttar Pradesh will be absolute pressure. There will be good, tremendous pressure on them. Because and more pressure on the goalkeeper, I believe. If it doesn't come, if a result doesn't come, then I'm definitely going for a penalty shootout. Carving, twisting, at a lovely angle, hammers a shot from outside 23-meter circles. He's trying to see that sneaking pass. Lovely way from Divyansi Singh from Uttar Pradesh to send that ball scampering towards the goal post. Well received. The diagonal cross angle from the center mid player. Nicely done from Haryana. And look at that coach. His coach is Akram Mahmood of Uttar Pradesh. The coach for Hockey Haryana is Mr. Azad Singh Malik. What does he say? That's at the other, as the camera just pinned out, that was Akram Mahmood, all standing up, all knows it's Akram Mahmood now versus Azad Singh Malik. A versus A. I don't want it to go anything corner. Let's see what happens. Is Uttar Pradesh trying for a goal? Is very much into the corner, and they get the goal! Second goal for Uttar Pradesh girls. What a comeback!
1-1 now becomes 2-1. Absolutely remarkable. Gets it from the corner, from the right flank, well received inside the striking circle. Little bit of an imbalance. Gets the circle entry again with a proper hockey stick. The goalkeeper so much ahead, and she was scampering. And then there was an attacker right behind who, with the reverse angle, gets into the goal post. Oh, absolutely wonderful hockey from Uttar Pradesh. Now they lead by 1 goal. Now, every girls in the dugout are standing up. Oh my goodness, they cannot believe what they're saying. And the excitement has now gone towards the home of Uttar Pradesh. Still 11 minutes remaining. They can still make it to Haryana. They need to do it if you're going into a penalty shootout. Haryana going along with the ball inside the striking circle almost from the left flank. Kenzie tries. She's trying to make a 3D angle of her stick, but it cannot be. It goes out of bounds. Remains a 2 for Uttar Pradesh, 1 for Haryana. This is tremendous quarterfinal number 3 that you're witnessing at the moment. It was one-sided when Madhya Pradesh were playing versus Mizoram, ending up at 5-1 for Madhya Pradesh to get into the semi-finals. And another one-sided contest, 8-1, when Odisha defeated Maharashtra. But this game now is getting alive. Afternoon time. Uh, and I'm sure there's going to be a good contest when Jharkhand will be playing versus Punjab. What a game. Seriously, what a game. Loving it. Loving it at Combox. Me, myself, also doing this online commentary. My throat is gone. Seriously, my throat is gone. I've been doing so much multiple sports. I've been doing cricket. I've been doing hockey. I've been doing football. Oh, this is magnificent stuff from the girls. And from the boys also today, there was a football match. It was 4-3 in the end. Oh, what a breeder of a sports. And sports echoes everywhere. This is what your spirit and the soul does. Oh, what a good 3D skill from Haryana to get the ball moving. But Uttar Pradesh says, okay, enough of your skills. Let us get with the ball. Let us make it moving. Less than 10 minutes remaining from the hard line. Arrow across. Haryana does absolutely beautifully to get the ball and trickles it past a real good reverse angle. Back past the center line. Gets into the stick of Uttar Pradesh. And she makes a long pavement for the ball to move into the highway and goes out of bounds. 9 minutes and 20 seconds remaining from here on. Uttar Pradesh leads by 1. It's a really good game formation for both the girls who are now playing some exhilarating hockey, to be honest. No breathing space at all. This is not league match. This is all about you're grabbing a spot in the semi-final, picking it up there and hammering the shot all in straight line and hits the face mask. It's as you say, I'm irritated. This is my aggressive move. And they therefore can do it, Uttar Pradesh, because they're leading by 1 goal. They don't want Haryana to just build on the attack. Haryana was trying to get into it. It was a good snatch which have come in. Nicely rigged up. What does the corner says? Does it get it? It's into the corner. No. Umpire says, let's get on going. Let's keep on playing. It's not to be. 8 minutes remaining. Haryana trying to make a zigzag fashion entry. Call for a foul play. And it has been given to Haryana. It's the ball again. Past the 23-meter circle. There's a stick entry from Uttar Pradesh. She hammers the stroke from 23-meter circle and ball goes out of bounds. It's a great counter-attack, I would say, from Haryana onto Uttar Pradesh. Both northern India territories, both share borders, and the borders are getting bombarded with some good hockey sticks and good goal scoring. Let's see who hammers. Is it the blue and the silver lining of yellow will be getting in the semi-finals, or is the pink and the white? And their jersey numbers are written in yellow. Again, almost like a replica of the previous shots that we saw 40 seconds earlier on. Getting into the striking circle, ball moves out, keeps out of the danger zone. Is Uttar Pradesh with the ball, carrying forward. And it seems like Kansha Mitra with the ball, who is moving so far ahead with the ball. She stumbles, but she is ready to strike early.
She reverse passes to her colleague right behind from the center. The attacker is there. Seems like it's Arika Kumari. She already has 2 goals, so her name in the championship. Can she get it? Can she hammer the shot? She falls down and loses control of the ball. Absolutely well done from Haryana. Good defense work as they seal the ball right in time. Or else this was seriously going straight into the goalpost, I believe. This is brilliant. Oh, Haryana can sense this coming. We all probably can sense this coming. 6.5 minutes remaining. Oh, if it becomes 2-2, oh, I don't know. They'll be dancing. But then we'll be getting into the penalty shootout. I don't want to be a commentator's curse. Someone will be killing me for saying that. It becomes tough for the production people also, also, and hugely becomes tough for the goalkeepers because then they have to protect their territories 5 times in case the result doesn't come out from the opposition. It's a foul. Haryana trying to make a lovely entry. Good defense work, 3 behind, 2 ahead to remotely take the ball across. That's Divya Yadav, the captain, who's stealing the ball and moving ahead. Oh, she gives it to Rasi Singh. Rasi Singh all alone trying to pound it, but the whistle has been blown right for a foul. Probably one of the players just fell down. She's doing okay. All of them just stood up. She was all alone going. Was Rasi Singh, and then she saw it behind. That's all okay. That's what she says. Is it a penalty corner? Or she wants to go upstairs? They wants to go upstairs. She made a tea. So a video referral, which has been probably asked from Haryana, I believe. Have to take at the replay. So 5 minutes remaining. A video referral has been given. 2 for Uttar Pradesh, 1 for Haryana. I have to see what the tackle was. I'm sure that's what it is been given. The tackle clock. The clock needs to be stopped. The timer. I think that needs to be stopped. Anyways, we'll be having those moments again back and forth of what exactly is the call for. This is where the angle just started to moving. This has been what called for. Let's see. It's 2 for Uttar Pradesh, 1 for Haryana.
I think all is fairly done here. As you can see, what the umpire has said, that we need to carry on with the game. It's a good review here. All trying to have some commotion. It's like a fish market which is building on in Uttar Pradesh and Haryana at the moment. It get it going. It was the movement scoring here. Oh yes, it's all done. Is it all done here? Yes, all handshakes. As now it is Uttar Pradesh with a lead of 1 goal. They march into the semi-finals. The Blue Army marches along. But commiserations for Haryana. I'm sure they can go head held high. They have definitely done very well with that goal. But yes, if it was 1-1, if not for that goal, they would have been happy to take the penalty shootout. But that's how this match is finished. We'll be having at 4 o'clock Jharkhand versus Punjab. So we'll be expecting you to join us after 3 hours and 15 minutes. This is Mayur Barra. I'll be taking a sign off until we meet again at 4 p.m. And all the section will be coming live and exclusive to you on Hockey India. Cheers.
A very good afternoon to one and all who is joining us for the live broadcast of the fourth quarter final of the 16th edition of the Hockey India South Junior Women National Championship, live from a great venue from the Marangom ke Jaipal Singh Astroturf Hockey Stadium, located at the heart of Ranchi in the state of Jharkhand. And I'm Mayur Barwa, your host commentator, joining you live right from here in Haryana online. But I'll be making all the paces in English for you to enjoy the action, as I can see on through my eyes, and all this action coming to you live and exclusive on the YouTube channel of Hockey India. And it's going to be the home girls, Jharkhand, who are up against Punjab. On your screen is umpire Oindrila Pramanik, and she will be assisted by Preetmai Huntia. Two umpires, match officials who have really been up in the ranks, and they are really, really experienced and now getting the test of the quarterfinals. See, it's nice, sunny as you get into the this vastness of the evening. Now exactly at 4 o'clock as this match starts, the fourth quarterfinal. We already have the the semi-finalists have got into the area, and what lovely proceedings to have their names, isn't it? First, of course, Orissa is there, Madhya Pradesh is there, and then again, it has been such a wonderful journey for all those girls as Uttar Pradesh defeated Haryana 2-1 also to get their name. That was a very close encounter because the previous ones were not close enough. They were very much one-sided. Orissa won 8-1, then 8-1 versus Maharashtra. Madhya Pradesh defeated Mizoram 5-1, and then it was a match of 2-1 where Uttar Pradesh has won versus Haryana. They're not any the counterparts. But now let's see whether the home girls can defeat Punjab and then seal the name in the semi-finals. This is just of quarter number one, and what's the road for till the quarterfinals for Jharkhand has been. They won a good victory 6-0 versus Maharashtra, and then a great victory 9-0 versus Bihar, which means they haven't conceded a single goal in this league at the moment, which 15 goals they have scored. But for Punjab, 2-0. They won versus Andhra Pradesh but lost 0-2 versus Orissa. For Punjab, the first goal versus Andhra Pradesh was scored by Rashmin Kaur, a penalty corner, and then Germanpreet Kaur, a field goal. Of course, no goals were scored versus Orissa. But for Jharkhand, if you have to check, 3 goals each for Preeti Bilung and Sandeepa Kumari, 2 goals each for Susmita Guria and Pushpa Manji. As you see, right at the corner, the girls from Jharkhand playing in the yellow, trying to attack from the left flank. Can think inside the striking circle. Can they breach through the reds of Punjab? They couldn't get it. Punjab really hold the lines so properly and takes that danger away. It gets right into the center. It's back for Punjab to get it rotating from the left to the right of your picture. This is Punjab who is attacking from the right to the other corner. So this is now right to the left attacking is Jharkhand, the girls in absolute yellow. Sure, there have been so many who have now tuned in to see if the girls, now the home girls, can be right there. See, it's a storm of yellow blowing across. Maybe if the numbers have to say something about, they are pretty strong. The 6-0 versus Maharashtra. Sushmita Guria opened up the field goal. Then Sandeepa Kumari a field goal. Shruti Kumari field goal. Then the Pushpa Manji got a field goal. Sanya Tirki got a field goal. And then Preeti Bilung got a field goal. In the 9-0 victory versus Bihar, Sandeepa Kumari a field goal. Mariam Bhangra got a field goal. Richa Mins got a field goal. Preeti Milung with a field goal. Sandeepa Kumari with a field goal. Sushmita Guria with a penalty corner. And then Preeti Milung also with a penalty corner.
Pushpa Manchi with a field goal, and then Sevani Kerketa with a field goal. So this is really nice. It's not there that against the wall, but that the last loss 0-2 versus Orissa will seriously be hurting them. It's all about the point system, and that's when they have been true to this. To the quarterfinals as Jharkhand was really attacking very strong. The ball will go out of bounds. Scoreline still remains at a quarter number one at 0 for Jharkhand, 0 for Punjab. Trying to build it with a nice cross pass diagonal at the corner from Punjab. But Jharkhand definitely now getting the ball position very nicely from the right flank. Trying to make an attempt of a tomahawk. Umpire Andrila Pramanik lifting her hand to say that, yep, you need to playing. It's There was a foul cry coming in from Punjab. It was not to be, but good into seeing the ascendancy of the scoring it up. The scoring judge is Miss Pinky Naik. The technical officer is Miss Sweta. And the reserve umpire is Miss Sibia S. Umpires I've already mentioned, Miss Andrila Pramanik and Miss Pritmai Huntia. Talking about hockey Punjab, the goalkeeper is Magpreet Kaur, the captain is Lovepreet Kaur, and the coach is Miss Pusparani. For hockey Jharkhand, the goalkeeper is Preeti Barla, the captain is Ankita Lakra, and the coach is Mr. Vikas Pant. This is the home team. This is playing at the moment. And the coach, in fact, is Khili Kumari for Jharkhand and not Preeti Barla. Beg your pardon. If I have to talk about the team for hockey Jharkhand, the home girls, Khili Kumari is the goalkeeper. Nipunta Kulla. Then Shruti Kumari already there in the scoring column. Shruti Kumari with a goal to her name. Sweetie Aind, Alma Bhengra, Sevani Kerketa, and you have Mariam Bhangra. Preeti Bilung already has goals to her name. 3 goals for Preeti Bilung. And then Sugan Sangha, Captain Ankita Lakra, Neelam Topno, and Richa Minch. So Richa Minch has a field goal to her name. So really great names to have just pull it up, I'm sure. Really nice from the center, sticking it very hard. Not far from the center. As 8 minutes now remaining in the contest in the very first quarter. Jharkhand trying to rotate with the ball, trickling very well. The defense not getting too stronger for Punjab. They're doing really well. They have been able to carve and curtail the initial danger, which was poised by Jharkhand as a half-hearted slam came almost right from the center. Right flank getting busy. Only the deflection. There was just one defense right behind her, along with the goalkeeper. And it has just gone out of the journey. So nice to put all those chapters right in place. They pass the center line again. Jharkhand trying to move and moving it strongly. So close to Indrela Pramanik. Gets into the hands, the ball wobbles up, gets into the stick of Punjab. We'll have to bring that corridor. So look at the defenses, 2 ahead, 2 behind for Punjab. Also a very good sporting state is Punjab. The shadows looms large here. It is Maram Gomke, Jaipal Singh AstroTurf Hockey Stadium in Ranchi in Jharkhand. We'll have some spectators and also some good chief guests, I'm sure, will be coming up. But come the final, which is scheduled on Sunday, on the 12th of April, this is going to be something I'm sure always would be loved for sure. And if you can love it, it will always be something which will be definitely be outpouring as many emotions as possible. It's sunny, but I don't feel it's too bright enough. But if you keep on playing and playing, it's always easier said than done. It's all about how you feel it going ahead.
Less than 6 minutes remaining, no goals having scored at the moment, either by Jharkhand or Punjab. As we did see at the corner, that bench, the diagonal cross on that bench you see, it is of Jharkhand. I'm sure they'll be very much upbeat with those both wins where they haven't conceded a single goal. 6-0 versus Maharashtra, 9-0 versus Bihar. So it is something to be very much proud of. There are figures that they can boast of. Maharashtra did play the semi-final, quarter-final, beg your pardon. They lost early morning today versus a very strong outfit of Odisha, 8-1. I'm not surprised that the kind of game that Orissa brings to the table always makes it very hard, and essentially shown. That's how they have showed up the numbers also. Trying to curve it, pound as split my Huntia. The umpire says it's out of bounds, so the signaling of that wide. Some great good lines of attack has also been tried by both these teams, and this is something which can be very much coming to them more and more again. And that's how you get very strong, I believe. That's why Jharkhand in their home territory, they might just be having that extra edge, not only because of the team, not only because of the 6-0 and 9-0 victory versus Maharashtra and Bihar, but also on of how their tech has been going at the moment in their own home territory. They are just bringing it very strong, trying to slam the shot from the right winger at the edge of the D, the striking circle that you say. No penalty corner at the moment. The match before that, I commented that in the third and the fourth quarter, I did see more than a handful of penalty corners. And that was to bring down a very good match. 2-1 as Uttar Pradesh at one point were leading by 1-0. Suddenly, the girls from Haryana in pink and white made one goal to open the scoreline. And thankfully, Uttar Pradesh said, okay, we got that goal. And those were the dying minutes. So it just saved the Blues for the goalkeepers for a penalty shootout. Also like to thank the Jharkhand government and also the Sports Authority of India for their great support in bringing this able platform for all the girls. Oh, Andrila Pramanik. So, there's a good match official from Orissa. She signals the penalty corner, and it was a late signal of penalty corner. So the 3 minutes and 6 seconds now remaining. It is advantage Jharkhand. Maybe looking to open the scoreline. Let's see who's there to open it. Oh, no, looks like number 5. Looks like it's Shruti Kumari who's there to bring up the scoreline. Shruti Kumari all in readiness to inject. She injects it, stops. Graflik is there. Took too much more time to get it. But from the left winger, there was a chance, but nothing that she could do inside the striking circle. Now there's a question being asked. It's from Jharkhand. That's a captain Ankita Lakra. Ankita Lakra feels that the penalty corner should be staying. And that's why umpire Oindrila Pramanik has signaled upstairs to see if the reviews can be brought in action and who's correct, whether it's Oindrila or it's the captain Ankita Lakra from Punjab. There's something off the foot that probably they are asking. Let's see what happens. 0-0 for both Jharkhand and Punjab.
It's finally a good decision. It's a lovely review, I believe, from Ankita Lakra, especially from Jharkhand. So Punjab is looking at Oindrila Pramani. Goes, okay. So, anyways, penalty corner doesn't stay, and they keep their review. Such a good one. They don't want to lose the early advantage, and that's why they said, okay, might be a little hot, but we would request you to just stand there and try and see what it comes from upstairs. So he did the much umpire, this Villa Pramanik, and it did come very healthy for Jharkhand. 2 minutes and 15 seconds remaining for the end of the quarter number one. Be good for especially for Punjab in the girls, because they would look to build on a much better show in terms of attack. Haven't seen too much very heavy showering of attacks at the moment, to be honest. This might just be icing. I won't say exactly an icing on the cake, but something. And I'm sure teams like Jharkhand might have read very easily, as Jharkhand was trying to sneak the ball and scoop it. It probably touched on the leg of number 10 of Harshita from Hockey Punjab, and that's what Indrila Pramanik said as she was looking very cleanly on the commotions. He said it's a penalty corner being awarded to Jharkhand. That's a kind of mistake. Sometimes your sticks and body, which is in so close when you're trying to make a retrieval of the ball from the house of your opposition. Those are the costly mistake happens. Those sometimes it gets very intentional. That they, if not we be trying from there, let's put it on your legs, and then also you get it against your name. But 0-0 injection has been done. Slaps it and twice reboundation, not once but twice, and twice lucky. And first it came from the blade of Mariam Bhangra, then it went to Shruti Kumari, but again couldn't do it. And I believe the penalty corner is still staying. Oh yes, so it's Shruti Kumari will be taking is bringing on the injection. The ushers. I think the ushers just came out a little more early, and that's what the penalty corner still says, and still to be Shruti Kumari will be getting it. She already has a field goal to her name, Shruti Kumari, in that match versus Maharashtra, which they won 6-0. Trying to slam it from the edge of the striking circle. Nice way to get that ball up. Also got it nicely placed. Might be saying the time is so much of an essence, isn't it? At such a nice pace of a game, nice passage, I would say. Jharkhand trying to kneel ahead with the ball, trying to roll it by. Trying to see how close it can be, as just less than 50 seconds are now remaining here for the blow the hooter to signal the end of quarter number one. So I'm trying to look at very closely as the ball is just a meter away from the edge of that hard line. Trying to see it very closely of what the match needs to be. Pramanik looking at the ball very closely. This is a very experienced umpire, given the chores, given the duty of this important fourth quarter final, which is the home team. So the pressure will be equal not only on the players but also on the umpires. There's 5 seconds remaining for the blow of the hooter. Keeping it a little tight at the moment. And yes, they'll be stopped on the tracks as they're trying to head towards the ball. The hooter has been sounded. Quarter number one has come to an end, and both of the teams have not opened their account. But in what we have seen, the girls in yellow, Jharkhand, have played probably a much more good possession of hockey rather than the girls in red. We'll be building up to quarter number two. Don't go far away. This is Mayur Barwa. We'll be back
for quarter number two very soon, live and exclusive, all the action on the YouTube channel of Hockey India. Getting back on a track for quarter number two. Oh, Punjab immediately pressing it hard against Jharkhand. And Jharkhand knows what they are trying to do and immediately backtracks with the ball. You're watching the 16th edition of the Hockey India Sub Junior Women National Championship 2026, the quarterfinal number four. We've already got three names in Odisha, Madhya Pradesh, and Uttar Pradesh getting into the semi-finals. All this action live and exclusive on the YouTube channel of Hockey India. And with the mic, I'm Mayur Barua. We'll be having the semi-finals tomorrow at 2 p.m. and 4 p.m. Remember, so I'll be there with the chores to do the first one. And in fact, Mr. Shami Malam, our distinguished commentator, will be doing the 2 p.m. match. And I'll be covering the 4 p.m. match. And it's going to be good contest for sure, as the girls will be trying to seal their names for Sunday. And will be a spot to book for gold, silver, or bronze. No one wants to play a hard liner. But before that, both of these will look to get into the semi-finals. Let's see who gets it. It's Jharkhand from the right flank, attacking very nicely, zigzag fashion, and it's a lovely pass. The second attacker behind, as she got the ball, she was trying to put that assist towards the third one on the left, but she couldn't get it on the wrong hockey stick of Punjab, who rotates herself very nicely back. This is really wonderful to see how Jharkhand in their own home territory is playing very smooth hockey at the moment. Punjab at the other end, they'll have to just be very quick on the feet. Harmanpreet Kaur at number 15. Stealing the show is Harshita from Punjab, getting in and pulling it on to Tanya Chandelia. Was trying to scoop it towards the far end of the cross at the center. But Jharkhand really up, and they are bringing in. Why don't you bring all those action? Or maybe this is one of those questions which will be always be upfront and outpouring and seeing across everywhere. It's trying to get into the tee. A small bit of a wood collusion on that one. Let's see if this is something which they're trying to present at the moment. Let's see, can it be going? Is it going very hard? Punjab on the charge again with the ball back past the center line. This is wonderful. Jharkhand trying to crease and get the battle
They're not being able to do so. Man-to-man marking has not been too effective. Past the center line again. It's the yellow army of Jharkhand trying to get to the ball. It's 5 versus 6 now. This is a good contest. No goals have been scored at the moment, but the way they've been trying to get in butts for the ball is a treat to watch. This is something we need, isn't it? And the quarterfinal is there. The line is for the semi-final. You want everyone to be there and budging in with the ball. But no one would would be looking to go behind. But nice is, as you can see, the commotion is very much near the center line. It's a nice cross diagonal pass onto the stick of Punjab, who's crisscrossing, trying to get right between the three of those center forwards of Jharkhand. The mid rangers have been really good. There's a cry for foul play, so Punjab gets to keep the ball, and nicely done by Jarmanpreet Kaur, who has a goal, who has a field goal in the 2-0 victory versus Andhra Pradesh. Penalty corner was from Rashmin Kaur, the first goal of this tournament for Punjab versus Andhra Pradesh. It's been a nice, clean, sparkling hockey at the moment. And less than 11 minutes now remaining. Bisecting the ball, trying to dodge it. Nicely done in a pyramid structure. Now playing is Jharkhand with the ball, trying to carry the momentum forward, getting all those in a nice zigzag manner. Again, you can see the zigzag fashion that they're talking about. But the whistle of the umpire comes in. I believe that's Andrila Pramanik, yeah, the umpire from Odisha. Andrila, nice experienced umpire. Nice Andrila. Jharkhand comes in. Jharkhand. Trying to tap on the ball. It goes out of bounds. That's because Punjab was really trying to go and press the ball behind her, and that's why you can feel the itchiness. You can feel the need to make the ball quickly move out of the sticks and into the goal post. Less than 10 minutes to go. Is a line. It's nice learn lining, and that covering is gone. Number 7, that is Chandelia Tanya, and with her behind is Harshita. Harshita gives a cross pass to Chandelia. Chandelia doesn't keep it with her for too long, as she was trying to pass it on to Rashmin Kaur, who has a penalty corner, as I mentioned before, in the 2-0 victory versus Andhra Pradesh. Couldn't again steal it, but yes, she was trying to bisect. It's a lovely scoop. Now from the captain, Lovepreet Kaur, the captain from Hockey Punjab, into the wrong stick of Jharkhand, was trying to go into Chris Mana past the center line, very much near the dugout of Punjab. Now at the moment, there is at the corner, you can see the coach for Hockey Punjab is Miss Pushpa Rani. The coach for Jharkhand is Mr. Vikas Pant. Be interesting to see of who will be holding on to that fortress for quite some of a good time. Really getting it much more quieter. It's a good one. To the number 6, Nilam Topno with the ball. This is again Nilam Topno. The best he could do is edge the ball past the hard liner to keep it at bay. Good contest already, 0-0 for both the teams. So that will tell you also of how they they have been able to make a nice recovery. And in that match versus Uttar Pradesh and Haryana, the goal came in the third quarter. Remember, in fact, in the second quarter, and the end of the second quarter, when Mr. Shamim Alaman was with the mic, but don't be surprised if there's none coming in the second quarter, and then there might be nothing coming in the third quarter also. But generally, what happens when you're changing the sides, that will actually change your fortunes. Let's see, Jharkhand trying to. It's a lovely pass towards the left flank. She's trying to spook the ball to get right beneath the waiting stick of Punjab, not to be, and that was Sevani Kerketa.
She hit the last goal in the 9-0 victory versus Bihar. So the match before this, the last goal was scored by Sevani Kerketa, Phil Gould, and she was there in the picture. Sevani, jersey number 10. Good brilliance. A total of 15 goals being scored by Jharkhand, with no goals they have conceded till now. So no goals against Jharkhand till now. So they will look to keep the record intact for them. Trying to roll by, try for a foul play. I believe umpire Andrila Pramanik has given it, and yes, it has been acknowledged, and Jharkhand gets an opportunity of a penalty corner. Jharkhand 0, Punjab 0, 6 minutes and 20 seconds remaining. Could be very, very interesting of how they now move up to that important terms of how they can now break it or make it and and put it on the go. Does it really have DISD shadows to carry through? Just putting through the lighter of the shadows. Injection has been done. Stops. Drag flicks. And at the edge of the goalpost. How unlucky. How heavenly unlucky is Jharkhand. Absolutely hits it very hard. The drag flicker. The ball did carry some pace. This is such a good angle. This is a lovely angle to see how the ball comes with such a good pace. Jharkhand again on the attack. From the right flank immediately comes in. The penalty corner has been thwarted. Still the scoreline says 0-0 for both the teams. This is the quarterfinal number 4. Remember, playing a place for the semi-final, both the teams. It's a nice rotation of the stick from between the defenders by Jharkhand. Still rolling with the ball. Hammers it from the right corner. There are two attackers in the striking region. Number 12 versus 7. And number 12 is Mariam Bhengra, who also has a goal to her name in the previous contest, versus number 7 of Chandeliya Tania. Doesn't get anything. How the hearts keep on pumping for you. The clock doesn't stop for a while. Now it starts working. Quarter number 2. It's moving along. In this game of hockey, you are witnessing, I'm sure it will be fulfilling your appetite. And I had myself a late lunch. Sometimes you feel a little lazy because you had the intake of the rice, but it's all about how you now focus on the game with your eyes wide open, and you bring the contest right to the fore. It's a nice cross angular pass from Punjab onto the stick on the right. The stick might have been in a perfect harmony of where the ball needs to go. For Jharkhand, need to be quietened from Punjab, saying it will not be easy as Chandeliya Tania gets an argument fashion for the ball. That is Harshita. So see number 10 at right in the center line with the ball and slams it towards Simanpreet Kaur. That's Simanpreet Kaur who passes the ball across on to number 6 of Jasandeep Kaur, who loses the control of the ball, gains so much of a velocity onto the ball. Punjab doing very well, not allowing Jharkhand to get right on the top of the game at the moment. Small bit of a passage of play where Punjab is looking to be much little, not very strong, I would say, but light. They're doing very much well at the moment. As I talk about, it immediately becomes like a commentator's curse from the right flank, trying a tomahawk. This attempt of a tomahawk is a powerful tool for someone who's very new to the sport of hockey. Let me tell you, tomahawk is an attempt of a shot when it hits with a very rapid pace from the corner. So that's called a tomahawk. You can hit it from the left flank, right flank. You have just your position. So that's called a tomahawk. You can go to Google and study more about it. Getting on with the angle itself, nicely paced up. Now for Jharkhand to get it, should be the first one. Goalkeeper, tremendous work.
I believe that's Mehakpreet Singh, the goalkeeper, who is doing stupendously well. This is nice work. Very, very nice work, I would say. It really saved the Blues. Goalkeeper is Harry, actually, for Punjab. Is the goalkeeper. Number one position. It's 2 minutes and 19 seconds now remaining for the hooter to be sounded right here at this venue. To grab the ball, it's umpire Omi Oindrila Pramanik says, no, it's a little bit at the far left-hand corner. As you can see, one of those personal manpower coming out of the home and watching from the fence. So it's not going to be simple. It's not going to be easy, especially when playing the quarterfinals. It's all about we get into the next strata of semifinals that you're playing for. Nicely done from the corner. Goalkeeper so moves it away. Goalkeeper is Harry, number one for Hockey Punjab. And for Hockey Jharkhand is Khili Kumari, number one versus one. It can be two of two also, with just a minute remaining for the blow of the hooter. Seems like a long story because we had the advancement towards the technology. We had to wait. There's been nice penalty corner. It's a lovely pass and trying to sweep the ball as she was crouching on her legs inside the striking circle. Just a foul there and trying to advance the shot. Gets into the corner of the goal post. With 30 seconds remaining, it might just remain at 0-0 at the end of quarter number two. The blade has been good, and I believe the running also needs to be a much more better position. It is easy when you're trying to move the pace and trying to lock and see what the girl is about to say. Just 1 second around remaining as the clock finishes. It is half time in this quarter final number four. No goals yet being scored. Jharkhand 0, Punjab 0. It's going to be a very good second half when you return in this quarterfinal number four of the 16th edition of Hockey India Sub Junior Women National Championship. As the match offices shakes hands and gets of breathing time, this is Mayur Barwa. I'll be joining with you very soon, so don't go far away. Stick with us. All those live action will be coming on the YouTube channel of Hockey India.
Welcome back to this second half of this match, the quarterfinal number 4 between Jharkhand and Punjab. And the sides will be changing now on your screen. From the right to the left will be Punjab attacking. From the left to the right, it will be the home side girl Jharkhand. It's a very, very good match which is going on. With the mic, I'm Mayur Barwa, and I'm watching the quarterfinal number 4 of the 16th edition of the Hockey India Sub Junior Women National Championship 2026, live and exclusive on the YouTube channel of Hockey India, coming right here from the Marangom K. Jaipal Singh Astroturf Hockey venue here in the capital city of Ranchi in the state of Jharkhand. It's been such a good day. As I mentioned before, Odisha, Madhya Pradesh, and then Uttar Pradesh, they're all into the semi-finals. Just waiting in the wings to know which of these two teams are going to get into the semi-finals, and then we'll be seeing what the settings are of who's playing against whom, and how they are just moving along to know what is coming into just inspiration. How much along they will be just putting in. It's almost there for everything to watch out for. Let's see, it's going to entirely out of bounds now very quickly. Just moving it well, moving its spit and spine, just trying to do and draw some comparison. And the comparison will be just drawn very quickly if you're just pulling the strings all along. 12 and a half minutes, just trying to regroup and redress it so much all along, trying to slap the ball also. Well, Jharkhand just trying to put the body movement in a very right direction. Getting the ball rotated, slams it, but gets into the footing. Was he hurt? I saw that number 15 from Punjab. So that's Harmanpreet Kaur as he's shouting. How do you look at me? I think she's okay. Where did she get? She got right into the hands. Is Harmanpreet Kaur. She might be just going out of the playing area. She got straight into her hands. It's a huge blow. It's another good hammer strokes coming straight in the hands into the stick of Ruxana from Hockey Punjab. Ruxana getting a nice colleague angle of Harmanpreet Kaur again, but Jharkhand on the ascendancy past the center line. Now they are going to attack from the left to the right of your picture. Number 3, the blink of an eye, 3.5 minutes has gone by. Where the pace is happening, you might just feel there might just be goal coming here from somewhere. Stick, it's a nice angular pass. Goalkeeper very much ahead. Jharkhand, oh, how cornered they could be. How at the remotest of the corner there was a goal coming here from somewhere. It definitely fell. It was Jharkhand opening up the scoreline finally, but it was not to be. Well, good work from Punjab, I would feel, and especially the goalkeeper Harry at number 1. Well done. Seriously, good brownie points to stop the ball from going inwards. She did have her colleagues in the defense ahead, but it was all up to her when she stopped the initial blow from coming on to the body. Jharkhand from the left, attacking nicely, rotating with the ball. The curve is inward, stops the ball, and it will be a goal. Yes, it is. Oh, what great assist, what great deflections. Look at them, the hugs coming in. That will tell you the story, how much it meant for them to open up the scoreline, how good teamwork can lead to a wonderful goal. And this is such nice to see. Look at how the stroke has been slammed right between the striking circle and the 23-meter line, gets to the left, and then two of those attackers in just at the center of the jaws of the goalpost, and one of them on the left.
says lets the stick go by inwards for that goal. So Jharkhand won. The home team have opened their account versus zero of Punjab. Now to a huge pressure on the Red Army. They know how for every goal they have been trying so hard. And sometimes what happens, one goal brings two and allows the opposition also to open their account. So never know. But going by the look of things of how both the teams have played by far, this is much of a better show from Punjab girls in this important quarter final, the knockout. Because you lose, you go out, you win, you have that ticket for the semi final, which will be played at 2 p.m. tomorrow and then 4 p.m. the second semi final. Then there is an off on the 11th of April, no matches day after tomorrow, and then the hardliner and the final is there on Sunday, the 12th of April 2026. So this 16th edition of the Hockey India Sub Junior Women National Championship 2026 all will be played at this very venue, the Marangom K. Jaipal Singh Astroturf Hockey Stadium here in the capital of Ranchi in the state of Jharkhand. Action to you coming live and exclusive on the YouTube channel of Hockey India. As we'd like to thank the Jharkhand government and also the Sports Authority of India for their support in getting this very lively among the girls to learn up the tricks and to enjoy and to display their talent. I'd like to also congratulate the office bearers of Hockey India for their recent 100 years of completion, including the president, Dr. Dilip Kumar Tirki, who was also a former India player, and also to Mr. Bholanath Singh, the general secretary of Hockey India. Been really good in the growth story and the upspringing of Indian hockey. Very nice. I mean, great bit of work that they have done in ensuring that no stone is unturned when both boys and girls, the man and woman, get a level playing field. And what not only the women, now the man sub junior man national championship is also going simultaneously along in at Bihar at Rajgir Hockey Stadium in Bihar. It's been really nice, and they've been very blessed, I would say, for men and women to have got their fair chances, their fair share of enjoying the game and showing what they have, the kind of metal they have at the moment. 7.5 minutes to go from here on for quarter number three to finish off this quarter final number four. You have to keep quickly address of this important juncture, the passes of the game, of to scale it off and bring it, and then look at how the advancement follows for both the teams. And now, for especially for Punjab, as they're now trailing by one goal, with a beautiful assist and teamwork and coordination, and that goal came for Jharkhand girls, and the celebration, the hugs, the smiles, just just articulated that how great they have been able to convert that goal to open the score line finally for them. And it's also a learning for the opposition to understand the formation of how they need to be, how man-to-man marking is such an important forte of the game. And no one is different. It's just the brand of hockey that you play on a single day that will evaluate, that will point out how difference that you have made to your game. As you see inside the striking circle, the Jharkhand was trying to get a great inroads between the defenses of Punjab. It's not a very heavy tight watertight compartment of defense that Punjab in the Red Army it has been able to cordon off very easily. And that's why Jharkhand, with a kind of hockey, they have played 6-0 victory versus Maharashtra, 9-0 versus Bihar, and everyone, almost everyone, contributing. It's such an upspringing of hockey that they have displayed here is a treat to watch. It's very knowledgeable, and
also something which will be passing on for the next generation. We're waiting in the wings to know of how they can come up to numbers. As at a far corner, just near the line, we did see umpire Miss Andrila Pramanik. She's being assisted by Miss Pritmai Huntia. That's Miss Pritmai Huntia at the bottom of your screen. Another umpire who's very knowledgeable and has a gentle face, and gives a nice smile and loves talking and very soft. I did meet her recently, just once at the recent Kelo India Tribal Games in Raipur in Chhattisgarh, and she was waiting in the wings for her turn to come up and go to the field, and that's when we had a small chat. And always all those match officials, not only in my hunti, all of them just loves, this nose to the games, the laws of the game to the T, and very experienced campaigners. So not only the women, the men also, they've been all been a very nice part of the hockey fraternity. All all always eager to know and exchange ideas and knowledge. And that's what it is. How the game just keeps on moving and crisscross at a moment. Jharkhand inside the circle. Wanting to give a nice pass at the center of the jaws of the goalpost. Was waiting a danger coming in. So that was Nilam Topno, who almost getting a good 360-degree angle, was passing the ball. Very greatness meeting to happen there. We had few names who did feature, like Sweetie and she was there, the Kalo in the Tribal Games. Sprit my huntia says, I did see it came off the boot of the bottom of your foot. So it's a freebie when given to Jharkhand, as one of the players from Punjab was trying to just ask a question to umpire Pritmai Huntia. Reserve umpire for today's match is Miss Sibia S. The timing judge is Miss Sonali Sahu. The scoring judge is Miss Pinky Naik. And the technical officer is Miss Sweta for this match. The ball just goes out of bounds. There's nothing in relation for the next 3 minutes, which is remaining for the blow of the Huta. And Jharkhand will be much more of a relaxed outfit as they go into the shadows, and says they're okay. We did have a fairly nice time in the middle. Let's see what happens in the next 15 minutes with that kind of a moment. See, we can see also some staff at the corner waiting and standing and scrolling onto the fence and watching at this contest very intently. Don't know whether they're part of the hostel that host all the players, or are they from the working force. As the ball is just going out of bounds, misbeat by Huntia, the umpire just kicks it off. Say that the play needs to carry on from the corner, and a nice bit of as the power just oozes out. Very important. You get the back of your name and get it moving. At the corner is Miss Andrila Pramanik, the umpire. It's a good venue. You're watching the quarterfinal number 4, quarter number 3. Less than 100 seconds remaining, especially to be cool as 90 seconds to be precise. Now from here on, good game, good pushing, good thrust, energy is channelized. Oh, is there a penalty stroke? Oh yes, Punjab has been awarded a penalty stroke. I beg your pardon, penalty corner. My bad. There's been awarded a penalty corner from umpire Miss Andrila Pramanik. One for Jharkhand, none for Punjab, with 84 seconds now remaining in this contest. It will be for these girls to check that who's going to be doing the injection, and then who's going to stop it up, who's going to be the drag flicker. I believe that's number 70. The Simran Preet Kaur will be putting in the all important injection
Is she ready? All are ready to go on ahead. Direct flicker was little right in a huge straight line. Was Jharkhand very much ready? He was trying to relieve that penalty corner, has not been able to convert and get any trust to the scoreline for Punjab. Less than a minute remaining. Trying to play the scoop shot and almost trying to get the ball aerial on the from the right hand side into the corner. Nicely placed. Trying to break even now is Punjab. Of course, they'll be doing to get it more than what is required. Jharkhand will not allow it to have very easily. Just few of the seconds remaining for them to just dance and to try and see what it is. 20 seconds now. They're learning so much from the last quarter they had. So the next 2 minutes is going to present of who is going to go ahead. Just a second remaining. And with that, you hear the blow of the hooter to let them wait in the tracks and for the next 2 minutes get into the shadows of their dugout and then come back a little refreshed. On your screen, it's umpire Miss Pritmai Hundias will go and shake hands and join with Miss Andrila Pramanik. This is Mayur Barwa. So less than 100 seconds of a breather remaining of the last quarter of this quarter number 4 will be coming right back onto you. Don't go far away. Live and exclusive on the YouTube channel of Hockey India. And we are back to carry the shores of the last bit of it remaining. And let's see if it can be just bringing in any memories of it to be. It will bring in so many of those things. These memories can be so far ahead and excited. Thank you so much, production team, for flashing my name also. Mayur Barwa. Yes, that's me carrying on through the commentary job. Live and exclusive on the YouTube channel of Hockey India, the 16th edition of the Hockey India Sub Junior Women National Championship 2026. Can Punjab come back with a bang? Can they say that we are there? Let's not forget
Jharkhand trying to bring on spin up. It won't be that easy to move. This movement, say for Jharkhand, is as clear as daylight. Not to be. Sometimes it gets a little tough also. It's all about how you move it up and see for yourself. It's a survivor scare. One of the players just falls down, cry for a foul play, I believe. 2 minutes passes by so quickly. What do we have here? Trying to make a counter attack was Jharkhand. Punjab trying to reel with the ball, trying to withdraw out any moment of the storm. We'll be playing Christian Cross as Jharkhand looks along far behind. Sometimes you want that ball to be touched on your leg, but it has to be very much into the 23-meter or the striking circle, eventually to be given a penalty corner. Because if it's outside, then there won't be. It will be always just a foul. With a blow the whistle, there was Hundim Kuntimia and Pitmai Huntia, the umpire. With her, will be joining with her at the other end is Miss Oindrila Pramanik. It's been a nice one. You can see the sun is almost getting prepared to go on to finish off the day and then say that tomorrow it's going to be a good day for in the semi-finals. See, will be there. Three teams already have made their mark in Odisha, Madhya Pradesh, and Uttar Pradesh. Was going to be where from this now done counterparts, either Jharkhand or Punjab. Jharkhand now already with one goal ahead. So, but they'll do all thing possible in their caliber as it's a long aerial comes in into the stick of Jharkhand's number 15 there, captain herself, Ankita Lakra, the captain. It's a stick into the line. 660 seconds to be honest. All those 11.11, which is almost like you're getting up a Nelson in your number. Nelson is 111. So Punjab will be hoping for that we get 2-2-2, but again every quarter it's just 15 minutes. Trying to get along with the ball. It's just good trying to make the breakthrough. Punjab does very well. That was number 12 of Punjab, Ramandeep Kaur, with the stick breaking that inroad that Jharkhand was trying to create into the territory of Punjab from the right flank. 7.5 minutes remaining. Trying to play it on the offside, almost like a depth touch as he sat down on the ball. Very nicely looking. What does the Croatians say for themselves? Some bullet. To make it at the last moment. You can see the bench, there's so much of standing there, all ready for the rolling substitutions. Around 5 of the players waiting at the corner of for Jharkhand. Everyone needs to get a fair chance. Umpire my Huntia signals it's out of bounds and wide there. Nothing much that can be displayed. Very important. Quarter final number 4 being played here at the Marangomke Jaipal Singh Hockey Stadium. That's wonderful blue Astrota venue here in the capital city of Ranchi in the state of Jharkhand. Bringing the energy, carrying all the energy is Punjab all around like a solo runner with the ball. The halt of progress. It's Rashmin Kaur who got the first goal in the form of a penalty corner. Can she do it? Oh, trying to spook it up was Rukhsana, number 8 of Punjab, but straight into the stick of Jharkhand in the territory. Very important now.
is a taken up at a very right direction, as it did come from Punjab was trying to ask the questions to Indrila Pramanik. She said, nope, zone is correct, but your heating line is actually wrong. That's, I'm sure, is what she's trying to say. It cannot be vice versa. It's always in what the other one and two have been trying to say to each other. Or trying to mingle the shots. It will be again out of bounds. There's a huge, vast territory being made open on the left hand side into pull up of what numbers can now come up, especially the girls from Punjab. Will not get easy. 7.5 minutes remaining for the match to finish. One by one, now you can feel the heat coming in as Punjab will really look forward to bring and hammer the shots as neatly as possible. More than strong, it has to be neatly as possible. On the back, Jharkhand getting it along. It's a lovely pass. The goalkeeper very much ahead. And look at the excitement. And it has come from the stick of Sandeepa Kumari. Sandeepa Kumari already had 3 goals in this tournament. Now make it 4 goals in total for Sandeepa Kumari in the 16th edition of the Hockey India Sub Junior Women National Championship. Gets the ball, gets into perfect angle and hammers it as the goalkeeper, number 1, Harry, was little ahead, and she celebrates with her counterpart, Shruti Kumari, who has 1 goal in this contest. Shruti Kumari, it was a field goal number 3, but it was Sandeepa Kumari, who was not there. We tell you, she was not there in the initial playing 11. She is a substitute who came in and now scores her first goal in a total of 4 goals. So Jharkhand 2, Punjab 0 with 6.5 minutes remaining. If they don't open up the scoreline in the next 2 to 3 minutes, then it will be Jharkhand. The home girls will clearly now get into the semi-finals. That's the movement say now. Clearly, they need to demarcate. They're not being able to market the thin line which crosses between the 23-meter circle and the striking column. So that's where I believe Punjab has been a little slow. Jharkhand trying to get into a 3-meter line there. As rotating with the line is Punjab. See how those defenses comes into right behind with the ball. Jharkhand now getting past 20-meter line. The ball has been stolen away beautifully by number 6, Jashandeep Kaur. Goes. Still no goals being conceded by Jharkhand. 6-0 versus Maharashtra, 9-0 versus Bihar. And now they are 2-0 versus Punjab. So 17 goals they've scored in total without allowing the opposition to score anything against them. So that's been wonderful, seriously. But the task will get more harder. There's Odisha, there is Madhya Pradesh, and now Uttar Pradesh also joins in the fold. So the contest is going to be looked after, to be sought after. I'm sure about the contest will be Odisha versus Madhya Pradesh. If it is there in the corridor, it will be an absolutely humdinger of a hockey match for sure. Both the states just boast of good academies, infrastructure, players. So it'll be nice to know which of them just edges past the semi-final and gets the name in the final, and then lifts the coveted trophy, the silverware, the shining silverware. Let's see, or gets in the gold, silver, and the bronze column for in this edition. Getting into a head-to-head position now. Getting all against up. The lines had been drawn almost now.
3 minutes and 54 seconds remaining. Just less than 250 seconds. Sure, they must be saying, come on, it's not been a much better line. And Punjab now getting into the act. That was Ruxana with a stick to stop it. The best thing that she could do was let the ball go out of bounds, out of the playing area, which means going to be a little sprinkler. Sprinkling is there, the support is there, right on the ground. Like a nice angle is also there. Is, is it far enough? Is it good enough? With the ball is Rasmin Kaur, scored the first goal for her team in the 2-0 victory versus Andhra Pradesh in the form of a penalty corner. Can she get it one? Can one bring two goals? So just a random thought. I'm sure it will be the supporters of Jharkhand will be saying, why do I need to say in this crucial point? If Punjab gets two goals somewhere within those 150 seconds, then we'll go into penalty shootout. You never know, things do change, and they will love to get the changer. Dives in front is the goalkeeper. Would have been three for Jharkhand as they move forward into the semi-finals. That will be trickling a fine. I feel all the players have gone inwards. I don't see any in the suspension. I think it's a rolling substitution. It's just 2 minutes now remaining. It has to be a very classy effect that they have gone and done today. Something which they'll be very much proud of. Nicely getting along. Gels it properly. Back past the center line. Jharkhand strong, getting stronger as ever. With less than 100 seconds now remaining for quarterfinal 4 to be finished. I believe, with all respect to Punjab, that the Jharkhand are firmly into the semi-final. This is nice work. But again, Jharkhand is not allowing the Red Army of Punjab to march too far ahead, and that's causing a huge concern for Punjab. Can they get 2 out of 2? Are they always get in a position like this? No, most of the time probably you do, but good one to. It's not that this is the end of the red for Punjab. It's all about how you learn and then you move ahead. It might be recognized, but you not be settled if you are not being too much into the way where how goals needs to be scored. 35 seconds remaining. Jharkhand will be very happy. Trying to cross in Chris, trying to dribble the ball. Oh, this is a penalty corner. Things getting back to us for Punjab. He's the one who's asking on to Preet Huntia. And that's the captain, Lovepreet Kaur, the captain from Punjab, is saying that we want uh, our referral to come up from upstairs. So let's see what happens here. Just 26 seconds remaining. So 2 for Jharkhand, 0 for Punjab.
By Pritmai Hundia has got something from the referral upstairs, and she has asked both the captains probably to come at one one direction, 26 seconds now remaining. So just a follow. I think this is a good decision. The game just moves on in the paces. Still, it's a good question to be asked always, not to make it at 3-0. The game just sets in, looking eye to eye on the ball, and the game begins. Just 25 seconds remaining. So last nail in the coffin. As Jharkhand was trying to get the three. Again, trying to make the dominance work is Jharkhand. Punjab knows not been a good day for them to go on. Just three remaining. Can they get one more? Oh, just within milliseconds. 5 milliseconds, not even a second. Within 5 milliseconds, they are asking a question. Now it's Jharkhand who is asking a question to Miss Oindrila Pramanik. This is what happens when you play such a tight contest. It's still at two. It's a time out. Binak's captain number 15 is Ankita Lakras. Even asks the question, and Miss Oindrila Pramanik is a very very good umpire, very experienced, and she's saying, okay, if let's see what you're exactly asking for. Trying to play it again. She knows how important it needs to be. So penalty corner has been given to Punjab, and they're asking them, the Jharkhand players, go and wear the face mask. Zoindrila Pramanik. So that's tell you how good and umpire she's needs gets all the backing. As now Punjab is ready for the insection. Just 5 milliseconds are remaining from here on. Interestingly, as he injects, stops, so flicks it towards the right hand side, tries to play a reverse tomahawk, but it's not there. With a blow of the hooter, as all the time finishes, it's rejoice time. It's a time when they can hug and smile because the belief will go 1 inch ahead for the girls from yellow in Jharkhand as they qualify for the semi-finals of the 16th edition of the Hockey India Sub Junior Women National Championship 2026. So massive, massive congratulations and commiserations for Punjab. Though they have not been able to open the score line, but looking at how 6-0 versus Maharashtra, 9-0 versus Bihar, they catapulted the opposition. And so Punjab has done a remarkable job. But they will have to bow out of the competition, as now we have four semi-finalists. First Odisha, then Madhya Pradesh, or then Uttar Pradesh, and now Jharkhand, who are in the semi-finals, who will be battling it out tomorrow at 4 p.m. and 2 p.m. and then 4 p.m. The coaches and team manager comes one by one, and they clap and feel the warmth. As I say, it's a job well done. So this is Mayur Barwa. I'll be also signing off. I'll be seeing you tomorrow along with Mr. Shamim Alam. Until then, you take very good care of your health and put the reminders for tomorrow at 2 p.m. for the first semi-final of the 16th edition of the Hockey India Sub-Junior Women National Championship. All those will be coming live and exclusive on the YouTube channel of Hockey India. You have a great evening ahead. Cheers and take care of yourself.